नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समकित बांटिया। आई एम अ को फाउंडर एट एड्यूश्योर और मैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन को देख रहा हूं फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं और परेटो प्रिंसिपल के हिसाब से 20% of the syllabus will be giving you 80% of the effect, राइट। सो वो कौन से 20% to 30% है टॉपिक्स या एरियाज फ्रॉम द इंटायर सिलेबस ऑफ द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेगा, वो आज हम लोग का ये कॉन्सेप्ट मैराथन का उद्देश्य है। ओके, तो सबसे पहले क्लॉक टिक हो रहा है, ज्यादा टाइम आपके पास में है नहीं, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, बट डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने बहुत अच्छे से उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया है आज के मैराथन के लिए जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स देने वाला है। ओके, यू हैव ऑल पुट इन द हार्ड वर्क एंड नाउ इट इज टाइम टू गो इनटू टर्बो चार्ज। अभी टर्बो चार्ज, टारगेट विजन एंड ये अगर मैराथन आपने अच्छे से कर लिया और जो हम लोग आपको बताने वाले हैं वो 10 यूनिट के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है इन ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर ये आइडिया आपने अच्छे से ग्रास्प कर लिया, जीत आपकी होगी। यूजीसी नेट इज देन ओनली अ स्टेप अवे। ठीक है। सो आज का जो मैराथन है, आज का मैराथन में सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मेरा एरिया है, बट द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत फास्ट पेस्ड होने वाला है ये सेशन। दिस इंटायर सेशन यू हैव टू बी ऑन योर टोज। ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम के ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसे पायोनियरिंग इकोनॉमिस्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं क्रोनोलॉजिकली, जो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। एंड ये सारे आपके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अपने रेस कार में बैठ जाइए, अपने सीट बेल्ट को फासन करिए, अपने माइंड को इंगेज करिए एंड हर एक मिनट इसमें जरूरी है। स्किप मत करिएगा। वॉच एवरी मिनट ऑफ दिस मैराथन। दिस इज योर चांस टू सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपका एक लौता चांस है कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग का बेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें एंड वी विल डू इट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये सेशन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होने वाला है, मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में काफी पॉपुलरली आस्क किया गया है। दे लव कि इकोनॉमिस्ट एंड उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। दे लव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल जी आए, उसके बाद में हिक्स एंड एलन आए, फिर उसके बाद में सैम्यूल्सन आए। तो ये सारा जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट है, कौन से साल में क्या हुआ, ये बहुत ही जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स जो आपको हेल्प करने वाला है स्पेशली इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन। ठीक है। और भी जो यूनिट्स है वो मेरे बाद में दूसरे एबल फैकल्टीज आपके साथ में करने वाले हैं, बट आज का जो ये सेशन है ये ओवरऑल आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट एरिया है वहां पर मैं ये पूरे अंडरस्टैंडिंग को समराइज करने वाला हूं एंड फाइनली थोड़े ऐसे आपको देने वाला हूं स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करेंगे स्पेशली इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। सो लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर में आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा एरिया है
जिसके बारे में बात अगर हम लोग ने नहीं किया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये पूरा सेक्शन ही 50% अधूरा है। ओके, एनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर के साथ में स्टार्ट होता है, और कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहला और अहम कंट्रीब्यूशन था अल्फ्रेड मार्शल का। अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में एक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोलकर बुक उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने काफी एरियाज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडिंग कॉन्सेप्ट को ले किया है। जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन को बनाते हैं ना, सबसे जो नीचे वाला फाउंडेशन है, सबसे जो फर्स्ट फाउंडिंग ब्रिक्स है, वो अल्फ्रेड मार्शल ने ले किया ये वाले बुक से, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां पर कंज्यूमर बिहेवियर में इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने प्रेफरेंस को मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी ये पूरे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो उनके अजम्पशंस क्या थे? यूटिलिटी इज कार्डिनल। ओके, यूटिलिटी कार्डिनल है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, तो यूटिलिटी इज कार्डिनल कि वो मेजर हो सकता है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था। एंड यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये तीन अजम्पशंस थे, तीन लॉज भी निकल कर आते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU is also called Gaussian's first law। गॉसिन का फर्स्ट लॉ। ओके, ये गॉसिन फर्स्ट लॉ बेसिकली बोलता है दैट ईच एक्स्ट्रा यूनिट गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन, दैट्स LDMU। फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, यहां पर लिखते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये है गॉसिन का सेकेंड लॉ। तो गॉसिन के दो लॉज है, LDMU एंड LEMU। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज spend so that the last rupee on each good gives equal utility। एक रुपया अगर मैं गुड ए पे स्पेंड करूं या गुड बी पे स्पेंड करूं, that is going to give me the same level of utility। that is the law of equimarginal utility। at equilibrium this thing will happen। okay, लिमिटेशंस क्या था? लिमिटेशंस था मार्शल के थ्योरी का दैट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, नॉट रियली मेजरेबल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड यूटिल्स। ओके, तो ये था फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इन कंज्यूमर बिहेवियर। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के कंट्रीब्यूशन में। ऑर्डिनल यूटिलिटी, अच्छा, कार्डिनल यूटिलिटी का एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ईच एंड एवरी यूनिट इज गिविंग यू डिफरेंट यूटिल्स। तो पहला यूनिट 6 यूनिट दे रहा है, दूसरा 5, चौथा 4, छठा खाली 3, so on and so forth, right? So as I am increasing my consumption, the utility by every subsequent unit is falling। अगला कंट्रीब्यूशन आते हैं हिक्स एंड एलन। हिक्स एंड एलन इन द ईयर 1934, कौन से साल में? 1934। अल्फ्रेड मार्शल का कौन सा साल था? 1890। 1890 था अल्फ्रेड मार्शल, 1890 था अल्फ्रेड मार्शल। 1934 था हिक्स एंड एलन। की इकोनॉमिस्ट कौन है? हिक्स एंड एलन है। आइडिया क्या है? जो लिमिटेशन था अल्फ्रेड मार्शल का, लिमिटेशन था दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यहां पर हिक्स एंड एलन ने बोला यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड, दे आर नॉट मेजर्ड। सो
यूटिलिटी का जो वैल्यू है उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? सो अजम्पशन है प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट ट्रांजिटिव एंड नॉन सेटिएटेड, ठीक है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग. The tools that were introduced in this theory were indifference curves. Indifference curves, MRS, okay, budget line and consumer equilibrium. ये concepts introduce हुए थे in the ordinal utility theory. So indifference curves, budget line, consumer equilibrium. Special cases क्या है? Straight line indifference curve जो होता है perfect substitutes में. किसमें होता है? Perfect substitutes. ओके, एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में होता है एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व. एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व्स इज द अदर एक्सेप्शन, ठीक है? लिमिटेशन इस थ्योरी का बस वही है दैट इट इज स्टिल इंट्रोस्पेक्टिव, कांट ऑब्जर्व यूटिलिटी. ओके, तो यूटिलिटी या प्रेफरेंसेस को वापस एक फंक्शन में तो लेकर आ ही रहा है ये फंक्शन, ये थ्योरी अल्टीमेटली. ओके, ये तो कर दिया कि ओके यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, बट यूटिलिटी फंक्शन का हेल्प तो ले ही रहा है ये थ्योरी. ओके, सो एल्फ्रेड मार्शल के बाद आए हिक्स एंड एलन. हिक्स एंड एलन के बाद में आए मिस्टर सैमुअलसन. ओके, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं जरूरी: इंडिफरेंस कर्व्स, बजट लाइन एंड द इक्विलिब्रियम. फिर आते हैं मिस्टर पॉल सैमुअलसन. पॉल सैमुअलसन ने इन द ईयर 1947 रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को इनॉग्रेट किया. ओके, एंड preferences according to him are revealed by actual choices, not by introspection. So वो ये देख रहे थे कि चॉइस के बेसिस पर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि यूटिलिटी यहां पर नहीं है. एक्चुअल चॉइस के बेसिस पर वो प्रेफरेंस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उस पर कमेंट करेंगे. दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस. assumption है यहाँ पर stable preferences and strong ordering, and you are actually plugging the limitation that utility function को लेना पड़ेगा. यहाँ पर कोई utility function ही नहीं है. limitation है कि cannot explain given goods. okay, so ये एक बड़ा limitation है कि exceptions to the law of demand को वो नहीं कैप्चर कर सकता है ये थ्योरी. तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे, COR. COR के नाम से कंज्यूमर बिहेवियर में CO तो आ ही गया. CO क्या है? C क्या है? कार्डिनल. O क्या है? ऑर्डिनल. R क्या है? रिवील्ड प्रेफरेंस. CO तो आ ही गया. आपको याद रखना है कंज्यूमर का CO एंड फिर R आ गया रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी. तो ये है ऑर्डर 1890, 1934, 1947. ये 3 साल बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अल्फ्रेड मार्शल, हिक्स एंड एलन, पॉल सैमुअलसन. ओके, फीचर क्या है? मेजरेबल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रैंक यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व्स इंट्रोड्यूस्ड. चॉइस रिवील्स द प्रेफरेंसेस. यूटिलिटी फंक्शन है ही नहीं रिवील्ड प्रेफरेंस में. ओके, तो जैसा मैंने आपको बोला COR आपको याद रखना है. अ सीरीज, अ सीक्वेंस ऑफ कंज्यूमर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स दैट हेल्प्स इन मेमोराइजिंग द प्रोग्रेशन ऑफ थ्योरीज. ओके, हर एक लिमिटेशन ऑफ अ थ्योरी लीड्स टू द नेक्स्ट थ्योरी. रिमेंबर द इयर्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर मैच द फॉलोइंग एंड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन. बहुत ऑफन पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस, एंड कौन सा थ्योरी किससे पहले आया. तो ये 3 थ्योरी को आपको अच्छे से देखना है. अब चलते हैं जल्दी से ये देखने के लिए कि डिमांड एंड इलास्टिसिटीज एंड अनोमलीज के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. तो डिमांड
डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? सबसे पहला, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट, price falls, real income is increasing and you are buying more. Okay, so demand curve, why is the demand curve sloping down? Demand slopes down because of two reasons. सबसे पहला रीजन है income effect. Income effect basically ensures that real income will rise when the price is falling, therefore you buy more. This is for normal good. And substitution effect क्या बोलता है? Substitution effect बोलता है price falls, good becomes relatively cheaper and you buy more. Elasticity के कुछ types होते हैं. Price elasticity of demand, which is percentage change in quantity divided by percentage change in price. ये सब आपको पता है. Perfectly inelastic is where the demand is equal to zero. Inelastic का मतलब है that the demand is less than 1. Unit elastic का मतलब है equal to 1. Elastic का मतलब है greater than 1. Perfectly elastic का मतलब है elasticity of demand is infinity. Horizontal demand curve is when it is perfectly elastic, and vertical when it is perfectly inelastic. Income elasticity for a normal good is positive, inferior good is negative. Engel law, as income increases, percentage spent on food will fall. That is the Engel's law. क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट के लिए पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए नेगेटिव होता है. ओके, if I were to talk about the chronology in this area as well, anomalies है कुछ, Giffen goods and Veblen goods. Veblen goods के काफी क्वेश्चंस आते हैं. Veblen goods के काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये अच्छे से देखिएगा. Giffen good तो वही गुड है जो प्राइस अप डिमांड अप, it does not follow the law of demand. Okay, Veblen good is higher price increases demand due to prestige. Apple iPhone is an example. Okay, दूसरे लोग खरीद रहे हैं तो even though the price is increasing, people are buying more. That is what is happening here. यहां पर क्रोनोलॉजिकल टेबल है. 1890 में वापस अल्फ्रेड मार्शियल आ गए, लॉ ऑफ डिमांड इन्होंने एस्टैब्लिश किया. गिफिन पैराडॉक्स वाज गिवन बाय रॉबर्ट गिफिन इन द ईयर 1892 इंग्लैंड में. ओके, इंगल्स लॉ, अर्नस्ट एंगल, फूड शेयर फॉल्स एज इनकम इज राइजिंग. एंड यहीं से एंगल कर्व भी निकलता है जहां पर इनकम and demand is, income is on the y axis and demand is on the x axis. यहां से ये निकलता है Engel's curve. Okay, तो ये years important है to remember. 1890 अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डिमांड. 1892 रॉबर्ट गिफिन, that the law of demand is not holding for a few goods, like for example bread in the UK. That was the example given by Robert Giffin. That is called the Giffin paradox. That's the exception to the law of demand. 1857 में एंगल ने अपना लॉ इंट्रोड्यूस किया, that food share falls as income is increasing. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट में, दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. अब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इन द शॉर्ट रन describes the relationship between variable and fixed inputs in production. तो ये कब हुआ था इंट्रोड्यूस? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1890 में. मार्शल ने इसको फॉर्मलाइज किया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही इंट्रोड्यूस किया है. ओके, द आइडिया ऑफ दिस इज, एज मोर ऑफ अ वेरिएबल इनपुट is added to a fixed input, the output increases first, then at a diminishing rate and then eventually can fall. Right, ये हम लोग देख सकते हैं by the production function.
तो अगर ये प्रोडक्शन है, ये वेरिएबल इनपुट है, कुछ ऐसा बनता है ना प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहले तो इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज हो रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, और फिर इवेंचुअली एज माय फैक्टर इज इंक्रीजिंग, मेरा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है। ओके ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। कौन से साल में? वही साल में 1890। अल्फ्रेड मार्शल का मतलब ही है 1890। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ हिज बुक। ओके ही हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला जो स्टेज है, एमपी इज राइजिंग। इफ आई वर टू गो बैक टू दैट, एमपी इज राइजिंग। यहां पर देखिए, ये है इंक्रीजिंग वाला स्टेज, स्टेज वन। ये स्टेज टू है, एमपी इज फॉलिंग बट इट इज पॉजिटिव। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है। ये है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज नेगेटिव, ये थर्ड स्टेज है। ओके डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टार्ट्स इन सेकेंड स्टेज। ओके अल्फ्रेड मार्शल, स्टेजेस आपको बता दिया। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आपको मैंने दिखा दिया है। ऑलराइट, अब रिटर्न्स टू स्केल में आते हैं। रिटर्न्स टू स्केल एज अ कॉन्सेप्ट अर्ली 20th सेंचुरी में अगेन अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया है, 1890s में। इसके बाद में इसको फॉर्मलाइज किया गया लेटर। कोर आइडिया ऑफ रिटर्न्स टू स्केल वाज ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली। ओके कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब है आउटपुट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली, एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनली। ओके अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शंस में आते हैं। सबसे पहला ईयर 1928 था। कॉब डगलस, चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलस, कब? 1928 में। 1928 में चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलस gave rise to the Cobb Douglas production function, जो है Q is equal to A into L to the power alpha K to the power beta. Okay, constant returns to scale होगा when alpha plus beta is equal to 1. ग्रेटर देन 1 का मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेस देन 1 का मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन, and this is a production function where output elasticity and factor income shares are all alpha and beta. So alpha is the output elasticity with respect to labor and beta is the output elasticity with respect to capital. And similarly the factor income shares are also alpha out of the entire and beta out of the entire for capital. I am assuming perfect competition here. ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन है वो है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन। सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1961। तो कॉब डगलस कब था? 1928। 1928 में था कॉब डगलस, 1961 में इंट्रोड्यूस हुआ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय four major economists: Arrow, Chenery, Minhas, and wait for it,
सोलो, ये चार इकोनॉमिस्ट ने साथ में मिलकर काम किया एंड दे मेड द कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन. की फीचर इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ कांस्टेंट बट नॉट नेसेसरली इक्वल टू 1. यहां पर वो जनरलाइज करके बोलते थे दैट लेट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बी रो. पी नहीं है, ये रो है, कुछ ऐसा, रो. ठीक है. इसके बाद और कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है या जो पूछा जाता है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन जो 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय क्रिश्चियनसेन, जोर्गेनसन एंड लाओ. ठीक है, ये ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन है. दिस इज अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फंक्शन विच allows elasticity of substitution also to be variable. तो सबसे पहले कॉब डगलस ने निकाला कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. फिर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एरो, चेनरी, मिन्हास एंड सोलो ने निकाला इन द ईयर 1961 की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट एंड इज रो. फिर वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट निकाला क्रिश्चियनसेन, जोर्गेनसन एंड लाउ इन द ईयर 1971, 10 साल के बाद में बेसिकली. यहां पर फ्लेक्सिबल हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इट अलाउज फॉर वेरिएबिलिटी इन दैट कॉन्सेप्ट. ठीक है. फिर आते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिज लाइंस. रिज लाइंस वो लाइंस होते हैं जिसके बाहर जाते ही यू गेट एमपीएल या एमपीके नेगेटिव. मतलब कि रिज लाइन के अंदर अंदर ही प्रोड्यूस करना चाहिए कोई भी प्रोड्यूसर को. ओके, सो रिज लाइंस के लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वांट. आइसोक्वांट का मतलब है सेम क्वांटिटी एंड वेरियस एल एंड के. ठीक है. रिज लाइंस आर द बाउंड्रीज ऑफ इकोनॉमिक रीजन वेयर एमपी ऑफ वन ऑफ द इनपुट इज जीरो. एंड रिज लाइन के बियॉन्ड में तो नेगेटिव हो जाता है, राइट. एंड isoquant and isocost line का interaction happens when MRTS is equal to the input price ratio. MRTS क्या है? Marginal rate of technical substitution, जो आपके isoquant का slope को identify करता है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट एरिया में चलते हैं. कॉस्ट कर्व्स. शॉर्ट रन, long run. Short run, AFC, average fixed cost, always falls as output increases. AVC, AC and MC, U-shaped due to law of variable proportions. Law of variable proportions कब हुआ? 1890 अल्फ्रेड मार्शल. तो कुछ ऐसा बनता है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ऐसा है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. ओके, ठीक है. MC cuts AVC and AC at the minimum points. Sunk cost is irrelevant for future decisions because the opportunity cost is equal to zero. Sunk cost के काफी questions आते हैं UGC NET में. Long run, in the long run, average cost, they are U-shaped. Okay, L-shaped due to learning curve. Learning curve is also something that we have already seen in welfare economics. ओके, तो ये तो हमने देख लिया है. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. ठीक है, इसमें हम लोग आएंगे. सो लॉन्ग रन में LAC
U-shaped, L-shaped for learning, minimum efficient scale output at minimum LAC. Output is at minimum of the long run average cost, then I am the most efficient. Okay, economies of scale का क्या मतलब है? Falling LAC as output is increasing. So falling LAC is falling as output is increasing. इसका मतलब है कि economies of scale is happening. Economies of scope, cheaper to produce multiple products together, उसको बोलते हैं economies of scope. ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं chronological order. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस 1890 अल्फ्रेड मार्शल, 1928 में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, 1961 में सीएस एंड 1971 में क्रॉस. अब इसके बाद में फर्म ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं. फर्म ऑब्जेक्टिव यूजुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ट्रेडिशनल, जहां पर द आइडिया इज एमआर इज इक्वल टू एमसी. सेल्स मैक्सिमाइजेशन first postulated by the economist Baumol 1959 में, maximizing sales subject to minimum एक level का profit तो मुझे चाहिए ही, and फिर मैं sales maximization पे जाता हूँ. Growth maximization is given by Maris in the year 1964. Balanced growth of firm and managers that's growth maximization. Managerial utility maximization given by Williamson in 1963. Managers maximize their own total utility. Manager अपना खुद का utility को maximize कर रहा है, not of the firm. Behavioral theory given by Sayert and March 1963 basically says that firms satisfies good enough, not maximizing the profit. मतलब कि गुड इनफ लेवल ऑफ प्रॉफिट को करने के बाद में वो सेटिस्फाई भी कर रहा है और उतना सैक्रिफाइस भी नहीं कर रहा है. सो ये सायर्ट एंड मार्च ने 1963 में दिया था बिहेवियरल थ्योरी. अब वापस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में स्टार्ट करेंगे. परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन ने किसने दिया था सबसे पहले इसका थ्योरी? अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में. अगेन दैट सेम बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन को एस्टैब्लिश किया था अल्फ्रेड मार्शल. assumption, many buyers and sellers, homogeneous product, free entry and exit, perfect information. फर्म का डिमांड फंक्शन इज परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि दैट ईच फर्म कैन नॉट इंडिविजुअली डिक्टेट प्राइसेस इन दिस मार्केट. इक्विलिब्रियम कब होता है? प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. तो पी इज इक्वल टू एमसी एमआर एसी in the long run. AC in the long run, and only normal profits is happening. Efficiency, allocative and productive efficiency is happening, achieves Pareto optimality. So it is an efficient market. Okay. ऐसे याद रखेंगे perfect competition को, that this is the only market structure where all three Pareto conditions are satisfied. ये एक लौता ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर है जहां पर तीनों परेटो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में P इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC in the long run, and only normal profits. Efficiency, and only market where all three Pareto conditions are satisfied. मोनोपोली. मोनोपोली का की इकोनॉमिस्ट है ऑगस्टिन कूर्नो. कूर्नो मॉडल. कूर्नो is the key economist for monopoly also. 1838 में ऑगस्ट कूर्नो ने कॉन्सेप्ट दिया मोनोपोली का. उन्होंने कूर्नो मॉडल भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका इन ओलिगोपोली. सो 1838 में कूर्नो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस मेकर, introduced the concept of monopoly, which was later formalized by Alfred Marshall. Alfred Marshall
in the year 1890. So 1838 में मोनोपोली का जन्म हुआ, 1890 में उसको फॉर्मलाइज किया अल्फ्रेड मार्शल ने. Assumption, single seller, unique product, firms demand curve, downward sloping market demand curve, equilibrium कहाँ होता है? MR is equal to MC, but price is greater than MC. तो क्या है? MR is equal to MC, but and price is greater than MC. ये वाले केस में ऐसा नहीं है that price is equal to the marginal cost. Price is greater than the marginal cost. Okay. Price discrimination, first degree, second degree, third degree. First degree is perfect price discrimination. Each consumer pays maximum willingness to pay. First degree price discrimination. Each consumer paying as much as it is willing to pay. Second degree price discrimination is bulk discount. Okay. And the third degree price discrimination, as postulated by Pigou in the year 1920, is different prices will be giving different given to different markets. Okay. Limit pricing, as given by Bain in the year 1949, setting the price so low in order to deter more people from entering into the industry. Okay. Learner index, again very important when we talk about monopoly. तो लर्नर इंडेक्स तो सबसे पहले दिमाग में आता है. 1934 में डेवलप किया था लर्नर इंडेक्स, विच इज प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट बाय प्राइस. इट इज बेसिकली कि मोनोपोलिस्ट के पास में कितना पावर है to set a price that is greater than marginal cost. So no supply curve is there for a monopoly. कोई supply curve नहीं है. Monopoly first developed by Cournot 1938 में, फिर formalized by Alfred Marshall. फिर इसके बाद में आएंगे monopolistic competition में. Monopolistic competition was developed by Chamberlain in the year 1933. Assumption, many firms, यहाँ पर product differentiation है, firm का demand curve है negatively sloping, equilibrium happens when price is equal to average cost but not at the minimum point of the average cost. यहाँ पर कुछ curve ऐसा बनता है, sorry, कुछ ऐसा बनता है, minimum point है यहाँ पर कहीं पे average cost curve का, एंड यहां पर वो प्रोड्यूस कर रहा है. द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन इज दैट कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है. अब ओलिगोपोली में चलते हैं जल्दी से. ओलिगोपोली में वेरियस मॉडल्स है. ओके, यहां पर की कंट्रीब्यूशंस हैव बीन मेड बाय इकोनॉमिस्ट्स like Augustine Cournot 1838 में, Joseph Bertrand 1883 में, Cournot model 1838, Bertrand 1883, Stackelberg 1934, Sweezy 1939. Okay. Cournot, firms choose quantity, assume rivals output is fixed, Nash equilibrium happens. ठीक है. Stackelberg में लीडर फॉलोअर होता है, the leader is moving first. Bertrand में price competition, it can lead to price is equal to MC. Sweezy model में king demand curve comes because rivals are matching the price cut but not the price hike. Okay, firms cooperate to maximize joint profits in a cartel. Okay, next will be cartel. फिर है price leadership. Okay, oligopoly is the only market जहां पर there is strategic interdependence. तो यहां पर if I take the chronology starts with
मोनोपली 1838 में बाय कुर्नो एंड 1838 में द कुर्नो मॉडल ऑफ मोनोपली, ठीक है। फिर 1883 में बर्ट्रांड, फिर 1890 में द एक्सटेंशन ऑफ द मोनोपली मॉडल एंड परफेक्ट कंपटीशन टेकन आउट बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। फिर 1933 में चेम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर 1934 में स्टैकलबर्ग, देन 1939 में स्वीजी मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी, जो आपको याद रखना है। अब फैक्टर मार्केट्स में आते हैं। की इकोनॉमिस्ट यहां पर है जेवॉन्स, वॉलरस, क्लार्क एंड अल्फ्रेड मार्शल। सो 1871 विलियम जेवॉन्स, 1874 लियोन वॉलरस, 1899 जेबी क्लार्क एंड 1890 में अल्फ्रेड मार्शल। ईच फैक्टर इज पेड इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, क्रोनोलॉजी क्या है? जेवॉन्स, वॉलरस, मार्शल, क्लार्क। Okay, labor supply curve is upward sloping when substitution effect is greater than income effect, and backward bending when substitution effect is greater than income effect. Okay, income is greater than substitution effect. Okay, rent theory में contributions, Ricardian rent, again David Ricardo has been one of the flag bearers of इकोनॉमिक थ्योरी। 1817 में डेविड रिकार्डो का कंट्रीब्यूशन था टू डिफरेंशियल लैंड रेंट, अलग अलग लैंड का अलग रेंट होगा। क्वाजी रेंट इन 1890 बाय अल्फ्रेड मार्शल सॉर्ट, इट्स बेसिकली अबाउट शॉर्ट रन अर्निंग्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। मॉडर्न थ्योरी में any factor with less than perfectly elastic supply can earn rent. Okay, exploitation of labor will take place when wage is less than the marginal product. लियोन वॉलरस क्लार्क, 1817 में रिकार्डियन रेंट एंड 1890 में क्वाजी रेंट बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये है फैक्टर प्राइसिंग। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में चालू किए विल्फ्रेड परेटो ने 1906 में। परेटो एफिशिएंसी इज द कॉन्सेप्ट नेम बिहाइंड हिम. An allocation is called Pareto efficient if no one can be made better off without making someone else worse off. The tools used by him were the Edgeworth box and the grand utility possibility curve or frontier. Pareto optimality के बाद में इसको बेटर किया गया ये कॉन्सेप्ट को बाय Calder Hicks in the year 1939 and then by Skitowski in the year 1941. So Calder Hicks basically says that a change or improvement is possible even beyond Pareto efficiency if the gainers are gaining more than the losers are losing. So in effect, the gainers can give that amount to the loser that the loser is losing. Okay, so actual compensation is not taking place, but you can move to that kind of a situation, right? Skitowski basically said that if the losers lose more than the gainers are gaining, so then the opposite can happen, that the losers can bribe the gainers. So reversal is also possible. Okay, that was said by Skitowski by the Skitowski paradox. So Pareto optimality के बाद में Calder Hicks 1939 और उसके बाद में Skitowski in the year 1941, right? अब चलते हैं सोशल वेलफेयर फंक्शन में। सोशल वेलफेयर फंक्शन, social welfare function is basically a
welfare function as a result of the utility of all the individuals in the society. अब यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशंस है काफी सारे इकोनॉमिस्ट का. सबसे पहला नाम आता है बेंथम, also called Benthamite social function, which is a utilitarian कौन से साल में? 1789. 1789 में क्या हुआ था? 1789 में जेरेमी बेंथम said that social welfare function should be as a summation of all the utilities. सबसे simple. Greatest good for the greatest number. Greatest good for the greatest number. Simple. बेंथम के बाद में द कंट्रीब्यूशन इन सोशल वेलफेयर फंक्शन केम फ्रॉम बर्गसन एंड सैमुअल्सन. बर्गसन, सैमुअल्सन social welfare function in the year 1938. Okay. सबसे पहले एब्रम बर्गसन started it and then it was extended by Paul Samuelson. The core idea is that social welfare function is a function of individual utilities, allows for value judgment. So social welfare function is a function of the individual utilities. यहाँ पर खाली summation नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है. वैल्यू जजमेंट्स आपको समझने पड़ेंगे. राउल्स, जॉन राउल्स introduced a Rawlsian welfare. जॉन राउल्स कौन से साल में? 1971. 1971 में क्या बोला? मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द लीस्ट वेल ऑफ पीपल. यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ U1 to UN. ठीक है. एंड अनदर कंट्रीब्यूशन इन द सोशल वेलफेयर फंक्शन वाज बाय केनेथ एरो. वेयर इन द ईयर 1951 उन्होंने अपना इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया. तो केनेथ एरो क्या बोलते हैं? केनेथ एरो बोलते हैं कि नो सोशल वेलफेयर फंक्शन कैन सैटिस्फाई ऑल द रीजनेबल कंडीशंस. नो सोशल वेलफेयर फंक्शन कैन सैटिस्फाई ऑल द रीजनेबल कंडीशंस. क्या है रीजनेबल कंडीशंस? नॉन डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप के इन्फ्लुएंस में नहीं बन रहा है सोशल वेलफेयर फंक्शन. ट्रांजिटिविटी हैज टू होल्ड. Independence of irrelevant alternatives. डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन. एंड कुछ भी चेंज हो रहा है इन द यूटिलिटी, देयर हैज टू बी रिस्पॉन्सिवनेस बाय द सोशल वेलफेयर फंक्शन. ये 5 फीचर्स हैं, ये 5 रीजनेबल कंडीशंस हैं. तो एरो बेसिकली बोलते हैं कि ये पांचों कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है कोई भी सोशल वेलफेयर फंक्शन के लिए. ओके. सो एरो बेसिकली सेज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ परफेक्ट सोशल चॉइस एग्रीगेशन. कभी नहीं होगा. विच वॉज टर्म्ड एज द एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, जो केनेथ एरो ने प्रूव किया था. ठीक है. अब इसके बाद में ऑयलर का कंट्रीब्यूशन है इन दी एडिंग अप थ्योरम. एडिंग अप थ्योरम गिवन बाय लियोनहार्ड ऑयलर. लियोन ऑयलर. ऑयलर क्या बोलते हैं? इन द ईयर 1844. कोर आइडिया, अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, each factor is paid its own marginal product.
ऑयलर बोलता है कि सीआरएस प्रोडक्शन फंक्शन में Q विल बी इक्वल टू L डेल Q डेल L प्लस K डेल Q डेल K। मतलब Q इज इक्वल टू L इंटू MPL प्लस K इंटू MPK। अंडर परफेक्ट कंपटीशन दिस विल लीड टू L इंटू W प्लस K इंटू R, क्योंकि both the factors are paid as per their marginal productivities। ठीक है, अब वेलफेयर थ्योरम्स में आते हैं। फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम क्या बोलता है? एनी कंपेरेटिव इक्विलिब्रियम इज परेटो एफिशिएंट। सेकेंड वेलफेयर थ्योरम क्या बोलता है? सेकेंड वेलफेयर थ्योरम बोलता है एनी परेटो एफिशिएंट allocation can be achieved as a competitive equilibrium with suitable redistribution। Okay, this requires convexity and no increasing returns to scale to happen. The second welfare theorem will also hold। Okay, so first welfare theorem and second welfare theorem। फिर चलते हैं इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो प्राइसेस। शैडो प्राइसेस prices that reflect true social opportunity cost, that reflect true social opportunity cost। It is basically used in cost benefit analysis and project valuations, कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए या इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, सो अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात करूं, जस्ट एज अ समरी फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सबसे पहले परेटो ऑप्टिमम, लेट मी पोस्ट इट हियर। तो समरी अगर मैं करूं, सबसे पहले तो 1906 में परेटो ऑप्टिमम, विल्फ्रेड परेटो, नो वन इज बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। फिर 1939 में आते हैं कैल्डर एंड हिक्स। इससे पहले 1938 में है सोशल वेलफेयर फंक्शन। ओके, सो वील गो सीरियली विद द थ्योरी। सो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट 1906, फिर 1939, फिर 1941 में टाइबोर, स्कितोव्स्की। फिर उसके बाद में सोशल वेलफेयर फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 1938 में बाय बर्गसन एंड सैमुअलसन। ओके, फिर एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम 1951 में, एंड फिर 1971 में जॉन रॉल्स का रॉल्शियन यूटिलिटी फंक्शन। ओके, जो था ऑन द मैक्सिमम प्रिंसिपल, द यूटिलिटी हैज टू बी मैक्सिमाइज जो है मिनिमम ऑफ U1 अप टू UN। ओके, अब चलते हैं लियोन वॉलरस का डेवलप्ड जनरल इक्विलिब्रियम के मॉडल में। जनरल इक्विलिब्रियम, सो
developed by Leon Walras in the year 1874. Okay, all markets clear simultaneously, system of simultaneous equations. Okay, तो 1874 में लियोन वॉलरस ने जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था. ओके, इट वाज फर्दर enhanced in 1954 by the Arrow-Debreu model. Arrow-Debreu model. यहाँ पर assumptions कुछ है, homogeneous of degree 0 in terms of the prices, that's the demand, and so ये है वो theory. थोड़ा short में मैं आपको बस बता देता हूं कि यहाँ पर एग्जाम के क्या ट्रिक्स आपको दिमाग में रखने. जनरल इक्विलिब्रियम बेसिकली डिटरमाइंस प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन ऑल मार्केट्स. ओके, एंड मॉरल हजार्ड इज नॉट अ जनरल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम. मॉरल हजार्ड या एक्सटर्नैलिटी को यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेंगे. तो 1874 में लियोन वॉलरस एंड 1954 में एरो डिब्रू. ओके, गेम थ्योरी. Birth of game theory happened in the year 1944. John Newman and Oscar Morgenstern. Okay. Key economists are John von Neumann and Oscar Morgenstern. Core idea is to analyze strategic interactions when each player's outcome depends on others' choices. John Nash developed the Nash equilibrium, which is a key area of game theory in the year 1950. Okay, so सबसे पहले 1944 में न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न, फिर 1950 में contribution by John Nash. No player can improve their outcome by unilaterally changing their strategy. It depends on the strategy of the others. ये बोला था जॉन नैश ने. Maximin and Minimax, risk averse या risk seeking strategy होता है in a zero sum game. Saddle point क्या होता है? Saddle point is pure strategy Nash equilibrium in a payoff matrix. जीरो सम का मतलब है कि एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान. वंस गेन इज अनदर्स लॉस. नॉन जीरो सम गेम का मतलब है कि बोथ द प्लेयर्स कैन गेन टुगेदर. ओके, ओलिगोपोली एंड गेम थ्योरी का बहुत ही क्लोज है रिलेशन. पूर्नो मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड अ नैश इक्विलिब्रियम मॉडल. 1838 में ऑगस्टिन पूर्नो टुक आउट द मॉडल. बर्ट्रांड था 1883 में. 1934 में स्टैकलबर्ग एंड 1939 में स्वीजी मॉडल. अब चलते हैं इन दोज एरियाज व्हेन मार्केट डू नॉट एग्जिस्ट. अब मार्केट फेलियर के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद asymmetric information. Was postulated by George Akerlof, 1970. Lemon's problem, that is the bad quality drives out the good quality. Okay, signaling, by Spence, 1973. Screening, uninformed party designs a mechanism to elicit information. Okay, moral hazard and principal agent problem, ये सारे हैं इसमें asymmetric information में.
Akerlof basically took out the adverse selection model, asymmetric information में adverse selection, Lemon's problem by Akerlof, signaling by Spence, screening, then moral hazard and principal agent problem. Okay, agent doesn't always keep in mind the value of the principle or the interest of the principle. पब्लिक गुड एंड कॉमन रिसोर्सेज, तो मार्केट फेलियर का सबसे पहला था एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, सेकंड हो गया पब्लिक गुड एंड कॉमन रिसोर्सेज. Okay, public goods are non-rival and non-excludable. Tragedy of the commons was first taken out by Hardin in the year 1968. It's basically overuse of common resources like overfishing, overhunting. Okay, so that is the tragedy of the commons. Externalities also when market failure happens. Negative externality is when the social cost is greater than the private cost, and positive externality is where the social cost is less than the private cost. So social cost greater than the private cost, negative externality. Positive externality, social cost less than the private cost. Example, education. यहाँ पर this is basically pollution. एक और तरीके से market failure happens is called X inefficiency. X inefficiency was postulated by Liebenstein in the year 1966. Firms operate below their potential efficiency due to lack of competition. Competition नहीं है, इसीलिए वो inefficient तरीके से produce कर रहा है. Taken out by Harvey Liebenstein. Okay. Next आते हैं decision making under uncertainty and risk. Expected utility theory 1944 में वापस, like game theory was first postulated by von Neumann and Morgenstern. यहाँ पर भी 1944 का वही पेपर में expected utility theory was taken out by von Neumann and Morgenstern. Okay, risk averseness, risk loving, risk neutral, risk management, ये सब डिफाइन किया था वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टीन ने 1952 में. मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी, यहाँ पर assumption है rational investors perfect information and they are maximizing the expected utility. So 1944 में the expected utility का concept को इंट्रोड्यूस किया था वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने. 1952 में मार्कोविट्स पोर्टफोलियो वाज टेकन आउट बाय हैरी मार्कोविट्स. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स is another aspect for choice under uncertainty. Endowment effect is that people value what they own more highly. Okay, so risk averse people prefer lower standard deviation for the same expected return. तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत पूछते हैं. Lower SD preferred for risk averse individual. Okay, तो ये हो गया चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी. अब फाइनली एग्जाम के ट्रिक्स में देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. कंज्यूमर थ्योरी में 1890 कार्डिनल, 1934 ऑर्डिनल एंड 1947 सैमुअलसन. So COR, cardinal ordinal revealed preference.
Production में Cobb Douglas 1928, CES 1961 and Translog 1971. Market structure में Purno 1838, Bertrand 1883, Chamberlain 1933, Stackelberg 1934, Sweezy 1939. Pareto optimality या welfare में 1906 Pareto optimality, Calder Hicks 1939, Skitowski 1941, Arrow impossibility theorem 1951, Rawlsian theory 1971. Game theory में Von Neumann Morgenstern 1944, John Nash 1950. Market failure में Akerlof 1970, Spence 1973, Liebenstein 1966. Okay. So please remember, every limitation leads to the next theory. एक theory का limitation will lead to the assumption of the next theory. Okay. Know the year and the economist and the core idea for match the following questions. Okay. Practice the diagrams and the formula and definitions. Focus on areas जहां पर बहुत सारे questions आए हैं, especially game theory, welfare, market failure and factor markets. इससे काफी सारे questions आते हैं in the UGC NET Economics paper. So keep these things in your mind, and I hope that your micro section goes very well for this examination. I wish each of you all the best. Hi everyone, I am Mahima and I am here to cover macroeconomics for your entire UGC syllabus in half an hour. So get ready for a ride where you learn everything about macroeconomics important for the UGC NET exam. Let's dive into our first topic. The first topic is the classical model. Now the classical model, the features of the classical model are very important to remember. So full employment, it assumes that there's always full employment. Now, how does it always get full employment? It gets through flexible wages and prices. That's how classical model is always able to attain full employment, because prices and wages adjust. Then Say's law says that supply creates its own demand. That is why whatever is supplied will be bought in the classical model. Laissez-faire, no government intervention is required, because everything is at full employment and supply creates its own demand. So demand is matching supply. So there is no sort of disequilibrium in the economy. So there is no need for very specific government intervention. Money is neutral in the long run, because economy is at full employment. Then all money can actually influence is just the prices. It cannot really influence the nominal variable. Flexible wages and prices, and the labor demand and labor supply adjust, and it determines the real wage rate. So these are the core tenets of classical model. The models of classical economy, it took output as a function of employment. The classical dichotomy, the concept is called when the real variables are independent of the monetary variables. That is the classical dichotomy. Interest rate in the classical model is adjusted because of the theory of loanable funds, where savings are equal to what is saved. The demand for loanable funds is equal to the supply of loanable funds. That's what this equation is telling us. It's not really savings is equal to investment like in the Keynesian model. This is according to the theory of loanable funds. And of course, the last but not the least is the QTM. MV is equal to PY, which shows us this money supply is directly responsible for inflation. So Keynes, of course, highly criticized this model and said it was inadequate because underemployment is a reality. So if the classical model cannot explain underemployment, it cannot explain reality. Wages are rigid downward. They are not like what the classical said, that they are fully flexible. They're actually rigid downward. And money actually is not always fully neutral. It may impact the economy in the short run. Though in the long run, he also agreed that money was neutral. He also attributed more uses to money than just what the classicals did. So classicals focused only on the transactionary demand for money. Keynesian added speculative also.
So let's take care of these. What was the Keynesian revolution? So for Keynes, demand was actually the more important criteria because supply was actually unlimited and available according to Keynes, because his theory came under Great Depression. So in Great Depression, it was not the supply which was a problem, but demand what is the problem. So his is a demand-sided theory. He said that there would be deficiency of demand, there would be unemployment, and that's the nature of the markets, and it is a reality, and government has to play an active role in bridging this gap. Then he said that workers are actually more focused on their nominal wages and not their real wages, so there is a money illusion in the mind of workers. This gives rise to that upward sloping aggregate supply curve. In the short run, prices and wages are rigid downward, and money, like we said, that money is actually transactionary and speculative, not just transactionary. So all of his models gave rise to the SKM model and the ISLM model, where he said that actually economy is demand determined, and you can pull the economy up through government intervention, and which can increase the aggregate demand, and that can increase the output. Another thing that Keynes said was about investment. He said that investment is actually highly unstable, and it is it is determined by animal spirits. That's another of his very important dialogue. It is determined by animal spirits, and it is the job of the government to stabilize the economy because of the inherent tendency of the investment to be unstable. So it is government spending which can actually pull up demand in times of recession. He also worked on the concept of multiplier. So we also saw that there is, if you want to increase income, you may not increase, you need not increase government spending by the full amount. There's a multiplier effect in place. So those were the key findings of Keynes. So he said because the economy is inherently unstable, government has a very large role to play. That is his consistent. If you talk about Keynesian view, that's the consistent view that goes when you talk about the Keynesian view. Now, let's talk about certain the consumption theories. So how is consumption determined? So the first theory is, of course, Keynes, which is where consumption is a function of disposable income, and you have your marginal propensity to consume and average propensity to consume, which are different from one another. Then you had the relative income hypothesis given by Dusenberry, who said that actually income is not, what you consume is not dependent on how much you only earn, but relative to what is happening around you. So it is relative to your past peak income, and it is relative to what people around you spend. So if I'm in a rich neighborhood, I will spend more. If I'm in a poor neighborhood, I will spend less. So that was Dusenberry's relative income hypothesis. Now let's come to my Milton Friedman's permanent income hypothesis. So he said that your income has a transitory and a permanent component. Permanent component is something that you can experience, that you can expect year after year, and what you actually spend is a fraction of your permanent income and not your transitory income. Then you have a life cycle theory by Modigliani, who said that actually a person kind of anticipates his life cycle income and tries to consume a fraction of, or tries to kind of tries to maintain a similar consumption pattern throughout his life, saving more and spending more depending on what's the current income status. So the end result is that you should try to maintain your standards of living and your consumption pattern over your entire lifestyle. So those are our consumption theories. All right, the next that we are going to talk about the ISLM model. Let's talk about the ISLM model. So the ISLM model is an improvement over the Keynesian SKM, which was developed by Hicks and Hansen. And here we give an important role to money also, not just to the goods market. So the goods market role is attributed to the IS curve, and the IS curve is a flat downward sloping curve in the interest rate and income space, and the LM curve is an upward sloping line in the Y and the R space. So LM curve comes from the money market, IS curve from the goods market, and here we see that the fiscal and monetary policies are less effective in the ISLM model than it was considered in the SKM model. So when Keynes did not explicitly take into account the role of money, that time we found the multiplier effect to be more. But when you include the money market and the demand for money and the supply for money in the picture, we saw that
the Keynesian result of the multiplier actually came down. So that was on the ISLM model. We also now let's talk about national income accounting. So national income accounting is again a very important topic for UGC. So certain small formulas that we can revise right now. The first is that the GDP by the expenditure method, C plus I plus G plus net exports. And what is GNP? GNP is GDP plus NFIA. What is NNP? That is going to be GNP minus depreciation. And what is NNP at MP? So NNP at MP would be NNP at FC plus indirect taxes minus subsidies. And that the real income is going to be nominal income divided by the price index into 100. So that's a snapshot of the important formulas. Now let's move on to some theories of money demand. So money demand, as you've seen, there are many ways in which people have kind of understood how is money demanded. And it's a very simple question, that how do people like you and me decide how much money we want to hold in the bank and how much money we want to keep with us in our wallet to spend. So people have made various theories about it so that we can correctly measure money demand. The oldest one comes from Fisher, who wrote the QTM, the quantity theory of money in the classical time, MV is equal to PT. Then came the Cambridge economists. Keynes was a part of the Cambridge economists who thought of money demand as a demand, a good which is demanded, and so that time they kind of understood that money is demanded to facilitate transactions. So they only talked about money as a store of value, and only the transactional demand for money was emphasized upon. When Keynes wrote his theory, then he also added the speculative demand for money component of money demand, and he said that money is demanded either for transactions or it is demanded so that you can save some money for future to invest in bonds when you expect the return to be high. Then there was the Bobble-Tobble model, who said that actually money demand, how much money you keep, actually depends on what's your most efficient quantity. So if you keep money in hand, that gives you no return. If you keep deposit money in the bank, that gives you a return of, let's say, R. So how much money you keep with yourself and how much money you keep in the bank will actually depend on what's your cost of traveling to the bank and what's the rate of interest. And then came Milton Friedman, who said that actually money demand is a very stable function of your permanent income. And that is the most important part of you deciding how much money you want to keep with you to spend. What's your permanent income? So these are the different theories of money demand. All right, now let's move on to investment. That what is investment after money? What is investment mostly dependent on? So investment is mostly dependent on marginal efficiency of capital. What's your return and what's the cost? The cost is the rate of interest, and what's the return is the marginal efficiency of capital. There are two types of investments. They're autonomous and induced. So few questions on investments are there. Let's talk about the multipliers now, because multipliers played a key role in the entire Keynesian theory. So investment multiplier 1 by 1 minus MPC, accelerator principle says that not just investment determines income, but income and consumption in turn determine how much investment should be made. Super multiplier combines accelerator plus the traditional multiplier to create an enhanced formula for multiplier. Fiscal multiplier, different del y by del g is 1 by 1 minus c, del y by del t is minus b by 1 minus c by 1 minus c. So your b is nothing but c here. And balance budget is when change in t is equal to change in t, and your multiplier is equal to 1. So that is the balance budget multiplier. Now, moving on to business cycles. Now, business cycles was another important concept which was understood, that why does the economy goes through this cycles of boom and bust, and why is it not a straight trend line? So different economists gave different theories.
For example, Schumpeter said that, it's the process of creative destruction. New ideas would keep coming, old industries would die out. So when the old industries are dying, the economy will go through recession, and when there's a new jolt, some new reason for people to buy goods and invest, that time the economy would go up. So Hawtrey said that actually this is it's a very monetary policy determined idea, where mostly because if the government reduces the rate of interest, people will start investing more, and that is when you'll have the boom cycle. And if interest rate is very high, then people will start investing less, and you'll have the bust cycle. And then you also had Keynes, who said that this is also dependent on your government expenditure and interest and the multiplier, that when G is high, you'll have high income, and G is low, you'll have low income, and investment is a little unstable. Then you had Samuelson, who showed that this boom and the bust cycle can actually be a function of the values of C and V, where C is the MPC and V is the accelerator. That the value of MPC and the accelerator actually can create this boom and the bust cycle, depending on what's the value of MPC and what's the value of MPV. Or not MPV, of the accelerator value. Hicks used this principle to say that you could actually there's a when economy is going up, it hits a ceiling, and that ceiling is full employment. And when economy is coming down, it also hits a flooring, and that flooring is replacement investment. So why the economy moves in cycles is because when the economy is doing up, it hits full employment, and then it has to go down. And when the economy is going down, it hits minimum replacement investment required to keep the infrastructure upkeep, and then again the boom cycle goes up. So different reasons of why the economy goes through these booms and bust cycles. Let's talk about inflation. Inflation, of course, one of the most important theories of inflation is what are the causes of inflation? Demand push inflation, demand pull inflation, cost push inflation. Phillips curve, which shows that there's a short-run trade-off between inflation and unemployment. In the long run, there is no trade-off between inflation and unemployment. That's thanks to Milton Friedman. We also have the role of expectations. Adaptive expectations give you the short-run Phillips curve, and rational expectations give you the long-run Phillips curve. All right, so this was about inflation, and now let's move on to more topics. All right, so these are the critical formulas that you encounter throughout. Investment multiplier, 1 by 1 minus MPC. Balance budget multiplier is equal to 1. Money multiplier is that your money supply is a multiple of your high-powered money. Real income is nominal by real income, and Baumol-Tobel model of money demand, and the investment rule. So all of these kind of give you a summary of everything that you need to do to be successful in macroeconomics course at the UGC NET level. I wish you all the best, and I'm there for anything that any of you needs. Thank you. Hello everyone, welcome to the revision class of matrices and determinants and various other topics required for UGC and NET exam. So let's start with matrices and determinants. A matrix is a collection of number of numbers or variables into rows and columns. It is represented by square brackets. For example, 1, -1, 0, 2. So we have square brackets and the entries are written inside. This is the first row, this is the first column, this is second row, this is the first column, this is the second column. If a matrix has m rows and n columns, its order or dimension is m by n expressed as m multiplied by n. So we read it as m by n matrix. The number of elements in a matrix is the product of the numbers of rows and its column. For example, if the number of rows are 3 and the number of columns are 2, the number of elements will be 6. If m is equal to n, that is, if the number of rows and number of columns are equal, it is called a square matrix. Otherwise, it is called a rectangular matrix.
Now, two matrices can be compared, added, or subtracted if and only if they have the same order. That means if I have, for example, 1, 2, 3, 4 and 0, 5, 6, 8, I can add these two matrices. How can I add these two matrices? Position wise. 1 plus 0, 1, 2 plus 5, 7, 3 plus 6, 9, 4 plus 8, 12. Similarly, I can subtract them. If I have to multiply a particular matrix by a number, that is called multiplication by a scalar, I will have to multiply the element to the each entry of the matrix. Okay. What do you mean by comparison of matrices? That means a matrix A is equal to matrix B. For example, x1, 5y is equal to 1, z, w, a. So when we compare matrices, we have to compare element wise. So x is equal to 1, z is equal to 1, 5 is equal to w, and y is equal to a. Now a can be anything. The only thing is that y has to be equal to a. That is called comparison of matrices. If a is written as brackets aij, then aij is the element of a which is present in the ith row and the jth column. For example, in this particular matrix, this is A11 because 1 is present in the first row and first column. This is A12 present in the first row and second column, and so on. The transpose of a matrix is denoted as A transpose or A dash. It is obtained by interchanging the rows and columns of A. Okay. So for example, if A is 1, 2, 3, 4, then A transpose is going to be 1, 2, 3, 4. Now the important part. A square matrix is called symmetric if A is equal to A transpose and skew symmetric if A is equal to minus A transpose. This is a very important concept. Direct definitions can be asked in MCQs. If order of A is M cross N and order of B is P cross Q, then AB is possible if and only if N is equal to P and order of AB would be M cross Q. What do you mean by that? It means that if the number of columns here is N and the number of rows in the second one is P, then N has to be equal to P so that we can multiply the matrices. And when we multiply the matrices, the new matrix which we get has the order M by Q. An identity matrix of order N by N is one where all the diagonal elements are 1, which all non-diagonal elements are 0. It is denoted as I. For example, if I want to write identity matrix of order 2 by 2, it is going to be 1, 1, 0, 0. So diagonal entries are going to be 1 and non-diagonal are going to be 0. B is called inverse of A if and only if AB is equal to BA is equal to I. So inverse of a matrix is a matrix B such that A into B is equal to B into A is I. So if you are given that AB is equal to I, you are not sure whether A and B are inverses of each other or not. We should have both sides should be equal to I. A matrix is called orthogonal if and only if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to identity. Now this is very important again for MCQ point of view. Direct questions are being asked. That is why. Determinant of a matrix is a number associated with it. It is represented by A inside two square brackets. Determinant is only defined for a square matrix. For example, if my square matrix is a single matrix, single number A, okay, then determinant is A. For a square matrix A, B, C, D, 2 rows and 2 columns, it is AD minus BC. Okay. Now, in a matrix, the minor of an element Aij is the determinant of the matrix left out after removing the ith row and the jth column. What do you mean? Now let us look at this matrix. Okay. So if you want to know the minor of 3, so minor of this particular element, just hide this row and hide this column. The determinant that is remaining is 0, minus 1, 6, 2. So when you calculate this determinant, 0 into 2 minus 6, that will be 6. So that is how you calculate minor of an element. Okay. Now, since this is the determinant of a 2 by 2 matrix, it is called a 2-rowed minor or a 2 by 2 matrix or a minor of order 2. So this is how we read it. This is actually called a 2-rowed minor.
So for example, if you have a determinant of order 3 by 3, this is a 3-row minor. All right. Next is cofactors. In a matrix, cofactor of an element Aij is the product of its minor is minus with minus 1 power I plus j. For example, again, in this matrix, you could see that the cofactor of 3 is minus 1 power 1 plus 3. Now, minus 1 power 1 plus 3 is going to be minus 1 power 4, which is 1. And then I have to multiply it with the minor. Okay. So, cofactor is nothing but a particular sign, either plus 1 or minus 1, being multiplied with the minor. So why did we do cofactors and minors? Because they are very important to calculate the determinant of a 3 by 3 matrix. To calculate the determinant of a 3 by 3 matrix, choose any row or any column. Then you multiply each element with its cofactor and add all products. What do you mean? For example, let us look at this particular matrix: 2, 1, 3, 0, minus 1, 7, 6, 2, minus 7. The determinant if calculated using first row. So you pick up the elements of the first row 2, 1 and 3. And then you multiply 2 with the cofactor of 2. Okay, so this is the cofactor of 2. Minus 1 power 1 plus 1 and this determinant. Then you multiply 1 with the cofactor of 1. You multiply 3 with the cofactor of 3. And then you add all these terms to get the determinant. Okay. A matrix is called singular if its determinant is 0. Again, very important definition, because you can be given a matrix like this and they say that A is singular, find X. So you will not be able to find out the value of X if you don't know that a singular matrix has determinant is equal to 0. In this case, it is going to be 4x minus 2 is equal to 0. That means X is equal to 1 by 2. Okay. A matrix is called non-singular if its determinant is non-zero. That is very simple. It follows from the definition of a singular matrix. Okay. Now, next important concept, rank of a matrix. A rank of a matrix is n if all the n plus 1 rowed minors are 0 and there is at least one n rowed minor which is non-zero. For example, if we look at this particular matrix, the only 3-rowed minor is the determinant of the matrix itself. If the determinant is non-zero, the rank will be 3 and we can calculate the determinant. The determinant is non-zero and therefore the rank will be 3. Okay, because the rank of a matrix is n if all the n plus 1 rowed minors are 0 and there is at least one n rowed minor which is non-zero. So we have a 3-rowed minor which is non-zero, but we don't have a 4-rowed minor. So the question is like ridiculous. There is no need to find a 4-rowed minor. Okay. So the first 3rd-rowed minor and the only 3rd-rowed minor is coming out to be 0. So the rank is 3. But if you look at this particular matrix, the 3-rowed minor is the determinant and the determinant is coming out to be 0. So the rank cannot be 3. Okay. Now rank cannot be 3. So I have to look at 2-rowed minors. If I'm able to find out even one 2-rowed minor which is non-zero, the rank will be 2. So if you look at this 2-rowed minor, 1, 3, 0, minus 1, I'm combining these two. So this determinant is minus 1, which is non-zero. And therefore, there is a 2-rowed minor which is non-zero. And therefore, the rank is 2. Okay. For M by N matrix A, rank of A is less than or equal to minimum of M and N. Again, this is an MCQ question. And for a square matrix A, which has dimension n cross n, rank of A is n if and only if determinant is non-zero. So for a square matrix, the rank is going to be n if and only if the determinant is non-zero, where n is the order of the matrix A. The next revision topic is differentiation. Now, as far as UGC is concerned, you will be asked direct questions on how to calculate the derivative of simple functions. So therefore, you should be knowing the formulas. For example, the derivative of x power n is nx n minus 1. The derivative of a power x is ax log a, where a is a constant and logarithm has the base e.
Derivative of e power x is e power x. Derivative of sin x is cos x. Cos x is minus sin x. Tan x is sec square x, and so on. So these are some simple formulas which you should be aware of while calculating the derivative. Also, I would like to emphasize on one thing, that in all these formulas, we have been given x. So these formulas are applicable, okay, even if we have anything other than x, and that follows by chain rule. So we'll do chain rule in a short while. So we have rules of differentiation. First rule is sum rule of differentiation. That is, the derivative of sum of two functions is equal to the sum of the derivative. Similarly, the difference of the derivative of two functions is the difference of the derivative. For example, if you have to calculate d by dx of e power x plus 3 power x, so d by dx of e power x is e power x plus d by dx of 3 power x is 3 power x log 3. Similarly, difference, if you have to calculate the derivative of sin x minus x cube, the derivative of sin x is cos x, while the derivative of x cube is 3x square. Okay. The third rule is multiplication by scalar rule. What does it mean? Multiplication by scalar. What is a scalar? Scalar is a constant. So for example, if I want to calculate derivative of 36 times sin x, so what you have to do, this multiple will come out. Multiple, it has to be in multiplication sign, not in plus sign. So the multiple will come out, and then we differentiate sin x, which is going to be cos x. Okay. So the derivative of k times fx is k times derivative of fx. Then we have product rule and quotient rule, which are very important. So if you want to differentiate the product of two functions, you keep the first function as it is, multiply by the derivative of the second function, plus you keep the second function as it is, multiply by the derivative of the first function. What do you mean? For example, you have to calculate the derivative of e power x into x square. So you keep ex as it is, multiply with the derivative of x square, plus you keep x square as it is, multiply with the derivative of e power x. Similarly, we have quotient rule. So this is our quotient rule. D by dx of fx upon gx is gx whole square. In the numerator, we have gx into derivative of fx minus fx into derivative of gx. Let us take an example. Suppose we have d by dx of sin x upon x cube. So the denominator is x cube, we take its square. Then we write the denominator, differentiate the numerator, minus, we write the numerator, differentiate the denominator. And our quotient rule is done. Next is the most important rule, chain rule of differentiation. The differentiation of a function that does not follow any basic formula directly follows the following chain while differentiating: power, function, argument. So for example, here I have written d by dx of log 6x power 7. See, the outermost thing in this example is the power 6. So what is the derivative of x power n? N x n minus 1. So let's apply power rule for this power. So 6, whatever is the function, please write it. And this function will be raised to the power 5 because n minus 1 will be 5 here. Into, now you have got rid of the power. So now you will have to differentiate this particular function. So function. So what is the derivative of log 1 upon x? So what is the derivative of log 1 upon x? So what is the derivative of log x by 7? 1 upon x 7 multiplied by the derivative of the argument. So what is the derivative of x power 7? 7x6. Okay. So that is how you calculate any derivative using chain rule. Let us apply one more example. For example, we have d by dx of sine log 3 tan x. For example, you have a situation like this. Now here you don't have any power of sine. So you don't use this power. You just differentiate sine. So this, the derivative of sine is cos. Write the remaining function as it is. Now I have differentiated sine. I go to the inside function. Inside function is log cube. Now this particular thing has a power. So let's apply power rule. 3 log square tan x. Now this power has been taken care of. After this power, we have this function log. So let's differentiate log tan x, which is going to be 1 upon tan x.
Now this log has been taken care of. So after this log, I have to differentiate tan x, which is the innermost argument. And the derivative of tan x is sec square x. Okay, that is chain rule of differentiation. Next is logarithmic differentiation, again very important. When the power is in terms of a variable, then the integration is done after taking logarithm on both sides. So for example, y is equal to x power sine x. Now, since the power is a variable, for example, the formula y is equal to xn and dy by dx is equal to nxn minus 1. Now this formula is valid only when n is a real number, when n is a constant. Okay, so here sin x is not a constant, it's a variable because it is depending on x. In this differentiation equation, or in this particular equation, x and y are variables. So I cannot take power rule, so I'll have to take log on both the sides. So log y will be log x power sin x. And then there is a rule for log, which is the power rule. Log a power m is m log a. So the power comes out sin x log x. So now in the right hand side, I have a product of two functions. Now differentiate. So if I differentiate both sides with respect to x, the derivative of log y is 1 upon y. Then you will have to differentiate y again. Okay, that is chain rule. On the right hand side, use product rule. Sin x into derivative of log x plus log x into derivative of sin x. So your dy by dx will be y sin x upon x plus log x into cos x. So your dy by dx will be x power sin x upon x plus log x into cos x. That is how you calculate the derivative using logarithmic differentiation. The next topic is integration. So the basic formula, again, you will not be asked a very difficult question on integration. So A, B are constants and C is the constant of integration. So these are your basic formulas. So let me show you some illustrations. For example, if you have to integrate 3x plus 2 power 7, it has to be 3x plus 2 power 8 divided by 8. You can see this, and you have to divide by the coefficient of x, which is 3. Then this differentiation integration, for example, integration of 3 power x dx, it is going to be 3 power x divided by log 3 plus c. Look at this. So let this be e power 7x plus 9, for example. This is going to be e power 7x plus 9 divided by 7 plus c. If you have to integrate minus 7x plus 3, so this is going to be minus cos minus 7x plus 3 and divide by minus 7. Suppose you have to integrate cos 4x plus 2. So it has to be sine 4x plus 2 divided by 4 plus c. Okay. Then similarly, you will be doing for all. For example, let's look at this one. If you have integration of 7x plus 3, 1 upon 7x plus 3, that is log mod 7x plus 3 divided by 7 plus c. So remembering important formulas is very, very important here. Otherwise, you will not be able to attend the question. So remark, the linear function ax plus b cannot be replaced by any other function. For example, if you are asked to do this sin x whole power 3 dx, you will not be able to do it because this was supposed to be of the form ax plus b, and ax plus b is a linear function. And here we have replaced this linear function with this trigonometric function. This is not allowed. So whatever standard formulas we have here, we have ax plus b form. Okay. For example, integration of sine ax plus b dx is minus cos ax plus b upon a plus c.
But if somebody asks you the integration of sine x cube dx, it is not possible to do this using these formulas. These come under a complicated category. So direct formula cannot be used here. Okay. Now we have several rules of integration. Sum rule, difference rule, multiplication by a scalar. What do you mean by sum rule? If you are integrating the sum of two functions, it is equal to the sum of the integrals of those two functions. For example, if you are integrating e power 3x, and if you are integrating cos 7x and with a plus sign in between, so you split them as two separate integrals with a plus sign in between. Integration of e power 3x is e power 3x upon 3. Integration of cos 7x is sine 7x upon 7 and then plus c. Similarly, you have a difference rule. In difference rule, you have difference of two functions that you are integrating. That is equal to the difference of the integrals. So for example, again, let's take the same example. So if you have difference, so you just need the minus sign in between. So that is okay. Multiplication by a scalar rule. So for example, if we have 52 cos 8x integral, so 52 will come out of the integral sign. Integration of cos 8x is sine 8x upon 8 plus c. So these are the three rules of integration. Now you can have, one more tip, that is the substitution. That is the maximum that you can be asked. Okay, chances are rare. For example, you have a situation like this, log x upon x integration. So you know that the derivative of log x is 1 upon x. So let t is equal to log x. So dt upon dx is 1 upon x. So dt is equal to 1 upon x log x. 1 upon x dx. So this integral can be written down as t into dt. And now we have a standard form. So this is the first rule, t power 1 ka integral, what will be t2 by 2 plus c, and then use the substitution. I took t as log x. Similarly, for example, you have the integration of sin x into cos x dx. So you know that the derivative of sin x is cos x. Let t is equal to sin x. Then dt upon dx will be cos x. So dt will be cos x dx. Okay. So this particular integral will again be t dt, which is going to be t square by 2 plus c, which is going to be sine square x by 2 plus c. So that is how you do integration of functions. The next revision topic is limits. So a function f is said to have a limit at a point A if it approaches the same value from the left hand and the right hand side of x equals to A. And the common value is known as the limit of fx at x equals to A, represented as limit x tending to A fx. Now what does it mean? For example, your fx is equal to minus x if x is less than 0, 0 if x is equal to 0, and x if x is positive. So you can see that on the right of x, the function is x. On the left of 0, the function is minus x. And at 0, the function is 0. So let's look at the left hand side. So the left hand limit will be, put x is equal to 0. So left hand limit will be limit x tending to 0 minus x. Why x tending to 0? Because the function is changing behavior at 0. So which is 0. The right hand limit will be limit x tending to 0, this particular x, which will be 0. So you can see that the right hand and left hand limit are equal, and therefore the function has a limit at x equals to 0. And the value of the limit is 0. So we can say that limit x tending to 0, fx is equal to 0. Another question. For example, fx is equal to x square plus 2, x less than 1, and minus 2x square plus 7, x greater than or equal to 1. So again, the function is changing behavior at x equals to 1. And therefore, we will look at the left hand limit and the right hand limit at 1. So from the left,
The limit is limit x tending to 1. Why x tending to 1? Because we are going closer to 1. We are checking at 1. The left hand side, x square plus 2. Put x is equal to 1. 1 square plus 2, which is 3. The right hand limit will be limit x tending to 1. Put x equals to 1 here, which is minus 2, 1 square plus 7, which is 5. So you can see that the left hand limit is 3 and the right hand limit is 5. The left and the right hand limit are not equal to each other. Therefore, the limit will not exist at x equals to 1. These are few examples. Now, as far as UGC NET is concerned, there is a high chance that if they ask a question from limits, they will be asking you how to calculate limits. So they might give you a question like this: limit x tending to 1, x square plus 3. Just put the value x equals to 1, 1 square plus 3 equals to 4. This is called direct substitution property. Now, they might give you something like this. If you put x equals to 2, it will be 2 square minus 4, 2 by 2, which is 0 by 0. Now, 0 by 0 is not defined in mathematics. Okay, it is an indeterminate form. So what will you do? You will take the common factors. We'll try to take the common factors. If there are any, cancel them, put x equals to 2, 2 plus 2, 4. Third is rationalization. Suppose you have to find out limit x tending to 1, x minus 1 upon root x minus 1. So if you put x equals to 1, you can see that 1 minus 1 is 0. Root 1 minus 1 is also 0. So 0 by 0 form not acceptable. So what you do? You rationalize. How do you rationalize the denominator? So multiply by the root x plus 1 and divide by root x plus 1. So the numerator will be x minus 1 into root x plus 1. The denominator will be, now this is a minus b into a plus b, which is a square minus b square. So root x square minus 1 square. So this is limit x tending to 1, x minus 1, root x plus 1 divided by x minus 1, cancel. Put x equals to 1, root 1 plus 1, that is 2. So the first method is direct substitution. The second method is factorization and cancelling the common factor. The third method is rationalization. Rationalization works when we have square roots in the denominator. Okay. Then we have these trigonometric limits. For example, if you have to calculate limit x tending to 0, sine 3x upon x into cos x. So what you can do, you have to make this 3x because we have sine 3x. So you will do sine 3x upon 3x multiply by 3 to cancel out this effect into cos x. 3 will come out. This will be limit x tending to 0, sine 3x upon 3x into limit x tending to 0 cos x. Okay. So this will be 1 by this particular property into cos 0, and cos 0 is also 1. 3 into 1 into 1, which is 3. With this, I would like to revise certain properties of limits. So what are certain properties of limits? Again, sum and difference rule. Limit fx plus minus gx will be equal to limit x tending to a fx plus minus limit x tending to a gx. Similarly, multiplication by a scalar, limit x tending to a k times fx will be k limit x tending to a fx. Third, there is a product rule also. Limit x tending to a fx gx is equal to limit x tending to a fx into limit x tending to a gx under one condition, that both these limits must exist. Both these limits must exist separately. Also, we have a quotient rule, limit x tending to a fx upon gx is equal to limit x tending to a fx divided by limit x tending to a gx, provided both limits exists and limit x tending to a gx is not equal to 0.
We know that in mathematics, division by 0 is not allowed. And therefore, this cannot be 0 if we want this particular quotient to exist, the limit of this quotient to exist. Also, we have the last property. If fx is a function which is lying between two different functions, and the limit of gx is L when x tends to A, and the limit of hx is also L when x tends to A, okay, then limit of fx should also be L when x tends to A. That means if there is a middle function which is sandwiched or squeezed between two extreme functions, and if the extreme functions are going to the same limit at a particular point, then at that particular point, the middle function should also go to the same limit. For example, if you have to find out the limit x tending to 0, x sine 1 upon x. Note that when I put x equals to 0, I will have 0 sine infinity. I don't know what is sine infinity. So I cannot proceed by multiplication. I don't know what is this limit. Okay. So what will I do? We know that sine 1 upon x lies from -1 to 1. The bound of sine are -1 to 1. Similarly, the bound of cos are -1 to 1. Therefore, x sine 1 by x lies from -x to x. Multiply everything by x. So x sine x 1 by x minus x and x के बीच में है. Okay. So you can see that limit x tending to 0 minus x is 0 and limit x tending to 0 x is equal to 0. So x into sine 1 by x is between minus x and x. And minus x is going to 0, x is going to 0, add x equals to 0. Therefore, x sine 1 by x should go to 0 at x equal to 0. So this last property is also very important for direct calculation of such limits. The next revision topic is linear programming. As far as linear programming was concerned, we have to find out the maximum or minimum of an objective function of the form ax plus by. Please remember that this is an objective function because terminologies are often asked in MCQs. Subject to certain conditions. Certain conditions mean constraint, which is a combination of inequalities. So those conditions are known as constraints. Okay. So as far as UGC NET is concerned, let's go for only bounded linear programming problems. So what are bounded linear programming problems? Let me show you through an example. Suppose you have to maximize z equals to 4x minus 3,5. Subject to x plus y less than or equal to 1 and x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. So these are my constraints. And this is my objective function. These two terminology you should know. You are maximizing or minimizing. So that is also known as optimizing. So they will ask you the optimal value of z. So optimization is another word for maximizing and minimizing in this condition. Okay. So what we have to do, we have to draw this area on a 2D plane. So this is x-axis, this is y-axis. X greater than or equal to 0 means this side. Y greater than or equal to means this side. So I have to be in the first quadrant, including the positive x-axis and positive y-axis. Also, now I'll have to draw this inequality. So how to draw the inequality? First, you draw the line. So to draw the line, you just need two particular points. Put x1, y0, y1, x0. So we have a point 1 here, we have a point 1 here. This is 0, 1, this is 1, 0, and draw the straight line. Now, what do you mean by this inequality? Choose any point of convenience below the line or above the line. So the point of below the line and above the line, not on the line. So below the line, I have a very nice point 0, 0. Let me choose it. You can choose any other point 2, 0 above the line. So anything of your choice. So I take 0, 0. So let me put 0, 0 into this inequalities. 0 plus 0 less than or equal to 1, 0 less than or equal to 1, which is a true statement. Therefore, the region where origin is lying has to be shaded. So this is my
region. This is called basic feasible region. What do you mean by basic feasible region? Basic feasible region is that particular region where it is accepted, where all the constraints are satisfied simultaneously. Okay. So why did I say we are doing bounded linear programming problem? What do you mean by bounded linear programming problem? Bounded linear programming problem means whenever I draw the feasible region, I will be getting a bounded area, a closed area. So how do you solve a linear programming problem on a bounded area? You have to look at the corners. So what are the corners of this? 0, 1, let us call A, 1, 0, let us call it B, and 0, 0, let us call it C. So the maxima or the minima of the linear programming problem will only occur at the corner points. That is a very important theorem. So corner points Z equals to 4x minus 3y. So let's put A 0, 1, B 1, 0, and C 0, 0. So when I put A equals to 0, 1, the value of Z is minus 3. B 1, 0, the value of Z is 4. C 0, 0, the value of Z is 0. So you can see that the minimum value is minus 3 and the maximum value is 4. So for a bounded linear programming problem, we will definitely have a solution and the solution will be at the corner points. Okay. There is one more important concept which I would like to tell you, that if your maxima or minima is occurring at 2 points, for example, if we have a problem like this, so I get a feasible region, suppose I get a feasible region like this. So that means there are 4 corners A, B, C, D. And suppose the objective function's maxima occurs at A and B. So the maximum value of Z is occurring at A and B. So if there are 2 corners at which the maximum value is occurring, the maximum value is going to occur at all the points joining A and B. That is going to be sure. That means there are going to be infinite solutions. Okay. So in a bounded LPP, either you will have one solution or you will have infinite solutions. So in a bounded LPP, solution will definitely exist. That means we cannot have a situation where we have 0 solutions. Also, if there are 2 solutions, the solutions are going to occur at every point joining those two, points, line joining those 2 points. So we'll have infinite solutions. So that is about linear programming problem from UGC points of view. Hello everyone, I'm Manjuka and I'm here to cover all of your public economics and environmental economics, including demographic economics in one go for your upcoming UGC NET Economics entrance exam. Sounds difficult, but yet not. So let's just quickly dive into the marathon session and complete all of your Unit 6 and 9 in just one go, in probably less than an hour or so. So let's just get into the video. Let's continue with the marathon session. First, we'll be covering up your public economics, and then we will be delving into your environmental and demographic economics. So public economics is Unit 6 of UGC NET, as you people all know. So before beginning with the marathon session, the only thing I would like to say, both in public economics and in environmental economics, the crux is that if you know the basics, if you know the basic concepts, if you know the basic ideas, if you know the basic ideologies, you are all sorted. Usually, difficult questions are not generally catered from your public economics and environmental sections. And even if the questions are difficult, the base still remains the same. Though the crux of both of the topics is that if you know the base, you are sorted in your exams. Let's just go into the video. Okay, so beginning with the concepts of market failure, what do we mean by a market failure? So market failure is a situation. So market failure is prima facie a situation wherein your market fails to reach out at the optimum allocation level, right? So there is an allocation of resource in the market, as we all know. And when this allocation fails in your market, you lead to a situation known as market failure. So market has essentially failed to allocate the resources in the most efficient way is what we can say when we talk about market failure. So market failure usually have various types. When we talk of types, number one is your asymmetric information. Asymmetric information means that you don't have the entire information.
everybody in the economy, be it 2 people, 4 people, n people, do not have the entire equal information in that economy. And that leads to asymmetry in the information. So due to asymmetry, you face certain problems. That the problems are, due to asymmetrical information, certain what are those problems? Number one problem is of adverse selection. Adverse selection means bad selection. What do we mean by that? That, let's say, you have some particular information, info I of a particular good. There is a buyer who has info X of that particular good, wherein information I is more than information X. Means the seller has more information than the buyer knows while buying that product. And due to that particular reasons, he buy a good which is not well suited to his needs, and he makes a bad choice or an adverse selection in that economy. This is your problem of adverse selection, commonly stated by a market of lemons or probably good cars, bad car situation. Moral hazard. So this happens pre-contract. You can face a question that the issue which deals with pre-contract nature pertains to which of the following? Adverse selection, moral hazard, none of the above, both of the above. So it is pertaining to your adverse selection. Okay. Moral hazard. Moral hazard is usually post-contractual. What do I mean by this? Moral hazard means once a contract has been enforced, then you change your nature since the contract has now been implemented in the amongst the people. For example, let's say you are now eating unhealthy. You are following unhealthy practices because you now have a life insurance or probably a health insurance, right? You are now recklessly driving your car in the market because you know you have a life insurance to cater to your needs. This is a problem of moral hazard. Then we have a problem of principal agent problem. Principal agent problem also pertains to the difference between the information between two parties. That leads to a principal agent problem. What are the possible solutions to it? You need to have signaling, regulation, market enforcements, government contracts, mandatory paperwork, mandatory disclosures, no hidden contracts. All of these are the particular solutions to this particular problems of asymmetry. Moving forward, next, we have public goods. Now we know that public goods वो goods होते हैं which are both non-rivalrous and not excludable. Means ना ही आप इनको लेके rivalry कर सकते हो अपनी इकोनॉमी में और ना ही आप किसी को exclude कर सकते हो इनको कंज्यूम करने से, right? एग्जाम्पल क्या हो गया? डिफेंस हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, क्लीन एयर हो गया. फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है? somebody availing the benefits without actually contributing for its initiation. आप किसी गुड का या किसी रिसोर्स का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं विदाउट यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर इट, यू आर एक्चुअली फ्री राइडिंग ऑन अदर पीपल्स मनी इज नोन एज योर प्रॉब्लम ऑफ free rider problem. Okay. Next thing comes is externalities. Externalities are those problems or those situations in the economy for which you are neither rewarded nor you are actually punished. If you are doing something good in the economy, you are neither rewarded for it. And if you are doing anything bad in the economy, you are neither punished for it. Examples are stated here. So what are the measures to overcome negative externalities? We have figurine tax and then we have a post theorem which we will study forward. Okay. Post theorem, we'll just look at the upcoming slides in detail. Okay. Then we have two types of taxes, two types of revenue for the taxes. One is the tax revenue versus one is the non-tax revenue. Tax revenue basically आपका जो होता है, it almost forms approximately 75% of the total revenue of the government. Now tax revenue आपका further divided होता है. Number one is in your direct taxes and number two is your indirect taxes. अब direct taxes आपके further के बहुत type के होते हैं, रिजर्व का आपका income tax, आपका corporate tax, non-tax revenue क्या होता है? ये revenue is coming from your taxes. This is your non-tax revenue pertaining to 15 to 20% of the government's net revenues. That is your fees, fines, closures, grants, all of the things which government gets apart from the taxes is your non-tax revenue. Okay. Now then we have to deal with your two forms of taxes. One is your direct tax and other is your indirect. Direct taxes has been all known as income tax, for example. And your indirect tax is your, let's say, GST. Okay. Now, when we talk about incidence of taxes, incidence of these taxes, iske case mein you cannot shift it. Entire burden lies solely on you. On whom? If the tax is on person A, it has to be paid by person A. It can be shifted from A to B to C, D, E. It can be shifted many folds. Okay. Equity. It is more equitable, right?
it is less equitable. It is less convenient because it cannot be shifted, so the entire burden is entirely on you. It is less, it is more convenient because आप इसको shift कर देते तो आपका burden सब नीचे कम हो जाए. अगर हम revenue के terms में बात करें तो it is less elastic because it falls entirely. It is more elastic because it is convertible. Okay. Moving forward, we have three types of taxes. Number one is a progressive tax. Number one is a proportional tax, and number three is a regressive tax. प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ रहा है. इसकी वजह से आपका क्या होगा? इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. प्रोपोर्शनल टैक्स, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका इनकम कम हो रहा है, वी डोंट केयर, द टैक्स स्टेज यूनिफॉर्म. टैक्स आपका सेम लगेगा, फ्लैट टैक्स रहेगा. 10% टैक्स irrespective of either you are let's say going to the public park or not, for example. This is your proportional tax. Regressive tax, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स कम होता जाएगा. So already usually all the indirect taxes are regressive in nature, but vis-a-vis all the direct taxes are progressive in nature. ठीक है. अब टैक्स इंसिडेंट्स आपके बहुत तरीके के होते हैं. टैक्स का इंसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? ऑन होम बर्डन फॉल्स. टैक्स बर्डन, टैक्स का बर्डन किसके ऊपर फॉल हुआ है वो आपका टैक्स इंसिडेंट्स बताते हैं. अब आपके टैक्स इंसिडेंट्स बहुत टाइप्स के होते हैं या बहुत सारी डेफिनेशंस होती है विच यू नीड टू रिमेंबर. आपसे पूछा जा सकता है मैच करने के लिए. सबसे पहले होते हैं स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स. स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स मतलब who legally pays the tax. ठीक है. लीगली कौन ऑथराइज्ड है ये टैक्स पे करने के. अब इनकम डायरेक्ट टैक्सेस के केस में तो इफ ए इज लीगली एलिजिबल टू पे ही विल ओनली. इनडायरेक्ट के केसेस में स्टैट्यूटरी टैक्स डिफरेंट हो सकते हैं. राइट. नेक्स्ट कम्स आपका इकोनॉमिक इंसिडेंट्स. इकोनॉमिक इंसिडेंट्स मतलब कौन एक्चुअली बेयर कर रहा है वो फाइनल टैक्स. ओके. ए हैज टू बेयर ए in case it's a direct tax. Vis-a-vis A can be shifted to B, can be shifted to C. Finally, कौन इकोनॉमी में बेयर कर रहा है? Usually in terms of indirect taxes. Okay. Forward shifting क्या होता है? A से B पे गया, B से C पे गया. So this is a, let's say a wholesaler. Then this is a retailer. This is a consumer. This is a forward transmission of taxes. C से B पे आया, B पे A पे आया. This is backward transmission of taxes. ठीक है. टैक्स इंसिडेंस उस पे ज्यादा फॉल करेगा जिसकी इलास्टिसिटी कम हो. आई रिपीट इट अगेन. इफ द डिमांड amongst the demand and supply, demand is made by the consumers. Demand is by the consumers. Supply is by the producers. If the demand is more elastic, the burden of the tax will fall entirely more on the suppliers, that is the producers. vis-a-vis अगर आपका सप्लाई ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा तो इसका टैक्स का बर्डन ज्यादा फॉल करेगा आपके डिमांड के ऊपर. आई होप इट मेक्स सेंस. मूविंग फॉरवर्ड, आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर की दो थ्योरीज होती है जो हम बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस करते हैं. नंबर वन इज आपकी वैगनर की थ्योरी ऑफ योर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट इज योर पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस. सो वैगनर्स थ्योरी इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज. इसका मतलब क्या है कि आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इट ग्रोज फास्टर देन द नेशनल. द क्रक्स ऑफ द थ्योरी इज कि आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर आपके नेशनल इनकम से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है एंड इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली इन अ exponentially increasing manner. Weismann-Peacock hypothesis का कहना क्या था? It was contrary to your आपका वैगनर का hypothesis. इसमें इनका क्या कहना था कि आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है it does not every time grows in a smooth fashion. इनके कहना था कि it grows smoothly. इनका कहना था it does not grow smoothly. It always grows in jerks, in a step-like fashion. कभी बढ़ेगा, कभी फ्लैट हो जाएगा, फिर कभी दोबारा बढ़ेगा, फिर कभी फ्लैट हो जाएगा. Why? Because economy has a lot of situations with which it actually deals in the economy, right? कभी कोई disaster हो जाएगा, so your economy needs to have more of public expenditure. More, let's say there is a war, so the government needs to spend more on the defense part of the public expenditure. So it cannot grow smoothly throughout. It has its own jerks and paths. And the three effects, which is the displacement effect, inspection effect, and the concentration effect, is actually related to आपका Weismann-Peacock hypothesis. Multiple times this question has been asked कि displacement effect, inspection effect या concentration effect किससे related है. So it is related to the Weismann-Peacock hypothesis. Also you should know
What is displacement effect? Inspection effect का मतलब क्या होता है? Concentration मतलब when the concentration of the government powers or the government authority is actually more in the economy. That is your concentration. Moving forward, then we have a basic information about your finance commission. अगर आपने पॉलिटी का कुछ भी पढ़ा होगा या articles of the constitution पढ़े होंगे तो it pertains to article 280 of the constitution. It has a term of 5 years. ठीक है? Currently we are running with the 16th finance commission under Shri Arvind Pangaria ji, and then we had आपका previous 14 at least आपको basic पिछली 2-3 फाइनेंस कमीशन पता होनी चाहिए बिकॉज यूजुअली मैच क्वेश्चंस आर वेरी प्रोमिनेंट आपके यूजीसी नेट के पेपर में. सो 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो थे वो थे श्री वाई रेड्डी जी, एंड 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे ही वाज श्री एनके सिंह. सो यू नीड टू नो. एंड 16 के कौन है? यू नीड टू नो. की फंक्शन क्या होते हैं? दे बेसिकली डिसाइड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन योर स्टेट्स एंड सेंटर. आपकी ग्रांट्स क्या होनी चाहिए, आपका फिस्कल रोड मैप क्या होना चाहिए, सो होना चाहिए. करंट फिस्कल इंडिकेटर्स के बारे में अगर हम देखना चाहें तो क्या है? जीडीपी हमारा ग्रोथ रेट यूजुअली इज प्रोजेक्टेड अराउंड 6 to 7. यूजुअली अभी तक के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इट्स 6.2. अगर आपको बेसिक आइडिया रखना है बेसिक क्वेश्चंस को जज करने के लिए, आप यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द डेटा बाय योर टिप्स, बट इफ यू नो रीसेंट प्रोजेक्शंस या रीसेंट ट्रेंड एनालिसिस तो आप उसके बेसिस पे नॉट अ बिग गेस बट अ एक्यूरेट गेस कर सकते हो, विच इज अ स्मार्ट गेस, राइट, एंड नॉट अ तुक्का, राइट. So fiscal deficit आपका क्या है? Usually target is 5.1. Similarly, revenue deficit is 2 to 3 of GDP, and tax to the GDP ratio should be 17 to 18% approx target. Tax to GDP क्या होता है? कितना टैक्स आपका है विद रिस्पेक्ट टू आपकी इकोनॉमी में कितना जीडीपी पर्टेन कर रहा है. ठीक है. डायरेक्ट टैक्सेस से टोटल रेवेन्यू आपको आ रहा है 50 से 55%, 40 से 45% आपको 50% के करीब आपको आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस. स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सेंटर का शेयर इज अप्रोक्सीमेटली 65% के करीब एंड 40% के करीब इज योर स्टेट्स का शेयर. Okay. With this, we have actually wrapped up your public economics class, all the key important concepts which are important. Now, the thing is that you actually need to go through the recent budget data trends, trend analysis, which already in the upcoming last part of the marathon series, which is of your environmental, which is of course of your Indian economy, जिसमें हम लोग already इसको cover कर रहे हैं. This wraps up your more or less public economics section. Now let's delve into Unit 9, which is environmental economics sector. Okay. Moving forward, this is your environment economics syllabus. Okay. Environment as a public good. Environment again is considered as a public good. Public good के characteristics हम already पढ़ चुके हैं. It is non-rivalrous and it's not excluded. ठीक है. Environment की services क्या होती है? आपको resource मिलता है, आपका waste absorb होता है, आपका life support होता है, आपको amenity provide किया जाता है. आप आपके मार्केट्स फेल क्यों कर जाते हैं? देयर कैन बी अ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ मार्केट फेलियर. एक्सटर्नैलिटीज इज वन ऑफ दोस. फ्री नेचर ऑफ द गुड. पब्लिक गुड इज इटसेल्फ अ वेरी बिग नेचर कि आपकी मार्केट्स फेल करती हैं. व्हाई? बिकॉज पब्लिक गुड का नेचर की वजह से यू अराइज विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर. वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड, राइट. इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी राइट्स, जो इसका सोल्यूशन हमारी पोस्ट थ्योरम ने दिया था. इरिवर्सिबिलिटी, अनसर्टेनिटी. एनवायरमेंट की एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? नेगेटिव क्या होगी? पोल्यूशन हो गया, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया. पॉजिटिव क्या होगी? यू आर कंजर्विंग फॉरेस्ट, सस्टेनेबिलिटी. ऑल ऑफ दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. ओके. मूविंग फॉरवर्ड. ओके. आपका पोस्ट थ्योरम क्या कहता है? पोस्ट थ्योरम डायरेक्टली स्टेट्स इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी राइट्स. पहली बार. ठीक. पोस्ट थ्योरम आपका क्या कहता है कि अगर आपके प्रॉपर्टी राइट्स बहुत अच्छे से डिफाइंड, आपके लेट्स से देयर आर टू, अगर आपके प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड है और आपके ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट, मतलब आपके डिस्कशन की कॉस्ट या आपके एक दूसरे से डील करने की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा मिनिमम है या जीरो, तो these private parties can actually come to a consensus amongst themselves efficiently, regardless इसके पास initial rights थे. Regardless A has a right initially or B has a right. अगर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो है, नंबर वन, अगर आपके प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड है तो आप एक एफिशिएंट आउटकम या एफिशिएंट सोल्यूशन पे आ जाओगे विदाउट द नीड ऑफ एन एक्सटर्नल गवर्नमेंट पार्टी टू इंटरवीन बिटवीन यू टू पीपल और अमंग्स द पीपल हु आर इन द डिस्कशन. इसकी कंडीशंस कह लो या अजम्पशंस कह लो. Many a times question have been asked. By now you have seen all the PYQs, so you also know the importance of post theorem. सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स अच्छे से डिफाइन होने चाहिए. आपके पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो या मिनिमम होने चाहिए. परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. ऑब्वियसली इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास भी वही होना चाहिए. एंड देन देयर शुड बी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टीज. स्मॉल नंबर ऑफ पार्टीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज स्मॉलर द पार्टी, इजियर इट इज टू
come to solution. Obviously, right? Less the number of people, less the hustle, more easier to come to a solution. ठीक है? But इसकी limitation क्या है? In real life, there are generally no transaction costs. आपके zero नहीं होते, but काफी सारा, right? There are high number of affected parties. There is a problem of free rider, and then there are also wealth effects in the economy. अब economic goods को तो आप वैल्यू कर लेते हो. Let's say if I ask you, there is a packet of chips ₹10. आप बोलोगे मैम उस 10 rupees लिखा है, so its value is ₹10. You go to a museum park, या you go to a amusement park, वहां पे टिकट का प्राइस लिखा होगा, let's say ₹800. You have valued that good because it is economically valued. For up environment, air, water, clean atmosphere, इन सबको कैसे वैल्यू? सो इनको वैल्यू करने के लिए कुछ हमारे पास वैल्यूएशन मेथड्स है. नंबर, दे आर categorized into 3 subparts, A, B and C. Number 1 is are you market based? Market based मतलब आपका market, उसके अंदर we have sub types. Number 1 is your market price method. आप directly transaction के basis पे decide करते हैं. ठीक है? Next is your productivity method. कि उसका आपके economic output पे क्या है? Let's say there is no clean air in the environment. ठीक है? तो आपकी when people do not have, the workforce do not have clean air to actually breathe, it will impact on their productivity. It will actually have a very big impact on their productivity. So the productivity method impacts to the part कि आपकी economic output पे उसका कितना impact आ रहा है. Okay. Then there is actually the third method, sub part is the replacement cost. Replacement cost क्या कहता है आपका कि कितना cost है उस environmental service को replace करने के लिए. Let's say आपका clean air पूरा चला गया, इसको रिप्लेस करने के लिए आपका कितना कॉस्ट लग जाएगा, इज योर एनवायरमेंटल कॉस्ट. तो इफ यू हैव आल्सो हर्ड द कॉप मीटिंग्स ऑफ द व्हिच आर रिलेटेड टू UNFFCCC, उसमें भी ये बोला गया है कि मिटिगेट करने की कॉस्ट इज वे लेस देन अडैप्ट करने की कॉस्ट. सो यू शुड एक्चुअली मिटिगेट करने की कॉस्ट इज वे मोर टू देन टू एक्चुअली अडैप्ट एंड मूव टू सस्टेनेबिलिटी. बट द developed countries always are in favor of mitigation, whereas the developing countries are always in favor of adaptation. So this is your replacement cost. उसके बाद अगर हम repeating preference methods पे जाए, this is your part C. Number 1 is your travel cost method. Travel cost method मतलब आप एक A point से B point पे जा रहे हो. This is your, let's say, Valley of Flowers. This is an environmental good national park. This is an Uttarakhand. Let's say आप दिल्ली रहते हो. ठीक है? तो आपकी इस रिक्रिएशनल साइट को विजिट करने की कितनी ट्रैवल कॉस्ट लग रही है, इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट कि आप उस गुड को कितना वैल्यू करते हैं. ठीक है? नेक्स्ट इज योर हेडोनिक प्राइसिंग मेथड. हेडोनिक प्राइसिंग का मतलब कि आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके आसपास का एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. हाउ? लेट्स से देयर इज अ प्रॉपर्टी ए एंड देयर इज अ हाउस बी. लेट्स से दिस इज 200 square feet, this is 500 square feet, but this house is close to a park. This house has an industry in front of it. So which house do you think will be environmentally more valuable? Obviously, this house, despite being less in area and size, will be valued more because of the environmental assets and resources associated closer to it and the positive impacts that environmental assets will have on it. So that measurement is done by a hedonic pricing method. The last is a defense expenditure method. एक environmental damage को prevent करने के लिए आप कितना defensive expenditure करने को तैयार हैं, is your defense expenditure method. So third is your defense expenditure method. Now stated preference method. Number 1 इसमें आपका contingent valuation method है. इसमें आप direct survey करेंगे. Direct survey आप कैसे करते हैं? On the basis of आप directly you will go and ask people that how much they are actually willing to pay to preserve an environment or to preserve an environmental resource. That is your contingent choice experiment method. आपका then next है, that is what are the trade-offs. एक resource को दूसरे resource को preserve करने के लिए what are the trade-offs you are ready to do. So these are few of your methods of your valuation of the environment. Moving forward, we have 3 theories of population. Number 1, of course, we know as Malthus theory. Then we have optimum population theory, and third we have demographic theory, which is our next page. Demographic transition theory. Okay. Malthus का theory क्या है? Malthus बोले कि आपका population जो है वो तो dramatically grow कर रहा है, but your food supplies grows arithmetically. So there comes a time that population का growth is more than आपका food supply का growth,
which will lead to tussle or war-like situation or fight for survival amongst the population, and there will eventually come a time that the population will be wiped off till this equality is maintained again. तो इसको रोकने के बहुत सारे you have measures to control it via preventive checks. अगर आप prevention से नहीं करोगे, then the nature will do positive checks in form of famines, disaster, disease, and so this is your Malthus theory of population. What is your optimum theory of population? Optimum theory of population के 3 aspects क्या हैं? Under population जब आपका population is less than what is the optimum level. Overpopulation when it is more than what is the optimum ideal level. And optimum population which is the max at its maximum, which is at equality. ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाता है demographic transition theory. Demographic transition theory अगर हम बात करें, initially you have both high birth rates and death rates. These are birth rates, these are your death rates. Then what happens? Birth rates continue to be high, whereas your death rate starts falling. So these are basically your stage 2. Stage 3 में आपका क्या होगा? Even your birth rates also start falling. ठीक है? Stage 4 and 5 में क्या होगा? There comes a time that even your birth rate will get less than the death rate. So maximum आपका population explosion इस age stage. यहाँ पे भी आपका stability की तरफ आ गया. In fact, you are in the negative zone में. यहाँ पे आपका stable population रहेगा. फिर जितना birth हो रहा है, death हो रहा है, यहाँ पे आपका population explosion हो जाएगा या maximum population growth हो जाएगा. This is your basic concept of demographic transition theory. Moving forward, these are your demographic measures. ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं and इसमें usually students get confused. Crude birth rate क्या होता है? आपका कितनी birth हुई per 1000? Similarly, आपका general fertility rate क्या होता है? कितनी birth हुई per 1000 women in the age group of 15 to 49? आपका fertility rate क्या होता है? General fertility rate आपकी एक reproductive age के अंदर आपकी women ने कितने births दिए. टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक एवरेज वुमेन के लाइफ स्पैन में उसने कितने चाइल्ड बेयर किए. दैट इज योर टोटल फर्टिलिटी. रिप्लेसमेंट मतलब एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए एग्जैक्ट कितना पॉपुलेशन चाहिए कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन भी रिप्लेस हो जाए. दैट इज आपका रिप्लेसमेंट रेट. सो दैट रिप्लेसमेंट रेट विच वी एक्चुअली नीड इज 2.1. 2.1 is the total fertility replacement rate which we actually need in the economy. Similarly, आपका क्रूड डेथ रेट्स क्या होते हैं कि आपकी कितनी डेथ्स हुई पर 1000 पॉपुलेशन. इनफैक्ट मोर्टालिटी क्या होती है? कितनी डेथ्स हुई अंडर 1, 1 साल से नीचे वाले बच्चों में कितना डेथ हुआ पर 1000 लाइफ. एक्सपेक्टेंसी कितना होती है? एवरेज लाइफ स्पैन विच इज डिसाइडेड एट द. अब मॉर्बिडिटी के मेजर्स क्या होते हैं? सॉरी, इंसिडेंस रेट, कितने न्यू केसेस आए पर पॉपुलेशन, एंड देन आपका प्रिविलेंस का रेट. प्रिविलेंस का रेट आपको कैसे पता चलता है कि आपके टोटल केसेस क्या हुए पर पॉपुलेशन. सो इंसिडेंस रेट अगेन टू न्यू केसेस पर पॉपुलेशन, प्रिविलेंस आपका टोटल केसेस. ओके, अगर हम एज स्ट्रक्चर की बात करें तो यंग एज ग्रुप को यूजुअली हम 0 से 14 में कैटेगराइज करते हैं. वर्किंग एज इज 15 to 64 एंड एल्डरली इज 65. अब डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कितना है डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपॉन में वर्किंग एज पॉपुलेशन times 100. ठीक, this is your dependency ratio. अगर तो now if you are calculating total dependency ratio, so obviously you need to take young population plus elderly population one working age population times 100. This is this. अगर सिर्फ child का dependency निकाल रहे हो तो young population one working age population times 100. This is this. And number 2, this is your number 1. Number 3, if only of the old age people, so elderly population, one working age population times. This is moving forward. Okay, so as you can clearly see, and as I have clearly also promised, that we will try to basically wrap up both of your concepts which are related to environment and public economics. Probably is less than an hour. I guess we have actually successfully tried to cover all of your concept in even less than, let's say, in half an hour. So, quick suggestion before I leave that number 1, that revise all of your data related to budget, stats, trends,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि आपके फिजिकल डेफिसिट का क्या ट्रेंड चल रहा है ओवर द पास्ट, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेडीली डिक्रीजिंग, स्टेडीली डिक्रीजिंग का मतलब है कि जितना भी उसने टाइम स्पैन आपसे पूछा है उस टाइम स्पैन में एक बार भी आपका फिजिकल डेफिसिट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओनली एंड ओनली देन वी कैन कॉल इट अ स्टेडी डिक्रीज। ठीक है, सो यू नीड टू नो ऑल द ट्रेंड्स। नंबर 2, you need to know the concepts and their economists. Very, 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 very. Every year, two to three questions are prominently asked about it. Okay. Then you need to know theories which were given by people, right? And then, of course, basic definitions like अभी हमने जैसे environment में पढ़ा crude rate क्या होता है, birth rate क्या होता है. Similarly, basic definitions about आपका micro में if we talk about basic definitions about welfare theorems, first welfare theorem, second welfare theorem. So it is very important for you people to remember all of these basic words. So with this, we actually wrap up your part of your marathon session, which were pertaining to public economics, environment, and demography. I hope this rapid marathon session was actually fruitful and wishing you all the very best for your upcoming UGC NET Economics exam. Thank you very much. Hi everyone, and a very warm welcome to today's session. So if you are someone who is following the official YouTube channel of EduShort, you will know that we have conducted 50-day of free course for your paper 2 of UGC NET syllabus, that is the economics section, where as we all know there are 10 units, and each of the faculty members we have provided an overall overview of the syllabus that we need to go through in details, and what are the different topics that we need to cover for our syllabus. Now, particularly if you see from my portion, I have done the unit number 3 with you and unit number 5 with you. So in unit number 3, what are the things that we have covered and what are the things we need to cover more? So let me give you the overall, review for that. So in unit 3, you have statistics, econometrics, and a little bit of time series, right? That is what we had to cover for our syllabus. Now in first unit, that is unit 3.1, we need to cover what is the probability theory, concept of probability, distribution, movements, and central limit theorem. So this is the first unit of your syllabus. In the second unit, you need to know the descriptive statistics. Descriptive means everything apart from the inferential portion. The inference means the estimation process, hypothesis testing process, finding the confidence interval, and all sorts of things. We are not taking them into account. All the rest of the things, for example, central tendency, dispersion, moments also come under this portion, and correlation index number. These are the things that comes under descriptive statistics that we need to know. The third thing that we have to do is the sampling method and the sampling distribution. Then you have statistical inference, hypothesis testing. So these are basically the statistics portion of your syllabus. You have probabilistic statistics, descriptive statistics, and inferential statistics. These are the three portions that you need to know. Then comes the econometric section, where you have the linear regression model and their properties, right? This is the section. Identification problem, one question definitely comes from this in every year. It is their favorite part. Then you have simultaneous equation model, recursive, non-recursive model, discrete choice models, and time series analysis, right? So these are the things that you have to know. These are all basically from econometrics, and this is a little bit of portion that you need to know from the time series analysis, right? Now this is unit number 3. And in unit number 5, what do we have? Let me show you. In unit number 5, I have covered with you international economics. We have studied different trade theories. We have gone into balance of payment, and we have seen the different organizations, right? Different international treaties and international organizations in detail. So I have divided the entire syllabus into 3 different units for you. In the first unit, we learn all the basic trade theories from the very beginning to the modern developments of the trade theories, different paradoxes and all. We have covered that. In balance of payment, we have understood the structure. We have gone into different theories related to that. And in the final section, we have done different international treaties, international organizations, tariff, non-tariff barrier. So these are the 3 units that we have covered in our class.
right? So this is the overall overview of the syllabus that we need to, know for our UGC NET preparation. Now, in today's class, what I am planning to do is that since it's a marathon session, I will give you all the class notes. I'll show you an overview of all the class notes that we do for our paid batch. And we will see what are the different topics that you need to cover. I'll give you the glimpse of every topic that we have done in our paid batch. And if you are someone who has not joined our paid batch, who are preparing for YouTube, you can basically, understand what are the things you need to do and then prepare it for yourself, right? I'll give you the glimpse, the overview of the things that you need to cover. So let me give you that. So here, if you see, I have opened all the class notes that we have for our paid batch. Okay. So let me give you the overview of what are the different things that we have done and what are the different things that you need to know for your syllabus. So see, we started off with the elementary probability theory. So the first unit I showed you was probability. Here, firstly, we need to know some basic terminologies. You can see it here. In basic terminology, we understand what is random experiment. Random experiment is an experiment that we repeat under similar situations. So we know all the possible outcomes, but for each possible trial, each particular trial, what will be the outcome, that is not known to us. So that is what is the random experiment, and we have explained this with the help of examples. So these are some basic things that you need to know. What is meant by event. Events can be elementary, events can be composite. Then what is the sample space? So all these things are required for solving questions. Basically, in probability, they either ask you questions from the different definitions of probability. We have learned 3 definitions. I'll show you that. Or they will give you some questions to solve. These are the 2 different kind of questions that might come. So then you have sample space. The set of all possible outcomes is known as the sample space of a random experiment is the sample space. I have given you different examples for that. Then we have gone into the concept of mutually exclusive events, right? Several events are said to be mutually exclusive or mutually disjoint if no 2 of them can occur simultaneously. These are some basic concepts. I hope you all know these concepts by this time. You can see this here, the diagram. These are disjoint sets basically. You can express this with the help of Venn diagram. Then you have exhaustive sets or mutually exhaustive events. Several events are said to be exhaustive. At least one of them necessarily occurs when the random experiment is performed. So if you take the union of all the events, that will be a sure event. And in the Venn diagram also, you can explain this. Equally likely means all the events are given equal preference. No event is being more preferred or less preferred than the other events. So these are equally likely. Favorable outcome. Those outcomes are said to be favorable for event A, which are such that A happens when one of them happens and converges. That is the favorable. And this favorable event is needed for finding the probability in case of classical definition. In the classical definition, in the numerator, you have favorable event, and in the denominator, you have all possible events. So that ratio gives you the probability. Then you have certain operations. This we all know. Union of events. Then you have intersection of events, complements of events. Complement means everything except A. Everything in the sample space except A will give you the A complement. Similar way, we have shown you the difference. How do you take difference? A minus B, B minus A. What will be the portions that will be signified in the Venn diagram? By that difference, we have shown you that. Then we go into the 3 definitions of probabilities, and these are their favorite questions. They can give you conceptual questions from this. So I have explained this in class. Those who are in the paid batch, they have, the entire lecture video. Here I can't explain you everything. If you want, you can take a screenshot of this topic, and I hope by this time all of you who are seriously preparing for this exam must have known these topics. So what is classical definition? Classical definition, the probability structure is like this. As I have told you, if E is the event, then NE represents the total number of favorable events to that particular event E, and N is the total possible. So see, total possible outcomes.
So see, total number of elementary events in a sample space is n, which is here in the denominator, where n is finite. In the classical definition, n cannot, if n is infinite, the probability will be n is equal to 0. It doesn't make any sense. So n has to be finite. All the elementary events are equally likely. And any of them are favorable to the event A, then the probability will be defined as this. So this is the classical definition of probability, and many questions, numerical questions have come from this. In the next video, we will go into the question solving. We will solve questions with you. So there I'll take up some of the questions from this portion, right? And we can show using this thing, we can show that this always lies between 0 and 1. Probability always lies between 0 and 1 because see, the number of favorable events can at most be n and the least will be 0. So if you divide all the way through by n, you will get this, and this any upon n is nothing but the probability. The probability of an event cannot exceed 1. It should strictly lie between 0 and 1, both increase. Right? So this is what we have done in our classical definition. Now, what will happen if E is impossible event? What will happen if E is sure event? Some special cases we have done. We have proved couple of results. We have done what is odds in favor and what is odds against, basically. Now we have gone into some fundamental probability laws using the Venn diagrams and the set theoretic notations, whatever we have used. We can, deduce these laws: commutative law, associative law, distributive law, identity laws, complement laws. You can see it here. Everything is covered. And then you have De Morgan's law. Questions might also come from De Morgan's law. There are two different laws. This is the first De Morgan's law. This is the second De Morgan's law. These laws express how complements of unions and intersections are related. Right? So you can take a look at this. Then I have given you certain proofs which are not important. The law of total probability, only the formula is important, nothing else. And then we have gone into some mode theorems, which are also theorem. Proofs are not that required, but the main statement, the result is required for your exam. Bull's equality, Bonferroni's inequality, these are certain things that you can skip if you want to. The concept of conditional probability has to be known. What is probability A given B? A given B is given by probability A intersection B upon probability B. Given that this thing should be strictly greater than 0. It cannot be equals to 0. It cannot be infinite. This is conditional probability, multiplicative theorem. Some important corollaries are being derived, and then Bayes rule. Right? Bayes rule again very important. If you want, you can take a screenshot. This you will find in any probability books, right? And Bayes theorem, here I have attached the proof also. In our paid batch, we prove this thing, but I don't think that it is required as of now. I don't have any scope to prove this here. So if you want, you can take a screenshot of that, right? You can pause the video, understand line by line, and do that. The final thing that we have done is the statistical independence of events. If two events A and B are independent of each other, then this condition holds. So they often ask you to check for independence of the events. So they will give you these probabilities, and then they will ask you to check whether these events are independent or not, statistically independent or not. So firstly, you need to multiply these two things, probability A, probability B, and see if this product is equals to probability A intersection. If it is true, then we will say A and B are independent events, statistically independent events, otherwise we say they are not. So this is that mutually independence. And here I have given you the difference between pairwise and mutual independence. If you want, you can take a look at that. And if A and B are two events, then the following results hold. A complement and B, they are also independent. A complement, B complement, they are also independent. A and B complement, they are also independent. And you can very easily show this. Here I have given you some of the limitations why we need different definitions of probability. So classical definition has some severe, difficulties. First is that it uses probability to define probability. So see the third point here.
that it uses the fact equally likely. In the definition, you have equally likely, but equally likely is itself in a probability concept. So it uses probability to define probability, which is one of the serious drawbacks. Then you have this definition is not applicable if the total elementary events is infinite. If n goes to infinity, this definition breaks down, collapses. And another limitation will be application is not possible if the elementary events are not equally likely. So the assumptions of this definition are the biggest limitations of this, definition. That is why we need to go to some other approaches, where we have two different approaches. First is the frequency approach. Frequency approach is also known as the statistical approach, where what we do, we define probability as this. So this ratio is intact, favorable events under the total number of events, but instead of taking the simple ratio, we take into account that n can be infinity also. Number of total events can be infinity also. So this is how you find out the limit of the relative frequency. This we consider as the frequency. So see, if a random experiment is repeated n times under the same essential condition and event A is connected with E, and we have found that this has occurred n e times, then the ratio Na upon n is known as the relative frequency. Now the limiting value of this relative frequency, if you take the limiting value of this relative frequency, where n obviously tends to infinity, is called the probability of event A. So this is the modification. In the previous scenario, in the classical definition, we do not know if n tends to infinity, what will happen. This possibility was unknown. So if this is the case, then the classical probability will not work. To overcome that loophole, to overcome that limitation, frequency definition is been formulated, right? So this is the concept that you need to know. No, basically, not many questions have come from this, but it's always better to know. If you want, you can take a screenshot. You can see this example that I have given you. And the final approach, which is the modern probability, approach, is known as the axiomatic definition, axiomatic approach, right? Which was developed by Kolmogorov, mathematician Kolmogorov. See, this is the foundation of the modern probability. Axiomatic definition is also known as the modern probability theory, which was developed by Andrei Kolmogorov in 1933. And these are the three different axioms which was postulated by this, approach. So this question have directly come. This is the direct question from your UGC NET syllabus. They have asked you what are the different, axioms which was postulated by Kolmogorov. So I would recommend you to please take a look at this. And if you want, you can take a screenshot if you don't know this already. Right? So we have done this. And finally, we have done a comparative analysis of the three methods. This is for your revision purposes. If you want, you can take a screenshot. Right? We have done the definition, the formula, and when should we apply each of these formulas, what are the different limitations and examples. Right? So these are the conclusions. So you can take a look at this, right? So this is about the basic probability thing that we have done in our class. Now let us move to the second thing, which is the distribution. So here I am just showing you, taking you through all the things that you need to know. And if you find that some of the things is not known to you, or some of the things you need to work on more, then you can definitely do it. The exam is on 29th, I guess, so you have some time left. So please take a look at all the things that you need to know. If you are in the paid batch, we have already done this thing. And if you are watching me on YouTube, please consult these notes and please prepare well, right? So here in probability distribution, what we have done, we started off with the concept of random variable. We understood what is discrete random variable, what is continuous random variable. So they can give you some examples and they will tell you which one of the following is a discrete random variable or which one of the following is not discrete random variable. So this kind of questions. So you need to identify, you need to know how to identify a random variable to be discrete or a random variable to be continuous. Here I have given you the concept along with the examples. Now in probability distribution, you can have probability distribution for discrete random variable and for the continuous random variable.
For discrete random variable, if you do, you will have probability mass function. And if you do that for the continuous probability distribution, you will have probability density function. And that is what we have defined using different examples. So firstly, the coin tossing example or the die rolling example, which you find in every book that we have done. We have, done in class how to find the expectation of a random variable, different, features of expectation, the sum law, the probability law. These are different features of expectation of a random variable. We have done what will be the variance of a random variable, what are the different formulas, how you can do that. And then after that, I have given you some questions, some problem questions, which I have also solved for you. So discrete probability distribution, this is the probability mass function. So in question, what kind of question you can expect? They will give you the different, values and the corresponding probabilities. They can ask you to find out what will be the expectation, what can be the variance of the random variable, what can be the standard deviation of the random variable, or they can give you one missing part. So using the probability mass function properties, you have to find out the missing part, right? So some value of C, suppose the value of C is missing, you have to find out what is the value of C. So they can give you questions like this also. So you need to know what is the probability mass function, what are the two different things that needs to be satisfied to call the function to be a probability mass function. This condition is very important. They can give you questions, small conceptual questions can be asked from this part. See, this example is given. Cumulative distribution function, they can give you the properties of the CDF. Properties of the CDF, there are different properties, monotonicity, it is limits, right continuity, the CDF is continuous from the right hand side but not continuous from the left hand side. The range and the probability calculation is given to you, right? These are all examples. This we do in our classes. Now, continuous probability is been described by the probability density function. So again, this has to be known. This is basically the area under the curve. Continuous probability will give you the area under the curve between the points A to B basically. PDF will also satisfy non-negativity and the total probability again has to be equals to 1. So sure, I have given you certain conditions, certain questions to show you that cumulative density function, see, the properties of CDF remains the same for both discrete and continuous. There is no difference in that. Now, what else? Joint probability distribution is not required for your exam. This we have done, though it's not that important for your exam. Covariance can be asked. Covariance and correlation, these formulas, right? These formulas can be asked. I have given you questions from that. Though it's not, joint distribution is not that important from your UGC NET point of view. So you can skip this and directly go into the distributions. Let me show you a little bit about the specific distributions that we have done. Yes. So some important distributions. So see here, these are all the discrete probability distributions. So here the Bernoulli, binomial, Poisson, some portion of the discrete. Only this much if you understand, then it's more than okay. And here I have listed all the continuous probability distribution where normal distribution is absolutely important. You have to know this. Continuous, exponential, I don't think they have given you, and nothing else. Now the students T chi-square F distribution, we do this in the sampling distribution portion. So yeah, so you have to know these things also. And after that, I have given you the detailed description of each of the distribution. Bernoulli. So for each of the distribution, you have to know what is the PMF or PDF, what are the basic properties, and especially binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, uniform distribution. These are the distributions which are basic and which you need to know, right? Which you need to know different properties. What will be the PMM? What will be the PDF? What are the mean of the distribution, variance of the distribution?
So these are the certain things that you need to know. They can give you conceptual questions from this. Here, this is the complete class note. Here I have derived everything that I have taught you. So moment generating function, I don't think it's required. They have not asked you question from that. This is binomial distribution. For each of the distribution, I have covered all these things. You can take a look at this. Poisson distribution, mean variance, discrete uniform distribution, skewness, kurtosis of each of the distribution, this, all these things we have covered. So here I have the normal distribution of this. Yes. So normal distribution is symmetric, right? It's also known as the Gaussian distribution. The PDF is like this. PDF, you need to know mean is mu, variance is sigma square. The properties of the PDF is given to you. Cumulative distribution, the standard normal distribution. Normal with mean 0, variance 1 is the standard normal distribution. And this, they have given you, this is a question from UGC NET, they have given you to find out the Z score. This is a direct question. So this Z score, how do you find out? X minus mu upon sigma. So if you know the mean, the standard deviation and X value at a particular point, you can find out the Z score. So please remember this thing. This is a direct question from your UGC NET paper. So in class, we do all the questions, but sure, due to time constraint, we cannot do that. The mean and the variance is given to you, though I will take a marathon session on the past year questions also in the next video. Skewness, kurtosis is given to you. A little bit of central limit theorem, only the statement that is important, right? You can take a look at this statement. If you want, you can take a screenshot. And this is how you do for all this. So this is the entire class note that we provide to our students who join our class. And here I have given you another thing, which is the transformation. So understand that you can, by the limiting cases, these are also known as the limiting cases. Binomial distribution can be converted into Poisson distribution under certain conditions. What are the conditions? When n tends to infinity, p tends to 0. P is the probability of success in each trial. N is the total number of trials. And the product of NP is a finite number, which is denoted as lambda. If these are the conditions, then binomial can be approximated using a Poisson distribution. Similarly, here I have given you the condition when binomial can be converted to normal, when Poisson can be converted to normal. You can take a look at this. What are the approximations and what will the parameters? After the approximation, what will be the parameters? These are also given to you, right? So you can take a screenshot. The proof is not required, but they can give you whether binomial can be converted to Poisson or not, whether binomial can be converted to normal or not, whether Poisson can be converted to normal or not, or under what conditions. So they have asked you this condition before also in your exam. So that is why I included this thing. This is the relationship between the relationship among binomial, Poisson, and normal distribution. You can take a look at this, right? So this is about the probability portion. Now let me quickly show you what we do. Let me close this folders. So in descriptive statistics, right? In descriptive statistics, we directly want to study. So in the initial cases, we have the different basic things, collection of data and all, which are not basically required for your exam. What is required is, let me show you. Let me directly go to the central tendency portion from where your syllabus begins. These are all the previous portion that we do in our descriptive statistics portion. Let me show you. Yeah, so measures of central tendency. In measures of central tendency, these are basically descriptive statistics. So basically, if you have a data set and you want to find out the key features of the data set, then you will use the different tools and methods of descriptive statistics. So in case of central tendency, what you do, you find out a central value that will represent the entire data set. You try to find out the representative value.
So mean, median, mode, whatever you know in case of central tendency, they are all representing that representative value that has the capacity to represent the entire data set that you are working with. So in order to do that, firstly, we need to know the desirable criteria. The desirable criteria of a good measure of central tendency. So any measure that you do, you have to, if you want to check whether the measure is good or not, you have to take a look at all these different criteria. These criteria will tell you whether your measures of central tendency or measures of dispersion will have different folder. I'll go into that. Whether they are good or not will be defined by these criteria. So all the measures should be rigidly defined. That is, it should have a unique value, a particular value. Then it should be simple, easy to understand and calculate. Then you have, it should be based on all the observations, definitely. It should be least affected by sampling fluctuations. It should not vary much from sample to sample. Then it should be capable of further algebraic treatments, and it should not be much affected by the presence of extreme values. So these are the different things that has to be satisfied in order for a measure to be a good measure of central tendency. Now, what are the different measures you have? These are the different central tendency measures. You have arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, mode, quantile, percentage. These are the 7 different methods of central tendency that you have, where this arithmetic mean is very important. They give you, so the mean, different means, AM, GM and HM. They give you the relationship, they ask you about the relationship among all these things also. And individually also, these things are very important. So arithmetic mean, every measure you can do in 2 ways. Firstly, you can take an ungrouped data, which means unweighted data. There is no frequency attached. All the frequency is 1 basically. So for unweighted, data set, how do you find that out? For that, we have a particular formula which you can see here. Then I have gone into the different properties of arithmetic mean. I don't think this much is required. For other courses, we do this in detail, but for UGC NET, I don't think. So they can give you this. This is the joint arithmetic mean, basically the group mean. So if you have 2 different groups, group 1 and group 2, in the first group, the mean is x1 bar, in the second group, you have x2 bar. In the first group, the number of observation is n1, in the second group, number of observation is n2. So altogether, you have n1 plus n2. In number of observation, then how do you find out the combined mean, or what you call as a pooled mean? Pooled mean or combined mean, this they give you sometimes. It will be n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n1 plus n2. So this is the formula for finding out the pooled mean or group mean. Basically, the combined mean of the 2 different groups, which you can see here. I have, derived all these things also. How are you getting this? But we don't need this. These proofs are not required. Here you have the merits of arithmetic mean. So they ask you this question also. Now, what are the merits and demerits? They will give you 4 to 5 points. They will ask you to find out which of the following is not a merit of arithmetic mean, which of the following is not a limitation, or which of the following is the limitation of arithmetic mean. So they give you these things. So please remember this. Then you have geometric mean. We have done the same thing for ungrouped data and for group data. How do you find that out? Please do these things, different properties which you don't need. Again, if the geometric mean of the 2 groups is n1 and n2, having n1 into observation as g1 and g2 respectively, then the logarithm of the composite geometric mean will be the weighted arithmetic mean of this. So basically, this is the property. But if you want, you can take a look at this. Right? So geometric mean, when do you use geometric mean? What are the merits? What are the demerits? Then you have harmonic mean, right? It is also a measure of central tendency. And also in which situation they are used. It is also a very asked question, frequently asked question, that in which scenario, they will give you a scenario and they will tell you in which scenario you use arithmetic mean, in which scenario you use harmonic mean, in which scenario you use the geometry. So this is also a question that they love to ask you. Different properties. And this is the harmonic mean formula for 2 different groups. Right? 2 different groups, n1, n2 different observations, h1, h2 harmonic mean for each of the observation, for each of the groups. Then this will be the formula.
So that is there. Uses of harmonic means, I've told you this part is important. When do you use different means? That portion is very important. And limit, merits, demerits is there. And final thing is the relationship. So in general, for a set of positive values, AM is always greater equals to GM, greater equals to M. So they give you directly this question also. Also, they love to ask you the question about, using the questions, using this relationship. There are certain questions they ask you, which is the application of this relationship. So please remember this particular thing. Here I have proved the entire thing, but proof is not that required. We do this in our classes. And this is also another relationship that they ask you. If the number of observation is 2, in general, what happens? AM is greater equals to GM is greater equals to HM. This we know. But specifically, if the number of observations that you are taking into account is only equals to 2, and or this is one situation, or if all the values are in the geometric progression, if these two conditions met, then this relationship also holds. AM into GM, sorry, AM into HM equals to GM. So these are the two relationships we know. AM is greater equals to GM, greater equals to HM. This is for all positive values of observations. And if this relationship holds in some particular scenario, AM into HM equals is GM square. This is also another relationship. It holds in only two cases. First is if the number of observation is 2, then this relationship holds. Second thing is that if all the values are in geometric progression. So basically they are like this, AR square, AR cube, like this. If this is the kind of progression, this is the first observation, this is the second observation, third, fourth observation. If this is the kind of observation, then also this relationship holds. Right? So these are the different properties of AM, GM, and HM. Then you have median. Median is the next measure of central tendency. We learn how you can use median. How do you find that out? So they can give you some ungrouped data and they will ask you to find out median. It depends on how many data points you have, right? So see, if n is odd, then n plus 1 upon 2th ordered value. Firstly, you have to arrange the values in the ascending or descending order. Then if n is odd, if the total number of data point is odd, then n plus 1 upon 2th number of ordered value will give you the median. But if n is even, then you have to consider two ordered data points, n by 2th data point and n by 2 plus 1th ordered value, and then you will take the simple arithmetic mean between the two. Then you will take the simple arithmetic mean between the two, that will give you the median. So here I have given you, this is for the odd number of terms. See, this is for the odd number of terms. Firstly, arrange the values and then find out the n plus 1 upon 2th ordered value. That will give you the median. Here this is 40. Fourth order value and the median will be 42 here. For the grouped frequency, absolutely you don't need that. We do it for our other courses. Then you have grouped frequency. For grouped frequency, this is the formula. This might be asked, right? I have given you this different properties, merits and demerits of median. When do you use this median? That is also a question. Finally, you have mode. Mode can be single value, it can be two values, or it can be multi-values also. Unimodal, bimodal, multimodal. For ungrouped data, how do you find that out? The value that is appearing maximum number of times. Okay, so simple frequency data, you will find out the maximum frequency. That will give you the median, that will give you the mode. And for grouped frequency distribution, you use this formula. This is the formula for finding out median for a grouped frequency distribution. If you want, you can take a look at this. Right? So this is there. I have given you a small description of the quartiles and percentiles as well. How do you find out quartiles and percentiles? You can take a look at this. Right? Quartiles and percentiles, this we have also done in our class. Now, one thing which is not there is that the empirical relationship between mean, median, mode. So many questions I have seen have come from this also. Empirical relationship, the relationship is as follows. Mean minus mode is equals to 3 times mean minus median.
So this is the empirical relationship. So they will give you any of the two values. They will give you mean and mode. They will ask you to find out what is the value of median, or they will give you mode and median. They will ask you to find out what is the mean, or the other way around. If they will give you mean and median, they will ask you to find out what is the value of mode. So this is also a very asked question. So please remember the empirical relationship among the mean, median, and mode. Right. So this is all about the descriptive statistics. Then the next thing that we do in class is the movement, skewness, and kurtosis. We need to know the concept of raw movements. We need to know the concept of central movements, right? You can see it here. I'm not going into details of this. Conceptual questions come from this, right? Conceptual questions come from this. You need to know that the first order central moment is always 0. First order central moment is always 0. Now, these are the different, skewness. In skewness, you have to remember this thing that for a positively skewed distribution, mean is greater than median, greater than mode, which you can see from this diagram. For a negatively skewed distribution, this is the most asked question. They ask you this question multiple times. That is why it's very important. I'm highlighting this portion. That is the reason. Negatively skewed, mean less than median, less than mode. Zero skewed, mean equals to median, equals to mode. This is the kind of normal distribution, right? Symmetric distribution. Here I have given you for different distribution what is the skewness. So see, exponential, chi-square, gamma, log normal are the examples of positively skewed distribution. Beta, left skewed normal or the truncated normal, examples of negatively skewed distribution. Normal distribution, uniform distribution, T distribution, Laplace distribution are all examples of symmetric distribution. So this is also a kind of important. They can give you multiple distributions and they will tell you which one of the following is positively skewed, which one of the following is negatively skewed. So you should be able to identify, right? So this is the formula using which we find out the skewness. Pearson's formula. This is also asked question. Pearson's formula. This is the first measure. Skewness is mean minus mode upon standard deviation. Now, using the empirical relationship of mean, median, mode, which I have previously described, you can change the numerator as this. Mean minus mode is 3 into mean minus median. The denominator remains the same. That will give you the second Pearson's measure. So, Pearson has two different measures using the empirical relationship among mean, median, and mode. You can find out the skewness of a distribution. And if they give you the quartiles, then you can use the Bowley's coefficient. Bowley's coefficient of skewness, which is a non-parametric method. They can give you the Q1, Q2, Q3 values, and they will ask you to find out the skewness. So you have to use this particular formula in that situation. It always lies between -1 and +1. So summary table is given. Now you have kurtosis. 3 types of kurtosis is there. Kurtosis reflect the peakedness, the height basically, height or the flatness of a distribution. Leptokurtic, platykurtic, and mesokurtic. These are the three. This is the formula for finding out kurtosis. See here, if beta 2 is equals to 3, so the distribution is bell-shaped, no kurtosis is there. Leptokurtic if beta 2 greater than 3, platykurtic if beta 2 less than 3. And you can form the gamma formula also. Gamma 2 is beta 2 minus 3. So if gamma 2 greater than 0, it will imply, so it comes from here only. If you put 3 here or more than 3 here or less than 3 here, you will get these gamma 2 values. So they can ask you about beta 2 or gamma 2. So leptokurtic, mesokurtic, and platykurtic. So these are the things which are important from the movement, skewness, and kurtosis. Okay, now the next up, the thing that we need to do okay. So the next thing that we do is the correlation. Correlation and the regression, where you need to know what is the correlation is a concept associated with the bivariate data, right? Correlation means we are trying to find out the interrelationship between 2 or more variables. So for that, we need at least 2 data, at least bivariate data is required. For your purposes, only bivariate data is what is important. Scatter diagram visually depict the relationship between the 2 variables. Now, there are different types of correlation that we study in our class. So, Pearson's correlation coefficient is given by R, which can represent
which can take different values from -1 to +1, and for different range of R, different correlation is being suggested. So if R is strictly greater than 1, the data points will be strictly on this upward sloping line, positively slope line 45 degree. And if it is close to 1, not 1 but close to 1, it signifies highly positive correlation. This is perfectly positive. This is highly positive. If it is close to 0, then it will have low positive correlation. If it is exactly equals to 0, then see the data points are absolutely scattered. There is no correlation. Then if you have the data points are scattered across the negatively sloped line, then the value is negative. R is -0.3, which is low negative correlation. If it is close to -1, highly negative correlation. So it is also negatively sloped close to this line. And if it is perfectly negative, then it absolutely falls on this straight line, right? So these are different correlations. So they can give you different values of the correlation, and you have to identify which degree of correlation we are talking about. Product moment correlation coefficient, this we all know. It is also known as Karl-Pearson correlation coefficient. This is the formula. They can ask you to find this out. They can ask you to interpret this measure. Different key features I have listed. The different key features lies between -1 +1. Symmetry, unitary measure, sensitive to outliers, linear only. It measures only the linear relation, linear correlation, nothing else. Assumes normality, and regression line equation of y on x, regression line equation of x on y. This we also do in our class. Why they are different? Regression line intersect at x bar, y bar. The intersecting point is the mean of two, regression lines. And this is the relationship. They ask you questions from this also. The product of the regression coefficients is equals to the square of the product moment correlation coefficient, basically R square. The questions are formed from this. This is the interpretation. In which case the regression lines will be perpendicular, in which case the regression lines will be completely coinciding. This is what I have given you. See, both the regression coefficients are reciprocal. The relationship between x and y are perfectly linear. All the data points lie exactly on the regression line. Then, okay. So when will the two regression line will coincide? This is the scenario. And when two regression lines are right angles, then R is equal to. So when the two regression lines coincide, the value of R can be either +1 or -1. So basically perfectly positive correlation or perfectly negative correlation. But if two regression lines are, at the right angles, then R will be absolutely 0. So this is also another question. And what will be in that case? What will be the scenario that is been mentioned? So again, if you want, you can take a screenshot. Okay, so let me quickly show you the next thing, which is the measure of dispersion. Firstly, understand that in case of measure of dispersion, you have two different measures, absolute measures and relative measures. In absolute measures, all the measures will have their different units, but in case of relative measure, they are all unit-free measures. So this is the conceptual question they ask you in different ways. So please remember this fact. Now I have given you the different measures. What are the different absolute measures of dispersion? You have range. Range is the simplest, most measure of dispersion. Simply the maximum value minus the minimum value. Then you have semi-interquartile range, mean absolute deviation, variance, standard deviation. All these have their own particular unit. That is why we cannot compare the two measures. Right? Range of one distribution cannot, or data set cannot be compared with the range of the other data set if they have the different units of measurement. It is true for all the other absolute measures of dispersion. That is why we have to convert absolute measures into relative measures. So corresponding to each absolute measure, you will have a relative measure as well. Coefficient of range. Semi-interquartile thing will be coefficient of variation. Then you have coefficient of quartile deviation and coefficient of mean deviation. So corresponding to each of these measures, you will have different relative measures also. So now see, this is for the range. Range is, as I've told you, the largest value minus the smallest value, and this is what we find out if you want to find out the relative measure.
This is the absolute measure, this is the relative measure, and here I have listed all the, merits and demerits also. I have given you the questions and I have given you the calculation. Then you have quartile deviation. Quartile deviation is this. This is the absolute measure. Q3 minus Q1 by 2, which is also known as the semi-interquartile range. And then if you do this, you modify this thing, you make it unit free, it becomes the relative measure. So this is absolute measure and this is the corresponding relative measure. Again, questions have been given to you. Then you have mean deviation. This is the formula you can see. Mean deviation for the ungrouped data, mean deviation for the grouped data. Corresponding to that, we have coefficient of mean deviation. It can be with respect to mean, it can be with respect to median, it can be with respect to mode. I have given you calculations. Standard deviation. We ask you different questions from standard deviation. Standard deviation can never be negative. It is non-negative. Different formulas you can use, different properties and the questions. And CV is also asked question. CV can be found out using this. SD upon mean into 100. This will give you the coefficient of variation. So see here, the distribution having greater CV is regarded as less stable or more variable than the other. So they will give you the CV of the first distribution, CV of the second distribution. Depending on the values of the CVs, you can find out which distribution is more stable, which distribution is less stable. Right? So if CV1 is greater than CV2, then it means that the first distribution is less stable, which means it is more variable and vice versa. So this is also given by Carl Pearson, and this is the values of standard deviation cannot be used as a basis of comparison because the units are different. That is why we need this relative measure. Right? So these are the different things that you need to know from the measure of dispersion. Then we have index number. So in index number, you have different kind of index number. But the main important thing that you need to know is this. Laspier's method you need to know in details. Pasch's method you need to know in details. Then you have Fisher's method, and then you have Marshall-Edgeworth method. These are the 4 methods they give you questions from. Now, Laspier's method and Pasch's method, they do not satisfy time reversal, factor reversal test. Marshall-Edgeworth satisfies the time reversal test. Only the Fisher's ideal method, since it is ideal, it satisfies both. Both the time reversal and the factor reversal test are satisfied by them. So here I have listed different methods, all the methods that you have seen in the chart. So see, this is the Laspier method. I hope you know these things. Please take a screenshot if you want. This is the method. This is Pasch's method. These are the other methods. If you want, you can take a look at this. Fisher's method is the geometric mean of the Laspier and the Pasch's index. Very important. Very important thing. They have asked you questions about this. If question comes, they ask you questions from these only. Marshall-Edgeworth method, you can take a look at this. Now, tests of index number, this is also very crucial. The main important part is this. What is time reversal test? What is factor reversal test? So they give you whether an index number is good or not. So time reversal means if you change the base, if you change the time in the suffix, you represent the base basically. So I01 means 0 is the base period, 1 is the current period. And I10 is just the reverse. 1 is the base period, 0 is the current period. So we write this to be the base and this to be the current period. So if you interchange this, that will, the result will be absolutely reciprocal. So that is why the product will be absolutely be 1. If this is the scenario, if this is satisfied, then we call that the index number has satisfied the time reversal test. So there are 2 different, index numbers which satisfy this time reversal test. One is the Marshall-Edgeworth index and another one is the Fisher's index. Whereas in case of factor reversal test, we say price index into quantity index will be exactly equals to the value index. If this is true, then we say that the factor reversal test is satisfied. Only the Fisher's formula, only. Most asked question, only the Fisher's index number satisfies this factor reversal test. That is why it is known as the best index number or the ideal index number. Fisher's index satisfies both time reversal, factor reversal test. That is why it is known as the best or ideal index number. This is asked question during UGC NET.
Then I have given you the chain weighted index number also. In 1 or 2 years, I think this question have been asked. That is why I have included them. If you want, you can take a look at this, right? So this is the small part of index number. Now the next portion is the econometrics. Econometrics, I know many students find it very difficult. Econometrics. Uh, so here what I will do again, as I am doing right now, I will give you the overview. I cannot teach you everything in this video, but I will give you an overview so that you get the idea of what are the things you need to cover. So we start with the classical linear regression model, which looks like this, as you can see in the screen. Now, the most important thing that you will have to know is the assumption. This we all know, assumptions are very important. You need to in depth need to understand what are the different assumptions. So you have linearity. Linearity has to be in terms of parameters, not in terms of variables. Non-stochastic x values are fixed in repeated sampling. They do not have any probability distribution. Zero conditional mean of the error term, which is given as this. Expectation of ui given all the explanatory variables should be equals to 0. Then you have the assumption of homoscedasticity. The error variance have to be constant, given all the explanatory variables. No autocorrelation. Covariance of ui, uj, given all the xi, xj's, they has to be equals to 0. That is, the error terms are usually uncorrelated with each other. Then you have this no perfect multicollinearity is mostly an MLRM assumption that the explanatory variables should not be correlated with each other. Independent variables should not be correlated with each other. And what will happen if these assumptions do not hold? So the important point is that for each of these assumptions, if they get violated, then what will happen, and also what are the different tests that we use to detect if this violations is happening or not, right? So that we have to know. Number of observations is greater than number of parameters to be estimated. All the x values should not be the same. That is, variance of x should be strictly not equal to greater than 0 basically. And normality is not an usual assumption, but if you are doing hypothesis testing, then normality is important. Right? You can see it here. Then the key properties is that blue property is satisfied. If all the OLS assumptions hold, then all the CLRM assumptions hold, then the method of ordinary least square, the estimation that you will get using the ordinary least square will give you the best linear unbiased estimator. There is a detailed proof that we do in our classes, but here I don't have the scope to do that. As of now, please remember this thing. This is ensured by the Gauss-Markov theorem. Unbiasedness, efficiency, consistency, everything is been met. These are the estimators. These are the formulas, couple of formulas for the estimation. The mean and the variance formulas are given to you. If violation happens. So what is firstly heteroscedasticity? If homoscedasticity assumption gets violated, error variance is not constant, you have heteroscedasticity. These are the different consequences for that. Bias, standard error, inefficient estimators, invalid inferences. What are the different tests? This is very important. Consequence and the tests used. So for heteroscedasticity, you have consistency holds, unbiasedness holds, but the estimates will be inefficient in nature. So the minimum variance will not hold. In case of autocorrelation, exactly the same. Consistency holds, unbiasedness holds, but again the coefficients will be inefficient. In case of multicollinearity, consistency holds, unbiasedness holds, and efficiency also holds. So these are the three, consequences that you need to know. If you know this thing, everything will be fine. And also the tests used in order to detect heteroscedasticity, Goldfield quant is the most important test. Other than that, you have Bruce-Pagan, White's test, Park test, Ledger test, Spearman's rank correlation test. They give you this test. They ask you about this test. Also, they ask you about the different, equations that you use, that you need for this test. So please understand this test in a little more detail. How to handle heteroscedasticity? We usually use the weighted least square method or the GLS method. Then you have the concept of autocorrelation, consequences, different tests used. Please understand these things well. Handling autocorrelation. Then you have multicollinearity, again the same thing.
For multicollinearity, we use the variance inflation factor, VIF. If VIF is greater than 10, we say that yes, multicollinearity is present. And there are different tests also. You want to know a little bit about these tests, right? Handling method, and here I have given you the summary table of these three things. R squared, very important concept. It explains the total, how good is your model. Is a goodness of fit measure. How well fitted your model is will be given by this measure. It lies between 0 and 1. Higher the value, the better is the model. But the only limitation is that if you keep on, including more variables in your model, R square will be ever increasing. It cannot decrease. But the variables that you are including, they may not be significant. That is the part which is been ignored by the measure of R square. That is the major limitation. That is why we need to go into adjusted R square. This is the formula for adjusted R square. I have interpreted. You can take a screenshot if you want. Limitations are given to you. The comparison between R and R square and adjusted R square is given. Okay, so now next up, the concept that we need is the simultaneous equation model. Now, in simultaneous equation model, what happens is that the interdependency among the variables are observed. So we usually have two or more different equations where the independent variable of one equation becomes the dependent variable of the other equation and vice versa. So you cannot specifically identify which one is the independent variable, which one is the dependent variable, because as I've told you, dependent or the independent variable of one equation becomes independent or the dependent variable of the other. So basically the bidirectional causality exists. Right? In case of simultaneous equation model, bidirectional cause and effect relationship basically exists. And the problem, the main problem that arises is we call as the endogeneity problem. So in case of classical linear regression model, one of the main assumption was that the explanatory variable has to be uncorrelated with the error terms, right? Stochastic error term. But in case of simultaneous equation model, this uncorrelated thing, this assumption gets completely violated, because as I've told you, there is interrelationship. So when interrelationship exists, the explanatory variables inevitably becomes correlated with the error term. So the problem of endogeneity arises. This is called the endogeneity problem, which makes the estimation of simultaneous equation a little difficult. And that is why the problem of identification arises. So endogeneity, understand, in same simultaneous equation model, some variables act as both dependent and independent variable in different equations, creating a situation of endogeneity where the error term in one equation correlates with the independent variable of the other term. So if simultaneous equation is present, then you cannot apply the OLS method. This is one of the most important and asked question, that ordinarily least square cannot be used for estimation because the error terms are correlated and with independent variable, leading to biased and inconsistent. So if you have simultaneous equation model and still you apply the OLS method, your estimates will be biased and inconsistent. So you cannot do that. What you have to do, you have to use the other approaches. Specifically, we will go into the instrumental variable approach. Also, there are different methods: two-stage least square, three-stage least square, full information likelihood, maximum likelihood. These are the different alternative methods that we want to use when simultaneous equation model is present. So see here, the instrumental variable to overcome endogeneity, instrumental variable technique is used to provide consistent estimators. You cannot use OLS because one of the assumptions of CLRM is getting violated, and we know under Gauss-Markov theorem, only if you have all the CLRM assumptions holding, then only the OLS will be blue estimators. But since here all the assumptions are not met, not holding, that is why OLS will give you biased and inconsistent estimates. That is why we have to go into alternative estimation process. Specifically, we go into the IV method, where this method provides us consistent estimates. The instruments are variables that are correlated with the endogenous variables but are uncorrelated with the error term. Right, so we introduce some instrumental variables which are correlated with the endogenous variable but which are uncorrelated with the error term, which solves the problem of endogeneity basically, and then we use the usual process of estimation. And there are some other methods also. For example, two-stage least square, three-stage least square, full information maximum likelihood. These are also alternative methods
that you can use for your estimation. Here I have given a short description of each of this method. If you are interested, please take a screenshot and give it a read. Not that important, only the methods are important, which methods are required. What are the advantages of this model? Can be used for modeling the complex interrelationships, which we cannot do in case of CLRM. Also allows for the feedback loops where variables influence each other simultaneously. Now, in case of simultaneous equation model, the problem of identification arises, which basically means it is the challenge. It refers to the challenge of determining whether the parameters of this model can be estimated uniquely or not. If you see that the model is over-identified, then we will say that there is no unique estimation value and you can have multiple. The model is estimable and it will have multiple estimates of the parameters. If your model is exactly identified, then you will say that a unique estimation is there. And if it is under-identified, then the model is not estimable and we need more information. And now how do you identify that? How do you identify that? For that, you have two different conditions, as we all know. One is the order condition and another one is the rank condition. Usually in your UGC NET exam, they ask you questions on order condition. They give you simultaneous equations. In class also, we have done this in detail. They give you 3 equations and they will find, ask you to find that check what is the order condition for the first equation or the second equation or the third equation, like that. Rank condition, they have given you only I think in 2024, the recent paper, they have given you rank condition also. If you want, I can make a separate video on that. But as of now, in the theory portion, see what we need. This is the order condition. As we know, in the paid batch, we do this K, M, and G. You have to define 3 variables. K is the total number of endogenous and exogenous variables in the system. M is the total number of included variables for a specific equation. So they will mention that specific equation to you, first, second, third, anything. And G is the total number of endogenous variables. Now, depending on these 3 criteria, you can easily find out what is the order condition. If this is strictly greater, it will be over-identified. If it is equal, it will be exact identified. If it is less, it will be under-identified. And what does this mean? As I've told you, this is also written here. Please see this thing. And this is about the rank condition. Now, rank condition, it is very difficult to explain theoretically. And I am planning to give you in the marathon session in the next video. When I'll solve question, I will try to solve one entire question on simultaneous equation model, where I will try to teach you how to find out the order condition as well as the rank condition, right? So order condition is the necessary condition for identification and rank condition is the sufficient condition. So here, if you want, you can theoretically take a look at this. I have given you this note, but I know it seems a little difficult. That is why I'm skipping this portion. As I've told you, when I take the marathon session, I'll go into this, right? Then you have final thing is the recursive model. Recursive model means unidirectional relationship exists. In case of recursive model, see, the difference is that the causal relationship still exists, but the direction will be unidirectional. Simultaneous model, bidirectional causality exists. But in recursive model, causality still exists, but it is unidirectional in nature. So for that, see, in such a model, endogenous variables are determined in a sequential manner with no feedback loops. Feedback loops we see in simultaneous equation model. In recursive model, there is no feedback loops. There is no variables influencing each other in both directions within the system. So unidirectional causality is the main feature, which is the main difference of it from the simultaneous equation model. No simultaneity exists. Causality exists, but that will be unidirectional. And here I have given you an example for that. You can take a look at this. This is the structural equation which I have told you. How do you estimate this model? Recursive models can be estimated again using 2-stage least square and generalized least square methods, right? This is the estimation process which you need. And this is also asked question that independent variables may be correlated with the error term of the other equations, but not with the error term in which they are present. So this exact question is being given in your UGC NET. Multiple years. They have given you this condition which is satisfied for recursive equation. So please do that. And then you have discrete choice model where we have studied logit model, probit model, tobit model. This is the general structure. You can take a look at this.
It's impossible for me to explain this right now. I have a separate video which is available. If you want, I can give you that, right? So these are so basically the question comes from the logit function. This is the logit function. They will give you different range of P and they will tell you what will happen to the logic function. This is the general question that they ask you, and some conceptual question from the Probit model and Tobit model. So for example, the Tobit model is, it is an extension of the Probit model, and in which information on the regression is available only for some observation. Such samples are called censored samples. Therefore, Tobit model is also known as the censored model or limited dependent variable model. So they can ask you, what is the alternative name for the censored model? What do you mean by censored model? Which of the following model is using the censored sample and all? So this kind of conceptual question they may ask you from this, right? So this is about econometrics. Then you have the sampling. In case of sampling, to understand the concept of population and sampling, understand some important terms. For example, what is parameter? What is statistic? Sampling distribution. In case of sampling distribution, you don't need this distribution sort of things. What you need is that the different kinds of sampling. Basically, here, this is the important thing from sampling, that what are the different probability sampling techniques? What are the different non-probability sampling techniques? So you need to know each of these things very well. Each of these sampling methods has to be known in very much details. Also, what is probability and non-probability sampling? What is SRSWR? What is SRSWR? Only the concepts are important. And some results. So under SRSWR and SRSWR, what is the expectation and what is the variance? Let me show you the summary table. This is the summary table that you need to know. Please, if you want, please take a screenshot. Questions will come from this because they will give you the values, different values. They ask you to find out what is the expectation, what is the standard error. For proportions also, we have the same thing. Sample proportions. Basically, again, the summary table is given. If you want, please take a screenshot, pause the video, write it down. And there is a short note for all the other sampling methods. So cluster sampling, systematic sampling, stratified, convenience, any kind of question can be asked from this, any kind of question. So from the definition, they can ask you the questions. From the examples, they can ask you the questions. They can formulate their own context and they will ask you which kind of sampling is appropriate in this situation, any kind of questions or matching sort of questions. They will give you list 1, list 2. They will ask you to match the questions, right? Snowball sampling, difference between the cluster and the stratified. This is also a question. So they will try to confuse you between the two. You can read about this. You can understand what is the difference between the two. And finally, I have gone into some important sampling distribution. We have the Z distribution, where I have explained some critical values for that. T distribution, see, this is the T distribution. Different properties of T distribution. Then you have chi-square distribution. It is the sum of squares of independent standard normal variable. Basically gives you chi-square, positively skewed distribution or right skewed distribution. These are some of the important points from that. Then you have F distribution. It is the ratio of two chi-square distributions, two chi-square distribution with respective to the degrees of freedom. Basically, this is the F distribution. It is also a right skewed distribution, only takes positive values. And here is the, here is the thing, you can take a screenshot if you want, right? This is done. Now, in case of statistical inference, you have two different segments. One is estimation, one is hypothesis testing. So estimation can be of two types. Either it can be point estimation or it can be interval estimation, right? So in the note, I have given you each of these methods. This is the confidence interval for mean. What is the difference between the point estimator and interval estimator? What are the good properties of a good estimator? Unbiasedness, consistency, efficiency, sufficiency. What are these differences? So R.A. Fisher, he basically postulated all these properties. Then I have explained to you what are these different properties. Questions can be asked
Please understand this concept. This is also very important from your research point of view. Those of you who will pursue research, this is important. Efficiency, sufficiency, asymptotic normality. Now, point estimation methods, two different methods are there, method of movements and method of maximum likelihood estimator. In method of movements, you find out the sample movements, you find out the population movements, and you just equate them. That is the only thing that you do, which is given as this. Sample movements and population movements are equated. From that, you estimate the point estimator. And in case of maximum likelihood, you find out the likelihood function. This is the structure of the likelihood function. Then you take logs on both sides to simplify this thing. And then you try to maximize this log likelihood function. That is the process. This is the point estimation method. One is the method of movement where you equate sample and the population movements. And then you have this method of maximum likelihood estimate. And finally, you have the interval estimation. This is the process. Firstly, you choose for which parameter you want to do it. Select a level, confidence level. It can be 95%, 99%. Calculate the sample statistic, then determine the standard error, find the critical value, and then finally go into the interval. The structure remains the same. Any parameter that you find out, the structure of the confidence interval remains the same. Firstly, you write the sample statistic plus minus the critical value into the standard error. So this is the general structure of the confidence interval. Here we have defined 4 different cases. What will happen for mean when the population variance is known, for mean when the population variance is not known, for standard deviation when the population mean is known, for standard deviation when population mean is not known. So in class, we have done these 4 different cases. First case, we use the Z distribution. So when the population variance is known, then Z distribution is used. When population variance is not known, T distribution is used. So this is the T distribution. This is case 2. We have used the T distribution here. In the third and the fourth case, we use chi-square distribution. This is chi-square. This is also chi-square. Then we have gone into the hypothesis testing. We have defined what is hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis, test statistic. What will happen for the small sample if n is less than 30? And this is a question from UGC NET. Small sample t-test was developed by William Gossett. William Gossett developed this, and here I have discussed different properties of that. Degrees of freedom is usually n-1. Population variance is unknown. That is why we are using the t-test. And it can be also used to test the hypothesis. The coefficient of the population is 0. And let me come down. Test statistic, different test. If you have only one sample, t-test formula is this. If you have 2 samples, the formula changes to this. If you have unequal variances, then the formula changes to this. So I have written every possibility. Paired t-test, this is the formula. For the regression coefficient also, in case of CLRM, MLRM also, we use this t-test for individual coefficient significance testing. For correlation coefficient testing, we use this formula. So different formulas are there. Here I have given you a summary table. If you want, you can take a screenshot. Then we have gone into the large sample test. Large sample test was given by Fisher when n is greater than 30 and the population variance is known to us. Then we use this Z test. These are the different properties of this test. You can take a look at this. Test statistics, 1 sample Z test, 2 sample Z test. So they can ask you to find out the statistic value as well as what will be, in which situation you use this kind of statistic. So that can be asked. For proportion, for 2 sample proportion, this is the thing. Z test for regression coefficients, when the population variance is known, you can use this formula. Right? This is a summary table. Now, this question they might ask you, this is, they have asked you this question. So what will be? At 5% significance for the two-tailed test, Z value, the critical value. These are the different critical values. So if you have a distribution like this, so Z distribution, this is not symmetric. I'm drawing a freehand diagram here. So let me draw a better diagram. So
suppose this is a Z distribution, this is symmetric about 0. So the area on the right hand side of the 0 and area on the left hand side of the 0 is absolutely the same. So what is the value to the right of which 5% of the distribution lies? This will be 1.645. That is this. What is the value after which 2.5% of the distribution lies? That will be 1.96. What is the value after which 1% of the distribution lies? This is 2.33. What is the value after which 0.5% of the distribution lies? That will be 2.58. So these are the 4 critical values that you need to know for the Z distribution. Z distribution is basically a normal distribution only with some special features. Then you have variance ratio test when you use the F distribution. ANOVA. In case of ANOVA, we use the F distribution. These are the formulas given. And when do you use the chi-square test? Goodness of fit. In order to test the goodness of fit, this is the, we compare the observed and the expected frequency. This will give us the chi-square test. See here, I have given you, right, the goodness of fit. See, summary table, goodness of fit. Chi-square can be used for testing the goodness of it or for checking the independence. Both things are given. And here I have given you a difference between parametric and non-parametric tests, right? If you want, let me, yes, if you want, you can take a screenshot of this and you can understand, right? So here, remember that which of the following are parametric tests and which of the following are not non-parametric tests. So Spearman's rank correlation, chi-square test, these are some important non-parametric tests. They can ask you this question. And one sample t-test, independent is ANOVA, Pearson's correlation. These comes under the parametric tests, right? So this is about the inference. The final topic that we will touch upon will be the time series. So time series, basically, all the data points will be measured across different time points. Now, there are 2 different methods of modeling time series. First is the classical method, another one is the stochastic method. In classical method, what you do, you classify the time series in 4 different components. You have trend component, which is denoted as T, which gives you the long-term direction. Either the direction will be like this, which is the long-term direction, or the time series will be like this. So it will have a downward direction, or it can be simply like this, which will have this. So the long-term direction, what will be the long-term direction of the time series will be given by the trend component. Then you have the seasonal component, repeating patterns within a fixed point. Basically, usually the period is taken to be less than 1 year or absolutely 1 year. If you have periodicity for more than 1 year, it will be given by the cyclical component. Fluctuations over longer period, which is not fixed. And then for additional, irregularities, because we are modeling the real life scenario, some sort of irregularity will be there. So for that, we take this random part. So now, using these 4 components, you can either form the additive model or you can form the multiplicative model. If you add the 4 components, you will get the additive model. It is used when the seasonal variations are constant over magnitude over time. And you can also form the multiplicative method where you simply multiply all these 4 components. It is used when the seasonal variations change proportionally with the level of the series. So this is that. Then you have stochastic models. In case of stochastic models, what we do, we define the model in terms of the probability distribution. Basically, we form a function which will have a random component. See, unlike classical models, stochastic model assumes data generated from a probabilistic process with inherent randomness. Now, this randomness follows some IID, some particular distribution. Now we define the concept of stationarity. Stationarity means the features of this model not changing of the time. What are the features? Mean variance and the autocovariance, which are basically required, very much required for any kind of data. Now, stationarity types. They also ask you, it can be strict stationarity or the strong stationarity. For strict stationarity, the distribution, the probability distribution itself has to be the same. So all the subsequent features will be the same. Implication is required. Implications are written here. Please take a look.
Weak stationarity, they ask you questions on this. What are the different conditions for proving weak stationarity? Prove that the mean is constant over time, not varying with t. Prove that variance is also constant, which is not varying over t, and autocovariance. This is the autocovariance. This is also not varying over t. It can vary over the lag period, that is k, but it will not vary over t. So all these things are time invariant. If this is the case, then we call this process to be weak stationary or covariance stationary. Now, how do you test this? Different tests of stationarity in question comes. Decayfuller, augmented decayfuller, Phillips-Perron, KPSS. For structural break, you have Zivot and Andrews test. So all these tests are very important. For all these tests, firstly, I have only included those portions which you need. So firstly, all these tests is designed to test the presence of unit root. If unit root is present in your model, it means the process is non-stationary. So now one thing you have to remember, two things you have to remember. Firstly, the structure. What is the structure? Each of the test is based on which distribution, which kind of process. And the second thing is that in the null hypothesis, what you are testing. Whether in the null hypothesis you are testing that unit root present or unit root is not present. That is required. So this Dickey-Fuller test is used for autoregressive process of order 1. This is the autoregressive process of order 1 for which we use the Dickey-Fuller test. To identify this model is stationary or not, we use this test. This is the process I have given, types of equations. Test procedure is given to you. So see, if we reject H naught, then the process is stationary. If we do not reject H naught, then it is non-stationary. So this thing has to be remembered. In H naught, what you are measuring, in alternative, what you are measuring. Limitations are given that it assumes the residuals are white noise and not valid if the residuals are autocorrelated. So basically, if you have more residuals becomes autocorrelated, then you have to use this augmented Dickey-Fuller. Again, the null hypothesis. So these are same. All null hypothesis again, represents a non-stationary. Only for the KPSS test. Remember, only for the KPSS test, the null hypothesis is the stationary. For all the other tests, the null hypothesis is the non-stationary. This we use for, so this null hypothesis has to be remembered. This is used for higher order autoregressive processes. I have given you this process. Phillips-Perron also test for stationarity, uses non-parametric corrections. Again, the null hypothesis is non-stationary. KPSS test. KPSS, in the null hypothesis, we have the process to be stationary or not. This is important. This is a question from UGC NET that in which of the following tests the null hypothesis is stationary. So that is only for the KPSS test. And for structural break, you can use the Zivot-Andrews test, which I have written here. Now I have gone into different kinds of processes. You have the white noise process, you have random walk process, different structures has to be known. Autoregressive process, moving average process, ARMA, autoregressive moving average process. You can take a screenshot if you want. ARIMA, SARIMA, ARCH model. ARCH is autoregressive conditional heteroscedasticity. This is the form for that model. And GARCH model. Right? This we do in our classes. Vector regression, vector autoregression model or the GAR model. This is the multivariate time series. These are great. Now you have the concept of ACF and PACF, autocorrelation function. Autocorrelation helps you to find out the presence of MA components of the data. So how maximum lag of the MA components. Partial autocorrelation helps you to detect the AR components, the maximum lag for the AR components. And here I have given you the identification strategy. Here we, with the help of a specific example in class, I have explained you how to find out the maximum lag values of AR and NR. Right? So this we do in our paid batch. Co-integration. Co-integration is a concept which they started asking in the recent years. Correlation means suppose we have started with two non-stationary time series. Suppose xt is a non-stationary time. I1 represents the presence of unit root, basically non-stationary, and yt is also a non-stationary process. So you start with two non-stationary process, but what you do, you take a linear combination of this. Linear combination. Suppose a xt plus b
YT. Suppose you take a linear combination and this linear combination becomes stationary. If this is the case, then you say that the XT and YT are two co-integrated processes. So basically, co-integration represents a long-run equilibrium. Long-run equilibrium. See here, two or more non-stationary time series that is integrated of order 1, but the linear combination becomes stationary. Then it will be co-integrated, right? So here see ZT is YT minus beta. So this is also a linear combination. If this becomes I naught, that is stationary, then we say XT and YT are co-integrated. The co-integrating vector will be given by these coefficients 1 and minus beta. Why co-integration is required? This you can take a look. Yes, so you have to know why this co-integration is important. Co-integration, as I've told you, suggests the long-run equilibrium relationship among the variables, and it helps to avoid the spurious regression. Spurious means meaningless. Basically, if you regress, suppose the age with suppose the size of your shoes. So yeah, that could be correlated. But some examples, suppose your how many books will you purchase is not dependent on your age. Basically, if you regress two meaningless variables with each other, basically age, my age, and suppose the number of books that I need. Suppose this is the example. This kind of so number of books that I need is not dependent on my age. Or you can find out some better examples also. So spurious means meaningless, the regression which you should not perform, but due to some mistake you are doing this. So that kind of nonsensical regression is known as spurious regression. So co-integration also helps you to avoid the possibility of spurious regression. That is why it's very important. Here I have given you a short explanation for the error correction model as well. Steps to perform co-integration, how to use the Johansson test for multiple series. These are the things which are given to you, right? A small portion of VAR they can ask you, the rest of the things are not that important. Co-integration is an important topic because they give you this question in recent years, but the rest of the things, if you want, you can take a look at this. I have given you this theory, so please prepare this well. So by this we have finished our unit number 3. This is all about statistics and econometrics. I have covered all the portions. I've given you an overview, sneak peek of what we do in our class, and what are the things that you need to do. So this is all about unit number 3. Now, what about unit number 5 in international trade? In our 50-day free course, I have given you most of the video lectures that we do in our class. So in YouTube, you will find my videos on this entire topic I have covered in YouTube, that is freely available. So I'm not going into this. There I have given you the actual lecture video that we use in class, Adam Smith's theory, David Ricardo's theory. Then we have what else? Haberler's theory of opportunity cost. And then I have gone into the Heckscher-Ohlin model in details. Again, this video is available on YouTube. I'm not going into this, right? Everything is covered both in a paid batch and also in the YouTube. So please refer to those notes. Stolper-Samuelson theorem, Rybczynski theorem, trade based on technological advancement, economic growth and international trade, where you have the Rybczynski theorem. And finally, what you have? Specific factor model. Again, this is there in the 50-day free course part. I'm not going into this. Gravity model of international trade. Right. So all the trade theories that we need to know is already there in your portal. Then you have balance of payment. Again, this entire thing. So in unit 3, I have done this in details because many of the portion which we have done in our paid batch is not available on YouTube. That is why I have given you the entire overview. Unit-wise overview, everything I have shown you today. But in case of international trade, most of the things I have given you in YouTube, right? So this entire note, this balance of payment, demonstration, past year questions, BOP equilibrium, disequilibrium, all the kind of deficits that you may have, all the policies, government policy, expenditure switching policy, expenditure reducing policies, exchange rate policies, everything. This lecture video is there. Please refer to that.
adjustments of the theories of DEP, the elasticity approach, absorption approach given, different paradoxes. For example, Prebisch Singer, every topic is important. Everything that I have covered here, every single topic questions can come from, right? Prebisch Singer, immersorizing growth, Mundell-Fleming, the main important postulates of Mundell-Fleming, what is the result? Important, some questions I have also solved along with the classes. And the final thing, which is the trade barrier. Only this portion, I think it's not present in your YouTube. So this is the note. In trade barrier, we covered the trade and the non-trade barriers. What are the types of barriers? This is there. These are certain questions. Non-tariff barriers, there can be different non-tariff barriers. Quota, subsidy, input licensing, voluntary export restraints, standards, regulations. So everything apart from tariff barrier will be included in the non-tariff barrier. You can take a screenshot. This is the difference. This is the difference between the two, tariff and non-tariff barrier. I have added subsequent questions also with their correct answer. This we do in our paid batch. Right. Then we have gone with the dumping. So dumping is also very important as a concept. They give you this, that dumping means if you sell your goods at some foreign nation at a below market price. At a below market price or at a lesser price than the cost of production, just to capture the entire market. Just to capture the entire market. That this is basically an unethical process, unethical practice, which is known as dumping. Now there can be different types of dumping. There could be predatory dumping, there can be sporadic dumping, and persistent dumping. From each of these, questions have been formed in your UGC NET. Direct questions have been formed from each types of dumping. So please prepare this. I have given you questions also here. These questions are there. Impact of dumping. What could be the different anti-dumping policies? This we do in our classes. And this effective rate of protection. In the context of this, we have effective rate of protection, which is very, very, very important. Many questions have come from this, starting from 2012, right? So ERP is a concept. Effective rate of protection measures the actual level of protection provided to the domestic industries by a tariff structure, considering not just the tariff on the final good, but also tariffs on imported inputs used in the production, which is very important from the point of view of the producers. This is the formula. They give you questions. They give you numerical questions from this. This is the formula for effective rate of protection. Here you can see I have given you explanation. G is the effective rate of protection. T is the nominal tariff rate on final good. AI here is the ratio of cost of imported inputs to the price of the final good under free trade. And this T1 represents the nominal tariff on imported input. So this is the effective rate of protection. Questions I have given you, see March 2023 paper 2. So recent year question I have added the solution also. If you want, you can take a screenshot or pause the video and just go through this if you want. This is the effective rate of protection. Very important question might again come from this. Optimum tariff. Optimum tariff is that the rate of tariff which maximizes the nation's welfare. Right? Optimum tariff is determined at a point where the trade indifference curve of the tariff imposing country is tangent to the offer curve of this other country. So this is also question from UGC NET. How do you find out the optimum tariff? This is the formula. 1 upon E minus 1, where this E represents the elasticity of foreign countries' offer curves, which measures how responsive is their exports or imports to the price change. So this is the formula. They can give you the various values for E and they will ask you to find out the optimum tariff. And here I have given you different interpretations. What will happen if E is greater than 1? What will happen if E is exactly equals to 1? Or what will happen when E is less than equals to 1? You can take a screenshot. You can take a screenshot and you can study this. Questions, mention. And then this class is again there on your YouTube, where I have in details, there is a 1 hour 10 minutes long lecture video that you will have, that is already uploaded in YouTube again. Please refer to that video where I have discussed the International Trade Agreements and Organization, GATT. I have discussed, this is very important. The different boxes, the different subsidies, green box, blue box, amber box, yellow box, black box, what they are related to. This is available
And the note is also available in the Telegram group, which the official Telegram channel of EduShop, where you will find this note as well. Principles of WTO, World Trade Organization, different negotiation rounds of WTO, starting from the Geneva round all the way up to the recent years, 2024, Abu Dhabi. This was conducted in Abu Dhabi. So all the rounds are mentioned, and this is the entire thing, right? International Monetary Fund, again, everything you have to remember. This is basically a memorization based unit. The World Bank features focus areas, criticisms, past year questions I have covered, regional trade blocks, different degrees of economic integration. Starting from free trade, then you have custom union, common market economic union, monetary union, different unions for different countries in the world, different continents in the world. You have this. Then I have given you a short note on European Union. What are the major institutions, challenges, achievements, policies? Everything is based on the past year questions. And finally, I've gone to SAARC, which is South Asian Association for Regional Cooperation. And 8 member countries are there. They have asked you this question in recent years. Key features, challenges. See, June 2023, the headquarters has been asked. I have mentioned the headquarters, and final thing is the conference of parties. This is the climate, regarding the climate change. International conferences are known as the conference of the parties. Different conferences have been conducted starting 1997, 2015, 2021, 2022. Different conferences I have written: Kyoto Protocol, Paris Agreement, Glasgow. Everything is mentioned here, right? All the informations are there. And finally, this is the past year question, 2023 paper, right? So yeah, so this is all about the syllabus that you need for your unit number 3 and unit number 5. This is the theory portion of the marathon session that we have covered in details. In the next video, in the next marathon session, we will go into solving some of the most crucial questions that will help you to understand things better, right? As of now, if you have any questions anywhere from these 2 units, you can let me know in the comment section. And don't forget to like this channel and subscribe to the channel of EduShort for UGC NET preparation. And if you haven't joined the Telegram group, please do that, because there you will find all the notes that I have prepared for you, right? So thank you so much, and let's meet you in the next video. कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही है आपकी यूजीसी नेट की तैयारी? आपको पता है एग्जाम का डेट आपका आ गया है 29 जून, सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम, ठीक है? तो ये एक मैराथन सेशन है, आपको भी पता है, और उसी मैराथन को हम कंटिन्यू करेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम 3 जो मेजर टॉपिक है आपके, जैसे इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आपका मनी एंड बैंकिंग, ठीक है? तो मैं मैराथन सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं। जैसे आपको पता है कि ये कोर्स आपका 50 डेज का हम फ्री में आप सभी को दे रहे थे। तो अब क्या है कि जैसे टाइम अगर लास्ट होने पे होता है तो आपका रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो अगर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको मैराथन्स बहुत हेल्प करता है। मतलब इवन जब हम प्रिपेयर करते थे तो उस समय भी ये मैराथन सेशन बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आप एक साथ नहीं जा सकते हो, मतलब रिवाइज करके, ठीक है? तो आपको एक शॉर्ट नोट रिविजन की जरूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि बाकी जो पोर्शन है उसमें तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इंडियन इकोनॉमी आपको बहुत ही अपडेटेड होकर चलना पड़ता है। आपको पता है रिसेंटली आई थिंक 6 जून को आपका आरबीआई का एमपीसी मीटिंग हुआ है, 55th मीटिंग। उसमें सारे पॉलिसी रेट्स हैं उनको आप देख रहे हो कि सारे डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है? तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और सारे सब्जेक्ट में तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कंटेंट है वो स्टैटिक होता है, बट इंडियन इकोनॉमी बहुत ही डायनेमिक होता है। इवन एग्जाम के 10 दिन पहले भी जो अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो चीज़ यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, और पूछते हैं, कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है? तो इस नोट के साथ वी विल स्टार्ट कि 3 जो टॉपिक है हम देखेंगे कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको ये मैराथन के थ्रू एटलीस्ट इतने को तो करके जाना। और ये मैराथन का जो आप कह सकते हो जो टॉपिक रिवीजन आपका दिया जा रहा है, मतलब जैसे मैंने अगर प्रिपेयर किया है तो वो सबसे ज़्यादा है क्या कि आपको पता है यूजीसी नेट बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ये मतलब इनका क्वेश्चन रिपीट करने का बहुत ही अच्छा ये है कि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो आप
उन सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट जरूर देख करके जाओगे, और वो सारे टॉपिक्स इस पर्टिकुलर मैराथन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर जो आपका हेडिंग्स में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले हम देखेंगे, फिर मनी एंड बैंकिंग, और फिर लास्ट में इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट जो है वो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको एटलीस्ट, ये इन्वेंट किया गया था एमडी मॉरिस के द्वारा, और ये 1979 में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है और इसके इन्वेंटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पीक्यूएलआई जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, ये 23 डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब कह सकते हो कि उनको यूज करके इन्होंने पीक्यूएलआई जो ये इंडेक्स इन्वेंट किया वो बनाया था। इसमें तीन जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और आपका बेसिक लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर कौन से हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगेन जैसे पीक्यूएलआई जो है आपका एमडी मॉरिस के द्वारा था, ये महबूब उल हक एंड देन आपके दो दूसरे नोबेल लॉरेट थे। ठीक है, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। हालांकि ये एचडीआर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, ये एचडीआर रिपोर्ट 1990 में जो रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग लिया गया था, बट इसमें चेंजेस आए हैं। मतलब 1990 से 2010 तक जो मेजर करने का तरीका था वो अलग था, और बियॉन्ड 2010 ये डिफरेंटली मेजर होता है। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। तो एचडीआई का जब इस पीरियड में यूज होता था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर आपका एजुकेशनल अटेनमेंट में दो चीज था, एडल्ट लिटरेसी और कंबाइंड जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी इनरोलमेंट का रेशियो था। ठीक है, और इसके वेट्स थे 2/3 और 1/3। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखोगे तो 1/3, 1/3 और 1/3। थर्ड आपका था रियल जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, और इसको जैसे ये तीन अगर मिल जाता था तो इसको कैलकुलेट करने का था कि एरिथमेटिक मीन लेते थे। इसको इस तीनों को हम एरिथमेटिक मीन कैसे होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस एजुकेशनल अटेनमेंट प्लस रियल जीडीपी पर कैपिटा होल अपॉन 3। तो ये था एरिथमेटिक मीन होता था पहले, बट 2010 के बाद ये चेंज हो गया। चेंज हो करके इन्होंने क्या किया कि पहला तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे एडल्ट लिटरेसी की जगह एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और सेकंड में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ये दो डिफरेंट दिया गया, और यहाँ पे रियल जीडीपी पर कैपिटा की जगह कर दिया गया जीएनआई पर कैपिटा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स में चेंज हुए। और दूसरा, कैलकुलेट करने के लिए अब अरिथमेटिक मीन नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक मीन लिया जा रहा था। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एल से डिनोट करो इनटू मतलब अगर इसको एजुकेशनल अटेनमेंट को ई से, और आपका जीएनआई पर कैपिटा, तो ये ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कह सकते हो कैलकुलेट होने लगा। ठीक है, तो ये मेजर इंपॉर्टेंट है, और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस कि वो बोलते हैं सर कि रियल जीडीपी पर कैपिटा था बट जीएनआई पर कैपिटा क्यों था ऑप्शन में, क्योंकि अब 2010 के बाद ये मेजरमेंट का तरीका यूज होता है। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर आपका जो मतलब कह सकते हो यूजीसी नेट इसी बुक्स और ऑथर्स का नाम अभी तक मतलब इससे ज्यादा नहीं पूछा इन्होंने, इसी में रेपिटेशन लाते रहते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं उनका नाम और उनके ऑथर, और उसके साथ ईयर ऑफ लॉन्च भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट में क्रोनोलॉजी दे यूज टू आस्क अ लॉट। ठीक है, तो रुचिर शर्मा का द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस 2016। जगदीश भगवती, आपको पता है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत ही पॉपुलर ट्रेड थियरिस्ट हैं। ठीक है, भगवती के ही द्वारा वो जो इमिसराइजिंग ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपको पता है इमिसराइजिंग ग्रोथ। ठीक है, तो बहुत ही कह सकते हो कि पॉपुलर इंटरनेशनल ट्रेड थियरिस्ट थे। फिर आपका संपेटर के द्वारा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942। संपेटर का क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थियरी जो आपका डेवलपमेंट थियरी है वहां पे पढ़ने के लिए, आपका ये तो पता ही होगा सबको, केन्स का जनरल थियरी 1936। फिर आपका, और ये थोड़ा सा ऐसे कि केन्स के बारे में इतना पढ़े हो तो उसका जनरल थ्योरी लिखा हुआ था। ठीक है, संपेटर
मतलब कैपिटलिस्ट के बारे में बोले तो थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो कि कैपिटलिज्म के बारे में वही लिखे होंगे, ठीक है। और उनका क्या कहना था कि अल्टीमेटली दिस कैपिटलिज्म विल कन्वर्ट इनटू सोशलिज्म। तो थोड़ा सा इस तरह से याद रखना कि जोसेफ सम्पेटर का किताब या बुक जो होगा वो या तो कैपिटलिज्म या सोशलिज्म इसी सब रिलेटेड वर्डिंग से होगा, ठीक है। और जगदीश भगवती भगवती इंटरनेशनल ट्रेड थियरिस्ट थे। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप कह सकते हो कि जगदीश भगवती के बुक अगर नहीं भी याद है तो आप थोड़ा इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। एशियन ड्रामा गुरनार्ड मिल्डाल, ठीक है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन। क्यों इसको इसको याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है। आपको पता है सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच पढ़ने के लिए है। इसमें इन्होंने यही बताया है कि यूटिलिटी इज नॉट इनफ टू कैलकुलेट द वेलफेयर, ठीक है। वहां पे उन्होंने बोला है कि एक ह्यूमन का अलग अलग कैपेबिलिटी है। मतलब एक अगर पर्सन प्रिजन में है, मतलब जेल में है, तो उसका मतलब कह सकते हैं एस्पिरेशन अलग होता है और उसका कैपेबिलिटी अलग होता है, रादर की एक जो फ्रीली मूव कर रहा है बाहर, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग कैपेबिलिटी है। तो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया था, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि ये बुक अमर्त्य सेन का है। अगेन एन अनसर्टेन ग्लोरी अमर्त्य सेन और जेन रेज 2012, ठीक है। फिर है आपका वाई ग्रोथ मैटर्स, ये जगदीश भगवती और अरविंद पनागेरिया। ये आपको पता है अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसमें उसके चेयरमैन का मतलब बनाए गए हैं अरविंद पनागेरिया, ठीक है। और फिर है आपका कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। कई बार पूछा हुआ है ये, मतलब आई थिंक 6 या 7 बार पूछा हुआ है उन्होंने, थॉमस पिकेटी के द्वारा। फिर वाई नेशंस फेल, और ये आपको पता है कि इस साल का जो 2024 का जो नोबेल प्राइज है वो इसी दो को मिला हुआ है, एसिमोग्लो और रॉबिन्सन को। इंस्टीट्यूशंस के रिगार्ड इन्होंने लिखा था और उनको नोबेल प्राइज जो मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रीसेंट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किनको मिला है, ठीक है। तो एसिमोग्लो और रॉबिन्सन। किताब का नाम है उनका वाई नेशंस फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। अब देखिए डेवलपमेंट थियरी, आप जैसे देखो मतलब इन सब का अगर एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो वो सारा आपको वीडियोस पड़ा हुआ है। बट आपको ये याद रखना है कि जो डेवलपमेंट थियरी का नाम, उनके मेन प्रोपोनेंट क्या थे और वो किस ईयर के अराउंड उनका मतलब कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर थियरी का ओरिजिन क्या था, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल में आप याद रखना एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेस मिल और थॉमस माल्थस है, ठीक है। और इनका ये ईयर आपको आप इसको एक तरह से आप क्या कह सकते हो, इसको आप 2-3 बार कॉपी पे लिख करके याद कर लो, बट इसको याद रखना है बिल्कुल ही, ठीक है। क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा पूछते हैं। मार्क्सियन थ्योरी, ये तो नाम से ही पता है, कार्ल मार्क्स होंगे। संपेटेरियन, ये चीज तो ज्यादा मतलब कह सकते हो कि टफ नहीं है याद करना कि नाम और उनके प्रोपोनेंट क्या थे। बट ये क्रोनोलॉजी, इसीलिए मैंने क्रोनोलॉजी में लाया है, ठीक है। पहले क्लासिकल आए, फिर मार्क्स ने अपना, फिर संपेटर, फिर केन्स के बाद रॉस्ट्रोज का आपको पता है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थियरी, नर्क्स का डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, नर्क्स का बैलेंस थियरी भी है आपको, और नर्क्स थियरी ऑफ बैलेंस्ड डाइट, ये सब इनके थियरीज हैं। लुइस का आपका अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर थियरी है। फिर आपका फेयर एनिस, जो लुइस के मॉडल को इम्प्रूव किया था इन्होंने इन्होंने एक तरह से कह सकते हो कि इनका जो थियरी था उनको, मतलब लुइस के मॉडल को कहा कि आपने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से डिस्कार्ड किया है, हम एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस देंगे इन ऑर्डर टू अचीव डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, ठीक है। फिर आपका हैरिस्टोडाडो, आपका माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे, और इन्हीं ने माइग्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट में एक मेजर चीज होता है इनफॉर्मल सेक्टर का। तो इनफॉर्मल सेक्टर का भी रोल बताया था इन्होंने, क्यों जो एक्सेस लेबर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कह सकते हो माइग्रेट कर जाते हैं आपके मतलब अर्बन सेक्टर के लिए, ठीक है। लेवेंस्टाइन का क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट थ्योरी, आपको पता है कि किसी भी नेशन को उसके पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे ग्रो करने के लिए मिनिमम एफर्ट लगाना होता है। इन मिनिमम एफर्ट मीन्स कि अ, या तो एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्ट कर दो, मतलब एटलीस्ट सेविंग्स को बढ़ाने का कुछ काम करो, ठीक है। फिर है आपका नेल्सन का लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, जिसमें कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक क्रिटिकल मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। वहां से उस ट्रैप से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। बिग फोर्स थ्योरी, रोसेंस्टेन रॉडन का। बिग फोर्स मीन्स की इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्री, मतलब जो बड़े इंडस्ट्री हैं, लेगार्ड इंडस्ट्री हैं, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो कह सकते हो कि डेवलपमेंट जल्दी से किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी को बहुत जल्दी उसके एक्सट्रीम पॉवर्टी या चैलेंजिंग वर्ल्ड से बाहर निकाल सकती है, ठीक है। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ग्रोथ, अभी हमने देखा नर्क्स का ही थियरी है।
फिर आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यहाँ पे आपका लिंकेजेस का कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हिट्समैन के द्वारा दिया हुआ है। फिर है आपका डिपेंडेंसी थियरी। डिपेंडेंसी थियरी में आपको रीजनल इम्बैलेंस को दिखाया गया है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब जैसे आपको पता है कि बहुत बार क्या होता है कि डेवलप्ड नेशन जो है वो मतलब वहां पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका एक निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है डेवलपिंग इकोनॉमी पे। लेट्स से कि अगर कोई यूएस है तो यूएस अगर बहुत सारा अगर इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो उससे जो पॉल्यूशन अगर कह सकते हो कि इमिट होगा तो वो इमिशन जो है पूरा डेवलपिंग इकोनॉमी को भी हार्म पहुंचाएगा, ठीक है। और दूसरा कि जब यूएस में अगर लेट से इंडस्ट्रियलाइजेशन या ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका जो साइंटिफिक इनोवेशन का इफेक्ट है वो बाकी डेवलपिंग इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, एक निगेटिव इफेक्ट भी होता है, ये दोनों। और नेगेटिव को बोलते हैं बैकवॉश इफेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बैकवॉश इफेक्ट। और इसको बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट, ठीक है, कि पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ रहा है डेवलपिंग इकोनॉमी पे। ये डिपेंडेंसी थ्योरी में बहुत सारे लोग थे, प्रेबिस थे, फ्रैंक थे, एक एमिन भी थे, फ्रैंक एंड एमिन, ठीक है। फिर आपका मिडाल थियरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन, यहाँ पे दोनों विशियस सर्किल और वर्चुअस सर्किल का बात किया था इन्होंने, ठीक है, कि कैसे एक इकोनॉमी जो है अगर लो सेविंग्स है, लो इन्वेस्टमेंट है तो लो डिमांड में, मतलब एक तरह से कहते हो कि वीसीएस सर्कल में ट्रैप हो गया। और वर्चुअस सर्कल में कि अगर पॉजिटिवली ग्रोथ शो हो रहा है तो फ्यूचर में भी इट विल शो पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। फिर अभी हमने सेन और भगवती का कंट्रोवर्सी के लिए देखा था। तो सेन भगवती का कंट्रोवर्सी आपको पता है कि हमारे सेन थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस थे, मतलब जो पुअर कंट्री हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे इरेडिकेट किया जाए पॉवर्टी वहां से। बट भगवती का कहना था कि नहीं, हम एक तरह से जो जीडीपी पे फोकस्ड होंगे, मतलब हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, अगर जीडीपी सही हो गया तो पुअर पीपल भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और इन्होंने केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, केरला में जो कह सकते हो डेवलपमेंट का तरीका को यूज किया गया उसको फेवर किया था, और इन्होंने गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को फेवर किया था, ठीक है। अब देखो ग्रोथ थियरीज, ग्रोथ थियरीज में भी आपको पता है कि हैरड डॉमर है। मतलब ये मतलब आप देखो, मतलब डेवलपमेंट में मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, बट इस पे अगर मैं करने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में देखो, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हैरड का बुक कौन सा लिखा हुआ था, एनएसए इन डायनेमिक थियरी। फिर आपका कैम्ब्रिज ग्रोथ या डिस्ट्रीब्यूशन थियरी भी बोलते हैं, ये रॉबिन्सन, कार्ल्डर, पैसिनिटी और कैलिकी, ठीक है। इसमें नॉट ओनली ग्रोथ थियरी बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन का भी बात किया गया था, ठीक है। फिर है आपका सोलो स्वान मॉडल। सोलो स्वान मॉडल आपको पता है एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं इसको। ये हैरड के ऊपर इम्प्रूवमेंट था। हैरड ने बहुत सारी चीजें अनरियलिस्टिक एजम्पशंस को कह सकते हो कि यूज किया था, उसको इन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की। फिर है आपका एंडोजिनस ग्रोथ थियरी। एंडोजिनस ग्रोथ थियरी आपको पता है एक्सोजिनस पे इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे एंडोजिनस के बहुत सारे हैं। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था किनेथेरो ने। फिर है आपका रैमसी कैस कोपमेंस मॉडल। ये आपको कह सकते हो कि सेविंग्स का है, मतलब सेविंग्स और कंजम्पशन का एक मैथमेटिकल थ्योरेटिकल फाउंडेशन दिया था, ठीक है। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम जान लो क्योंकि आपको तो पता है यूजीसी नेट में सोलो स्वान, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल और हैरोडोमर मॉडल, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडोजिनस को हम एक ही मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है वो इंडोजिनस होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मतलब कह सकते हो कि इन्होंने दिया था ग्रोथ थियरी बट बहुत पॉपुलर नहीं है, कंप्यूटर का डेवलपमेंट थियरी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अगेन इंस्टीट्यूशन एंड ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट ग्रोथ थियरी नहीं है, बट अभी आपको पता है कि इनको नोबेल प्राइज मिला है 2024 में। तो इनका ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चांसेस हाई हैं कि वो यूजीसी नेट इस चीज को पूछे कि ये बुक किसके द्वारा लिखा हुआ है। और इवन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024 में नोबेल प्राइज किन इकोनॉमिस्ट को मिला और किस पार्टिकुलर सेगमेंट के लिए मिला है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप कह सकते हो कि इतना कुछ आप जरूर रिवाइज करके जाओ ताकि एटलीस्ट आप अच्छे पोजीशन में हो, ठीक है। अगर आप मिस हो गया है आपसे, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, ठीक है।
फिर है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो आप देखो कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि अप्रैल 1977, ठीक है, आरबीआई ने मतलब चार जो कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का वो यूज किया था, बट अभी वो रिवाइज्ड हो गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अभी पूछ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल फिगर है बट इंपॉर्टेंट है। तो M0, M1, M2 और M3 और M4, ठीक है, इनका डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये चीज देखा गया कि ये M0, M1 और M3 ये बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है इंडिया में, बट M2, M4 जो है बहुत ही रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो आरबीआई ने कह सकते हो कि 1998 में एक रिपोर्ट सबमिट किया, वहां पे M0 और M1 में कोई चेंजेस नहीं लाए गए, बट कुछ नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स L1, L2 और L3 इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखो तो M2, M3, M4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट M0 और M1 अभी भी रेलिवेंट है, इसलिए M0, M1 का डेफिनेशन आप याद रखना, ठीक है। NM1 फिर है आपका L1, L2 और L3 जो नए लिक्विडिटी एग्रीगेट्स हैं, इनको डिफाइन करने के लिए कुछ नए, जैसे M1, M2 था ना, वैसा ही NM1। और इसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, करेंसी विद पब्लिक, ये मोर और लेस सेम है पहले से, बट माइनर चेंजेस लाया इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो NM1, NM2 और NM3 कह सकते हो कि पहले का ही कह सकते हो, मतलब यूज किया हुआ है, बस कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ये शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट, ये नया कह सकते हो, कॉल या टर्म फंडिंग, ये नया वेरिएबल्स इन्होंने यूज किया है। और L1, L2, L3 ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि L1, L2, L3 किस तरह से डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। फिर आपका मनी सप्लाई का थियरी आपको मतलब पता है कि दो चीज होता है यहाँ पे, एक होता है स्टॉक ऑफ मनी, जो स्टॉक ऑफ मनी कह सकते हो कि टोटल मनी इन द इकोनॉमी, और एक होता है हाई पावर मनी, ठीक है, हाई पावर मनी, हाई पावर्ड मनी। यहाँ पे करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। और यहाँ करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट। और ये बड़ा क्यों है? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जो होता है, जैसे आप एज अ कह सकते हो आपने किसी एसबीआई में आपका अकाउंट है, तो आपने कुछ अगर डिपॉजिट कर रखा है तो वो आपका डिमांड डिपॉजिट है, मीन्स अगर आप डिमांड करोगे तो आपको वो डिपॉजिट मिल जाएगा। तो उस डिमांड डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए सारा का सारा डिमांड डिपॉजिट नहीं रख सकता है, मतलब कमर्शियल बैंक। तो इसलिए ये वाला पोर्शन थोड़ा छोटा है। और ये जो मॉनेटरी बेस कह सकते हो, स्टॉक ऑफ मनी, एक्चुअल स्टॉक ऑफ मनी, जो मनी सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, वो ये वाला पोर्शन दिखाता है आपका, ठीक है। अब आपका मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जो आपका टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, होल अपॉन हाई पावर मनी, ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर में इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिजर्व रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और के जो है आपका वो है डिपॉजिट रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इस दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मनी मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम जो कैश रिजर्व रेशियो है, या रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी उसी को बोलते हैं, तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो और करेंसी डिपॉजिट रेशियो में अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और आपको पता है कि मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड पे पड़ता है, क्योंकि मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो इट मीन्स कि मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट आउटवर्ड, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का थोड़ा सा आप यहाँ से थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरह जाओ। हालांकि ये 2016 में क्रिएट हुआ, बट इसके क्रिएशन के पीछे हाथ था उर्जित पटेल कमेटी का, जो उस समय के गवर्नर थे, उर्जित पटेल कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2013 में, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2013 था या 2014 था। इवन कई लोग कंफ्यूज होकर के 2016 भी कर देते हैं, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का रिकमेंडेशन था वो इस कमिटी ने दिया था, बट ये क्रिएट हुआ 2016 में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको कि उर्जित पटेल कमेटी अगर पूछा जाए तो आप बहुत लोग 2016 टिक आउट करके आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा था कि एमपीसी कब क्रिएट हुआ तो बोलेंगे 2016 में,
और ये क्रिएट हुआ था आरबीआई के एक्ट को, जो आरबीआई एक्ट है आपका, आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसको अमेंड करके फाइनेंस एक्ट लाया गया था, फाइनेंस एक्ट 2016, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ इस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। और एमपीसी में आपको पता है कि 6 मेंबर होते हैं, जहाँ पे कि गवर्नर जो है वो चेयरमैन होते हैं। फिर उसके जो 6 मेंबर है उसमें से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर है आपका इसमें एक टॉलरेंस लेवल जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ± 2 मीन्स इन्फ्लेशन शुड बी विद इन दिस टॉलरेंस लिमिट। मतलब अगर आप मैक्सिमम की बात करो तो 6% और मिनिमम 2%, इसी के बीच में इन्फ्लेशन का रेट रेंज होना चाहिए, ठीक है। तभी इकोनॉमिक ग्रोथ आप कह सकते हो कि अच्छे से मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन टारगेट है। और आपको पता है एमपीसी का मीटिंग होते रहता है, बाई एनुअल मीटिंग, मतलब इवन 3 से 4 बार एटलीस्ट बैठते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब हर क्वार्टर में तो एटलीस्ट ये लोग एमपीसी का मीटिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। और अभी ही आप देखो कि इन्फ्लेशन जब विद इन द टारगेट, मतलब दे इन्फ्लेशन एक सॉफ्टन लेवल पे था, मतलब अभी इकोनॉमी मतलब इन्फ्लेशन कह सकते हो कि विद इन द लिमिट। तो इस समय इन्होंने रेपो रेट कट किया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे डिफरेंट रेट्स आरबीआई के क्या हो गए हैं नए वाले, और नए वाले ही आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम में दे विल डेफिनेटली आस्क, ठीक है। अब है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान आप याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि थोड़ा सा इसको स्टोरी की तरह याद रखो। स्टोरी इन द सेंस कि अभी मैं जैसे जैसे बोलूंगा तो थोड़ा सा आप समझ पाओगे, ठीक है। दो तरीके से 5 ईयर प्लान को, मतलब दो चीज को साथ में लेकर चलना होता है। थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज को लेकर के चलना होता है, और थोड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उसको भी लेकर के चलना होता है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज और जो उस 5 ईयर प्लान का मेन प्रोविजन या ऑब्जेक्टिव है वो दोनों बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड होता है। वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लान आपका पता है कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 से 56 हुआ था। और क्यों यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस था, इसका रीजन था कि आपको पता है इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ड्रेडफुल सिचुएशन में था, ब्रिटिश के कह सकते हो कि अंडर कंट्रोल। बहुत ही ज्यादा हमारा इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया था। तो उसको सही करने के लिए सबसे पहला गोल था कि हम सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है, या सेल्फ सफिशिएंट बने, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंसी, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमाइन, बंगाल फेमाइन बहुत ही कह सकते हो कि पॉपुलर रहा था उस समय में, और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है लोगों पे। अगर, क्योंकि आप सीधा सा समझो कि एटलीस्ट फूड इज द बेसिक मिनिमम, और फूड ही नहीं मिल रहा है तो इकोनॉमी दूसरी चीजों के लिए कैसे एस्पायर करेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाज द बेयर मिनिमम। तो स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर, इरिगेशन को सही करोगे तो एग्रीकल्चर सही होगा। फिर प्राइस स्टेबिलिटी भी एग्रीकल्चर के ही सही होने से होगा, क्योंकि आपको पता है प्राइस या इन्फ्लेशन रेट में फूड का इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो गवर्नमेंट सीपीआई कैलकुलेट करती है उसमें आप देखे होंगे कि फूड का इन्फ्लेशन प्लेज अ वाइटल रोल, फूड और फ्यूल, बट फूड इज द मोर कह सकते हो कि वेटेड। हैराडोमर मॉडल पे बेस्ड था, क्योंकि नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट इंडिया को आप कह सकते हो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी सही करना था उसमें। सेकंड प्लान आपका पता है कि इसके जस्ट बाद आया था। सेकंड प्लान आपका सेकंड प्लान आपका 1956 टू 61, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट, देखो इसमें ऐसे करो कि एक चीज को दो, मतलब कह सकते हो की पॉइंट्स। हैराडोमर के मॉडल पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर पे फोकस था, और कुछ कुछ और है, ये माइन्यूट है, ये उतना नहीं पूछता है। आईआईटी, जो 5 आईआईटी थे उसके, उसका भी फाउंडेशन दिया गया था, जिसमें कि फर्स्ट आपका पता है कि फर्स्ट आईआईटी बिल्ट हुआ था आईआईटी खड़गपुर। और बाकी जो है आपका मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, सॉरी मद्रास में ही, उसमें मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली और एक कानपुर आई थिंक, ये। और आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर सबसे पहले बिल्ट हो गया था। बट उसके सब्सिक्वेंट, मतलब आगे आई थिंक सेकंड प्लान में दे यूज टू, सेकंड टू थर्ड तक आते आते उन्होंने कंप्लीट किया था पांचवा आईआईटी का। बट फाउंडेशन स्टोन फर्स्ट प्लान में ही दिया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है 5 आईआईटीज वेयर यू कैन से सैंक्शन फॉर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है।
फिर एक भाखरा नंगल डैम का भी बहुत सुनते होगे। भाखरा नंगल डैम ये कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखरा नंगल डैम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बिल्ट होना स्टार्ट हुआ था, बट कंप्लीशन हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी बनाते हैं वो लोग कि भाखरा नंगल डैम वॉज बिल्ट इन, तो कई लोग फर्स्ट ईयर प्लान मार के आ जाते हैं। ठीक है, बट सेकेंड 5 ईयर प्लान होगा वहां पे। ठीक है, फिर सेकंड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये महालानोबिस मॉडल पे बेस्ड था, और हैवी इंडस्ट्री जो हमारे नवरत्न जिनको बोलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके उनको एक तरह से कह सकते हो कि प्रॉफिटेबल बनाने का कोशिश था। क्या फिर है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात होने लगी, क्योंकि अब जो है आपको कह सकते हो कि हैवी इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर दिए हम, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर दिए, तो अब सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशियंसी का गोल को अचीव करना था। हालांकि ये प्लान जो है बहुत ही कह सकते हो कि मिजरेबली फेल हुआ था। तो वही चीज देखो, पॉलिटिकल यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, साइनो इंडियन वॉर भी बोलते हैं इसको। फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो आप खुद से भी सोच सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन सा प्लान जो है मिजरेबली फेल हुआ था। ठीक है, तो याद आप ऐसे करो कि जिस समय वॉर हुआ होगा, मतलब एक बेसिक सा सेंस है ना, वॉर या इस तरह का सिचुएशन अगर कंट्री में क्रिएट होता है तो इट मीन्स कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उस प्लान का, या जो प्लानिंग कमीशन जो भी ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने की सोचे थे वो अचीव नहीं हो पाया होगा। तो इसलिए ये जो है कि कौन सा 5 ईयर प्लान मिजरेबली फेल हुआ था, वो 1961 से 66 जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हुआ था। ठीक है, फिर इसी वॉर के कारण प्लान हॉलीडे लिया गया 1966 से 1969। यहाँ पे कुछ एनुअल प्लान्स को लाया गया क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था आपका, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट को सही करने के लिए। फिर आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974। यहाँ पे ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन को कंसोलिडेट करने की बात हुई, क्योंकि 66 में आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हो गया था, बट इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्थ 5 ईयर प्लान में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछता है, गरीबी हटाओ और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज द मेन मोटिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, हालांकि ये 5 ईयर प्लान कंटिन्यू नहीं हो पाया, मतलब पूरा टर्म अपना कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि 1978 में आपको पता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल आया। जनता गवर्नमेंट ने कह सकते हो कि कांग्रेस गवर्नमेंट को हटा के जनता पार्टी का गवर्नमेंट बना। तो आप ये चीज भी कह सकते, मतलब क्वेश्चन अगर पूछ दे ऐसे कि कौन से 5 ईयर प्लान या किस ईयर में जो हमारा मतलब कह सकते हो कि 5 ईयर प्लान कंप्लीट नहीं हो पाया था, मतलब 5 ईयर टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो फिफ्थ फिफ्थ 5 ईयर प्लान है। और क्यों नहीं हो पाया था, तो ये पॉलिटिकल न्यूज को भी साथ में ऐड करना है कि उस समय इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट फेल हो गया था और जनता पार्टी का गवर्नमेंट नई सरकार बना ली थी। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब इवन पॉलिटिकल न्यूज हल्का फल्का, जैसे ये वॉर का सिचुएशन, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस जो हुआ कंट्री के बीच में, उसके कारण कौन से प्लान के समय में हुआ था, तो इससे आपको ये रिलेट करने में आसान हो जाएगा कि मतलब पूछते हैं क्वेश्चन इस तरह से कि कौन सा 5 ईयर प्लान में ये चीज हुआ था। ठीक है, तो ये चीज दोनों चीज आपको याद रखना। फिर अगेन 1980 में आपको पता है कि फिर से जनता पार्टी में मतलब कह सकते हो कि फुल मेजोरिटी दिखा नहीं पाए, तो वो फिर से ओवरटेक कर लिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये रोलिंग प्लान कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो कि स्टेबल गवर्नमेंट थी नहीं, तो रोलिंग का मतलब ही है कि अनस्टेबल, तो अनस्टेबल प्लान भी रहा। ठीक है, फिर सिक्स 5 ईयर प्लान में आपको पता है कि 1973 और 1979, 1979 में ईरान का रिवॉल्यूशन हुआ था, इरानियन रिवॉल्यूशन, और 1973 में गल्फ ऑयल क्राइसिस। इससे क्या हुआ कि जो गल्फ कंट्रीज थी वो ऑयल का सप्लाई को पूरी तरह से डिस्टर्ब, क्योंकि ऑयल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट गल्फ कंट्री से हो रहा था उस समय। तो जब सप्लाई ही नहीं करेंगे तो दिस सप्लाई कॉन्स्टेंट के कारण, और आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो जाता है जब सप्लाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपको पता है इन्फ्लेशन दो चीजों से बढ़ता है, या तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़े, ये प्राइस और ये आउटपुट, जब इन एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तब आपका इन्फ्लेशन आएगा, और या तो आपका ये जो सप्लाई है वो कांस्टेंट, मतलब सप्लाई डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सप्लाई साइड शॉक था, इसके कारण बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, और ये इकोनॉमिक डिसगाइज कह सकते हो उस समय हुआ इस ऑयल क्राइसिस के भी कारण।
इस ऑयल क्राइसिस के कारण इंडिया को बहुत सारा लोन लेना पड़ा, और अगेन फिर लोन के कारण नेशनल डेट बढ़ते गया। फिर ऑयल क्राइसिस के कारण आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा बोरोइंग करने लगी। बोरोइंग नॉट ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर बट ऑल्सो फ्रॉम द इंटरनल सेक्टर, जो इंटरनली इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे बोरो करके। तो फिजिकल डेफिसिट या नेशनल डेट सब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने लगा। इवन करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगा। तो कह सकते हो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का एडवेंट हुआ था 16th प्लान में। इस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म बना नहीं था, बट 80 to 85 में कह सकते हो इसको मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ स्टेप लेना शुरू कर दी थी गवर्नमेंट। और इसी समय कुछ बहुत ज्यादा कह सकते हो पॉलिटिकल टर्माइल भी हुआ था। आपको पता है 1984 में वी हैव दिस, और एक चीज और, एक इमरजेंसी 1975 में भी। 1970 का जो 75 में जो नेशनल इमरजेंसी था वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा था। तो यहाँ पे एक फिफ्थ प्लान में एक और चीज है कि फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इस 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। और आपको पता है इमरजेंसी में स्टेरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ था कि नसबंदी करने का बात था उस पर्टिकुलर इमरजेंसी में। तो फैमिली प्लानिंग की तरफ फोकस था उनका। ये था मोटो कि मतलब हम पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से अचीव किया जा सकता है। बट आपको पता है नेशनल इमरजेंसी मेजरेबली फेल हुआ, और इसी कारण यहाँ पे जो है जनता गवर्नमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट को ओवरटेक कर पाई थी, ठीक है। तो ये कहानी भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरी बनाए रखो कि मतलब हाँ कैसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे मतलब कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर इंसिडेंट, जैसे ये जो वॉर हुआ था 62 65 एंड देन 71 में भी। फिर आपका 75 में जो इमरजेंसी लाया गया था। 84 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने वो खालिस्तानी मूवमेंट के थ्रू मतलब उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जब गोल्डन टेम्पल में इंडियन आर्मी ने बहुत सारे मतलब लोगों को उस समय मतलब कह सकते हो कि वो जो अटैक के कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। 2 सिख पीपल ने उनको कह सकते हो गोली मार दी थी 1974 में। 84 में ये सारा चीज हुआ था, ठीक है। फिर उसी कह सकते हो कि उसी के रिपरकशन में सिख राइट भी दिल्ली में देखने को मिला था। तो ये सारे डिस्टरबेंस के कारण सिक्स्थ प्लान में लिबरलाइजेशन करना तो चाहती थी गवर्नमेंट, बट अचीव नहीं कर पाई। इवन लिबरलाइजेशन का कोई कह सकते हो रिफॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च ही नहीं हो पाया, जबकि इकोनॉमी खुद इस दो ऑयल क्राइसिस के कारण जो इतना सारा फिजिकल डेफिसिट और नेशनल डेट बढ़ रहा था वो सब एक तरह से इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड ले जाने की कोशिश हो रही थी, मतलब कह सकते हो कि जा रहा था इकोनॉमी। और उसी समय इस तरह का डिस्टरबेंस भी था इकोनॉमी में, तो कोई भी इस तरह का नहीं कर पाया। तो 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, और फिर आपको पता है राजीव गांधी आते हैं। फिर राजीव गांधी ने एक तरह से कह सकते हो कि फाउंडेशन स्टोन डाला इकोनॉमिक रिफॉर्म का, ठीक है। जो कि और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम भी लाया, मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर 1991 में अगेन आपको पता है राजीव गांधी का भी डेथ हो जाता है। उनको मतलब केरला में जब वो कर रहे होते हैं उनका बॉम्बिंग के थ्रू उनका डेथ हो जाता है। फिर 91 में भी एक पॉलिटिकल टॉर्माइल हुआ, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप देखना कोई भी एनुअल प्लान या रोलिंग प्लान या प्लान हॉलीडे लिया गया, इट मीन्स कि मतलब वहां पे कुछ पॉलिटिकल डिस्टरबेंस या जियो पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कब लाया गया था, एनुअल प्लान कब हुआ था, प्लान हॉलीडे कब हुआ था। तो अगर आपको ठीक है ईयर याद भी नहीं है, तो आप इंसिडेंट को अगर याद, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर इंसिडेंट है। इमरजेंसी कब आया था सबको पता होता है। फिर आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर कब हुआ था, इंडिया चाइना वॉर कब हुआ था, ये सबको पता है। तो आपको 2 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा यहाँ पे। पहला कि इस तरह का प्लान जो नॉर्मल 5 ईयर प्लान है उससे अलग होकर के जो प्लान्स लॉन्च हुए तो वो कब हुए थे। और दूसरा, इन सब समय ही जब इस तरह का प्लान लॉन्च हुआ था उसी समय जो कह सकते हो कि आपका जो टारगेट ग्रोथ रेट होता था वो अचीव नहीं कर पाती थी। हर 5 ईयर प्लान में एक टारगेट बनाया जाता था, फिर देखा जाता कि एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हुआ। तो टारगेट अचीव नहीं कर पाती थी गवर्नमेंट उस समय। अब 1992 में आपको पता है राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद आपका पीवी नरसिम्हा राव आपके प्राइम मिनिस्टर बने थे, और मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इनका मेन रोल बताया जाता है कि उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको लाने में इनका मेन रोल था।
ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म आया 19, इस पर्टिकुलर डेट प्लान को उसी के लिए पॉपुलर माना जाता है। फिर नाइन्थ प्लान में भी सब्सिक्वेंट उसको कह सकते हो कि उसी को कंटिन्यू किया गया। 2002 में आपका आई थिंक कंपटीशन एक्ट लाया गया था। ठीक है, कंपटीशन एक्ट जो एमआरटीपी हमारा पहले मोनोपोली को सपोर्ट करती थी, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर मोनोपोलाइज कर सकती है, उसको हटाया गया कि नहीं, आपस में पब्लिक सेक्टर भी कॉम्पीट करेगा। ठीक है। फिर आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि इस समय एमजी नरेगा आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है एमजी नरेगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट 100 डे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। ठीक है। फिर 11th प्लान का ये चीज मोटो बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और फिर 12th प्लान का भी मोटो, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें फास्टर और इंक्लूसिव, इसमें सस्टेनेबल भी ऐड हो गया। तो 11th प्लान और 12th प्लान कई बार, मतलब आई थिंक 4 या 5 बार तो डेफिनेटली दे यूज टू आस्क की इंक्लूसिव ग्रोथ किस 5 ईयर प्लान का और सस्टेनेबल ग्रोथ किस 5 ईयर प्लान का, तो 12th 5 ईयर प्लान का। ठीक है। और आपको पता है 2015 में ये प्लान जो है 5 ईयर प्लान डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, मीन्स 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसका 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हो और 3 ईयर एक्शन प्लान, ये इंपॉर्टेंट। नीति आयोग जब आया, मतलब रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, तब क्या उनका पर्पस था, तो 3 ईयर एक्शन प्लान था 2017 to 20 और 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट लेके आए थे वो। ठीक है। नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आप देख रहे हो कि 5 ईयर प्लान आपको इसी तरह से याद रखना होगा, मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डेट याद नहीं, याद रहेगा, मतलब बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगा। आपको इसी तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा उन उस समय में कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे, मेजर इंसिडेंट जो कि बहुत पॉपुलर है। मतलब आपको मैंने बताया इमरजेंसी कब आया था, आप किसी से भी पूछो बता सकता है और आपको भी पता होगा। तो आपको थोड़ा सा इस तरह से कनेक्ट करना है उन सारे पॉलिटिकल इंसिडेंट, इकोनॉमिक इंसिडेंट, जैसे गल्फ क्राइसिस, वॉर वाला सिचुएशन कब हुआ। ठीक है। तो वो सब इंसिडेंट को आपको यूज करना होगा 5 ईयर प्लान को रिमेंबर करने में। फिर है आपका जीएनआई का ग्रोथ रेट। इसमें आपको एक्चुअल वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये प्रोविजनल या एडवांस एस्टिमेट, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको अभी एक्चुअल अगर आप पूछोगे तो एक्चुअल में, और आपको कांस्टेंट प्राइस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट प्राइस वाला बहुत कम पूछते हैं। कांस्टेंट प्राइस पे जीएनआई, एनएनआई और पर कैपिटा नेशनल इनकम। ठीक है। तो दे विल आस्क की 2022 और 23 का क्या है जीएनआई, और ये जीएनआई देखो 6.8, आपका एनएनआई 6.8 है, और फिर पर कैपिटा एनएनआई आपका 5.7 है। ठीक है। तो ये आपको ये प्रोविजनल एस्टिमेट और ये एडवांस एस्टिमेट ये नॉर्मली नहीं पूछते हैं ये लोग, हालांकि पूछते तो हैं एक्चुअली, मतलब 21 22 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट एक आ गया, आप रिवाइज एस्टिमेट को रख सकते हो। अब क्यों रखना चाहिए, मतलब क्यों एक्चुअल और रिवाइज्ड को ही याद रखना चाहिए, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि एक्चुअल तो चेंज नहीं होगा, रिवाइज्ड में बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं और इस दोनों में ज्यादा चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। उसका रीजन देखो, आपको ये समझना होगा कि कॉस्ट एडवांस एस्टिमेट जो है वो नॉर्मली, मान लो अगर 24 25 आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके जनवरी में ही, मतलब 24 25 का फाइनेंशियल ईयर कैसे देखोगे आप, अप्रैल 2024 से मार्च 2025, ये फाइनेंशियल ईयर है 24 25। तो 2025 के जनवरी में ही हम कैलकुलेट कर देंगे जीडीपी का वैल्यू, ये जीएनआई एनएनआई ये सब। और डेटा हमारे पास फेब मार्च और जनवरी का नहीं होता है। ठीक है। दिसंबर तक का ही डेटा होता है और उसी को हम यूज करते हैं, थोड़ा बहुत हम प्रेडिक्शन करके, मतलब कह सकते हो एडवांस में हम एस्टिमेट दे देते हैं। ठीक है। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट इसी साल जनवरी की जगह फेब में रिलीज होगा। ठीक है। फिर आता है प्रोविजनल एस्टिमेट। प्रोविजनल एस्टिमेट आपका मई में आता है, मई 2025 में रिलीज होगा, और ये किसके लिए होगा, आपका इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट अगेन बहुत सारा अकाउंटिंग का वर्क जो है बाद में आता है। उसका रीजन ये है कि देखो, आपको पता है कि इसमें एक
कैपिटल अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब जीडीपी या जीएनआई जब कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट भी इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। जीडीपी में तो चलो ठीक है कि मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन में उसको कैलकुलेट करता है, बट जीएनआई में कैपिटल अकाउंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को देखते हो आप। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो पूरा, जैसे एफडीआई क्या हुआ, फिर एफपीआई का इन्वेस्टमेंट क्या है, और एफडीआई अगर आज आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया के स्टॉक मार्केट में, लेट से फॉरेनर कुछ इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ के मार्केट में, तो उसका रिटर्न मान लो वो 2 साल का इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो रिटर्न उसका तुरंत नहीं पता चलेगा, तो रिटर्न उसका 2 साल बाद आएगा। तो अकाउंटिंग एडजस्ट होता है, मतलब जीडीपी या सॉरी जीएनपी या जीएनआई का जो अकाउंटिंग है वो एडजस्ट होता है टाइम के साथ, ठीक है। बट फाइनल एस्टिमेट में वो सब एडजस्ट होकर आ जाता है, तो देखेंगे फाइनल एस्टिमेट कब आता है। कॉस्ट रिवाइज एस्टिमेट आएगा आपका Feb 26 में, समझ रहे हो आप। इस फाइनेंशियल, कौन सा ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी पूछा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का पहला रिवाइज एस्टिमेट Feb 26 में आएगा, और जो फाइनल एस्टिमेट है वो Feb 27 में आएगा, समझ रहे हो। तो अभी आप कह सकते हो कि अभी जो Feb 2025 में 22 और 23 का एक्चुअल आ गया होगा, ठीक है, मतलब एक्चुअल अभी मैं देखता हूँ नीचे होगा। सेक्टोरल स्टेट्स में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि एग्रीकल्चर का शेयर क्या है, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का शेयर क्या है, और आपका कह सकते हो कि ये सॉरी सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर आपका अराउंड 18% है शेयर, सर्विस 54%, इंडस्ट्री 27, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग का अलग से करके पूछ देते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग 14%, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन 8.9%, जो मेजर है इंडस्ट्री के अंडर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन मेजर है। मैं क्यों इन्हीं सभी चीजों को बोल रहा हूँ, क्योंकि दे यूज टू आस्क कि चलो ठीक है, तुमको मोटा मोटी तो पता है कि सर्विस सेक्टर में क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर का क्या कह सकते हो कि मतलब शेयर क्या है, फिर एग्रीकल्चर का शेयर है, बट दे विल आस्क मोर देन 3 इंडिकेटर्स, मतलब सर्विस पूछ देंगे, सर्विस में कम बाइफरकेशन वो लोग देते हैं, सर्विस नॉर्मली नहीं पूछते हैं कि उसका बाइफरकेट करके, बट ये इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का क्या है, तो इसको क्रोनोलॉजी में बोलेंगे कि शेयर जो है इनका जीडीपी में, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करो, ठीक है। फिर आपका कुछ कुछ जो कह सकते हो कि वन लाइनर्स हैं, वन लाइनर्स बस मैं डिक्टेट करता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट उससे होगा। फार्मर का इनकम डबल करने के लिए अशोक दलवाई का कमिटी बैठाया गया था 2016 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, ठीक है। टारगेट ईयर 2022-23 रखा गया था। फिर आपका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देखो तो सबसे पहले आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आया था 1985, फिर आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, फिर उसी को मॉडिफाई करके लाया गया था 2010 में, और अभी रिसेंट का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, वो इंपॉर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, सॉइल हेल्थ कार्ड, आपको पता है कि आपके सॉइल के क्वालिटी को चेक करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसको सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के थ्रू लाया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर आपका क्रॉप फेलियर होता है तो उस केस में गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। फिर ये डबलिंग फार्मर्स इनकम, आप देख रहे हो, मतलब अगर आप ऐसे ऐसे पढ़ो, मतलब अगर आप यहाँ पे आए तो आप जल्दी से आप याद करो कि ये डबलिंग फार्मर इनकम का प्रोविजन किसने दिया, तो अभी हमने पढ़ा अशोक दलवाई, ठीक है। तो कुछ कुछ का कह सकते हो कि किस कमिटी के थ्रू वो स्कीम आया, वो भी इंपॉर्टेंट। टॉप 5 स्टेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट है, फूड ग्रेन में कौन कौन सा आता है, राइस और व्हीट, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन पंजाब, राजस्थान और बिहार, ये टॉप 5 स्टेट, ठीक है। फिर इंडस्ट्री के सेक्टर, जैसे अभी तक हम एग्रीकल्चर का देख रहे थे, एग्रीकल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर आपका इंडस्ट्रियल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो 3 कैटेगरी होता है इनका, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ये 2 बेसिस, मतलब आईआईपी जो कैलकुलेट होता है वो एक सेक्टर बेस्ड होता है, और एक होता है यूज बेस्ड,
ठीक है, सेक्टर बेस्ड और एक यूज बेस्ड। सेक्टर बेस्ड में आपका जो क्लासिफिकेशन है वो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, और इनका वेट आपको इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये रिवाइज होने वाला है, ठीक है। आई थिंक अभी तो इनका जो बेस ईयर है वो इंपॉर्टेंट है, 2011-12 रख रहे हैं, बट अभी न्यूज में आया हुआ है कि 26 में ये सारे बेस ईयर्स रिवाइज होकर 22-23 हो जाएंगे। तो जस्ट इन केस, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेटा थे आपका, इंपॉर्टेंट डेटा में आता है आईआईपी, पीपीआई, जीडीपी, और आपका आई थिंक, हाँ ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये एनएसओ, मॉस्बी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, और जो है आप कह सकते हो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कैलकुलेट करती है इन तीनों इंडिकेटर्स को। तो ये अभी जो रीसेंट बेस ईयर है वो तो चलो ठीक है, मतलब वो तो आपको अभी करंट में वही चल रहा है तो वो याद रखना है। जैसे अभी मैं बताया कि आईआईपी का बेस ईयर याद रखना है 2011-12, यही जीडीपी का भी अभी बेस ईयर है। बट ये सारा रिवाइज होने वाला है और इसका बेस ईयर 2022 और 23 करने का सोचा जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि बहुत कम चांस है कि वो ऐसा पूछें कि जो न्यू रिवीज मतलब रिवाइज डेटा आएगा उसका बेस ईयर क्या रखा जाएगा, ठीक है। तो वो हालांकि अभी हुआ नहीं है, बट इन केस पूछ लें तो आप इसको याद रखना, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये डिसाइड किया गया है और 2026 से रिपोर्टिंग जो है इसी बेस ईयर पे होना है। और वेटेज भी चेंज होंगे, वेट्स भी चेंज होंगे, ये सारे अभी का यही याद रखना है, अभी तो चेंज नहीं हुआ। जैसे आपको एमपीसी के मीटिंग में जो रेपो रेट्स वगैरह चेंज हुए वो तो मैंने आपको बता दिया, बट करेंटली अभी ये सब चेंज नहीं हुआ है, तो अभी आपको यही याद रखना है, वेट याद रखना है, आइटम्स कितने हैं इसके अंदर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये चीज कि ग्रोथ रेट माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि माइनिंग का आपका 1.9 है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का 5.8 है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का 4.4 है ग्रोथ रेट, जो रिसेंट कह सकते हो आप। फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट कैसे, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कमिटीज को लाया गया, जैसे फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए हमने पढ़ा अशोक दलवाई, वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत सारे कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। पहला है रंगराजन कमेटी, जिसने डिसइन्वेस्टमेंट, जो आपको पता है लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पीएसयूज हैं, उनको कहा गया कि सरकार इनको डिसइन्वेस्ट करे, ठीक है। फिर कार्ब कमेटी था, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए था। फिर आपका आर के हजारी कमेटी है, वो आपका कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के लिए था। सेन गुप्ता कमेटी पब्लिक इंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप देख रहे हो, 20 पॉइंट प्रोग्राम। फिर आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी में फिर नरेगा, नरेगा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने का होता है कि नरेगा एक्ट जो है वो 2005 में आया था, बट एमजी नरेगा लॉन्च हुआ था, एमजी नरेगा लॉन्च हुआ था 2006 में। ये बहुत कंफ्यूज होते हैं, 2005 टिक करके आ जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। टॉप 5 ट्रेडिंग नेशन आपको याद रखना है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा ट्रेड यूएसए के साथ है इंडिया का, फिर है आपका चाइना के साथ, और फिर थर्ड यूएई, देन सऊदी अरेबिया, देन रसिया, ठीक है। और मेजर एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया के वो हैं टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, और मेजर इंपोर्ट क्रूड ऑयल, मशीनरी और केमिकल, ठीक है। और टोटल ट्रेड वॉल्यूम अभी जो रिसेंटली डेटा रिपोर्टेड है वो है इतना 104.32 बिलियन डॉलर, और ट्रेड डेफिसिट आपका 77.12 बिलियन डॉलर। ये कुछ मतलब ये मिसलेनियस है, ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। ये तो सबको ही याद है कि ब्रेटन वुड्स का कब कोलैप्स हुआ था, 1971 में। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम, मतलब बहुत सारी कंट्री अप्लाई कर रही थी, ये फिक्स रेट वाला जो गोल्ड स्टैंडर्ड के थ्रू, मतलब गोल्ड को फिक्स कर दिया एक्सचेंज रेट के रिगार्ड में, गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, वो हटा दिया गया। यूरोजोन, आपको पता है कि जो यूरो है करेंसी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया यूरोजोन में। यूरोजोन क्राइसिस भी बोलते हैं, वही क्राइसिस के कारण ही यूरो को लाना पड़ा। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया गया ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू। साप्टा आपको पता है साउथ एशियन कंट्रीज का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर ग्लोबल क्राइसिस क्यों हुआ था? हाउसिंग बबल के कारण। सभी लोग को कम रेट्स पे लोन मिल रहे थे, सबने लोन लेकर के घर बनवा लिया,
बट फिर घर कह सकते हो कि सारे हाउस का रेंट उतनी अच्छे तरीके से उनके पास आया, उन्होंने सोचा था कि बहुत लोग खरीदेंगे या बहुत लोग रेंट पे लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, तो वो अपना लोन को रीपे नहीं कर पाए, जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। और उस फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट आपको पता है, यूएस बहुत ही मतलब कह सकते हो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो अगर वहां पे कोई डिस्टरबेंस होगा, इट मीन्स कि पूरा वर्ल्ड में दे विल फील द क्राइसिस, ठीक है। ये बहुत सारा डायरेक्ट टैक्सेस का एक कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी याद रखना। आप इनकम के बाद एक्सपेंडिचर आया, फिर आपका गिफ्ट टैक्स आया, फिर सर्विस टैक्स आया, मतलब कह सकते हो कि फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, और देन लास्ट में स्टेट वैट। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे बैंक नेशनलाइजेशन 1969 में, आपको पता है 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। एग्जिम बैंक 1982 में, और इसी समय नाबार्ड को भी स्टैब्लिश किया गया था। ये ऐसे याद रखना, आप नाबार्ड और एग्जिम बैंक एक ही ईयर में स्टैब्लिश होते हैं। नरसिम्हा वन, इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म के समय बहुत सारा कह सकते हो बैंकिंग रिफॉर्म लाया था, जो पीवी नरसिम्हा राव थे उसमें, कि वो उन्होंने इस चीज को लाया था। फेमा आपको पता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें बहुत सारे एफडीआई के इनफ्लो को कह सकते हो कि लिबरलाइज किया गया। कुछ कुछ सेक्टर में 100% एफडीआई को भी अलाउ कर दिया गया था। टैक्स रिफॉर्म में अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो तो झा कमेटी थे। फिर डायरेक्ट टैक्स की बात करो तो वांचू कमेटी। जीएसटी के टैक्स रेट को रेकमेंड करने के लिए अरविंद सुब्रमण्यम। फिर आपका अगेन एक डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी था 2010 में। और एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने के लिए राज कमेटी, ठीक है। ये टैक्स के रिगार्ड में जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है, जो बहुत बार यूजीसी नेट पूछा है, उसका एक लिस्ट मैंने एक जगह लिख दिया है, ठीक है। फिर एबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट्स, ये 2002 का केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन था। फिर आपका बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए कौन कौन सा कमिटीज आया था, ठीक है। तो चक्रवर्ती कमेटी, ये 1985 है, ये 82 गलती। फिर गोयपारिया कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम के लिए, गोयपारिया कमेटी इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस इन द बैंक, नरसिम्हा कमेटी अगेन रिड्यूस एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर आपको पता है कि अब 18% है, जो पहले आई थिंक 20%, 25 या 27 इस तरह से था। सीआरआर भी रिड्यूस किया गया। उर्जित पटेल कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क को रिवाइज किया, और इन्हीं ने वो कॉन्सेप्ट दिया कि वी हैव टू टारगेट इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वी हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द इन्फ्लेशन टारगेट्स। दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड दिस टॉलरेंस लेवल 4 ± 2, ठीक है। फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में एक्ट को इनेक्ट किया गया 2002 में, बट आया 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखोगे आप, ठीक है। ध्यान इसलिए रखोगे कि कई बार वो ऐसे पूछते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स, तो वहां पे 2005 आएगा, बट इनेक्ट हुआ था 2002 में। वही चीज कंफ्यूज होते हैं लोग। एमजी नरेगा में बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि गलती करके आते हैं, ठीक है। एमजी नरेगा वो 2005 लगा के आते हैं, जबकि नरेगा एक्ट, जो एक्ट है वो 2005 में आया था, बट ये लॉन्च हुआ था 2006 में, या केम इनटू फोर्स कह सकते हो 2006 में, ठीक है। अब हम कुछ सेबी से रिलेटेड, मतलब जो हमारा कह सकते हो कि सिक्योरिटी मार्केट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। सेबी कब आया था, मतलब स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये आया था 1996 में। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन जो क्रिजिल है, वो 1988 में। ये दोनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब जो एजेंसीज या कंपनीज हैं उनको एक कह सकते हो क्रेडिट का रेटिंग मिलता है। जैसे आप कैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, तो उस पर आपका रेटिंग देखा जाता है ना, मतलब आपका जिस तरह का, किस तरह का शॉपिंग बिहेवियर है, या फिर किस तरह से आप रीपे कर रहे हो अपना क्रेडिट कार्ड का लोन। तो ये सब चीज देख करके आपको एक रेटिंग दिया जाता है। उसी तरह से कंपनीज को भी क्रेडिट रेटिंग मिलता है, तो वो क्रिजिल और इक्रा जैसी रेटिंग एजेंसी देती है, ठीक है। ये 1991 में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप बीपीआई लिखो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी जस्ट सारा रेट चेंज हुआ है, तो इसको अच्छे से ध्यान रख के जाना। आप पुराना वाला रेट बिल्कुल याद नहीं करके जाना, ठीक है। पॉलिसी रेपो रेट आप 5.5% हो गया, 50 बेसिस पॉइंट
एमपीसी कमिटी ने रिड्यूस किया। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है। आपका बैंक रेट 5.75 हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट 5.25, एमएसएफ भी 5.75 हो गया, सीआरआर रिड्यूस करके 3% हो गया। और बोलोगे मुझसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा कह सकते हो कि इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमिक इवेंट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये दोनों रेट्स बहुत ज्यादा पूछ। फिर फाइनेंस कमीशन का तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट एकदम आपको काउंट करना है। पहला, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 22 एंड 280, मतलब आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इसमें, जो फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 280 के थ्रू, और ग्रांट इन एड 275 में। और दूसरा और तीसरा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और वर्टिकल डिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज फाइनेंस कमीशन के केस में आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, और अभी 15th फाइनेंस कमीशन है, 16th आएगा, अभी आया नहीं है, तो अभी आपको 15th का ही सारा कुछ याद करके जाना है। ठीक है, इसके चेयरमैन आपको एनके सिंह, ठीक है, एनके सिंह इसके चेयरमैन। 41% है वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये होता है कि सेंटर कलेक्ट करेगा सारा टैक्स, टैक्स रेवेन्यू उसके पास जाएगा, फिर उससे वो कह सकते हो कि फिर उस टैक्स रेवेन्यू को मतलब स्टेट्स के अमाउंट दे विल यूज टू डिवाइड। ठीक है, तो इसको वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलते हैं। और फिर उस डिवोल्यूशन को करने का भी एक बेसिस बनाया गया। जैसे आप, जैसे मान लो 41 करोड़ उनको डिवाइड करना है 28 स्टेट्स के बीच में। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 41 डिवाइडेड बाय 28, ऐसे नहीं, सबको इक्वल नहीं मिलता है। उनको किस बेसिस पे कितना अलॉट होगा, उसको क्राइटेरिया बनाया गया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में। और उसका आपका आई थिंक 6 क्राइटेरिया है, पॉपुलेशन एंड एरिया, ये 2 क्राइटेरिया, बट मैं सेम जगह पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 15% इसके अंदर एलोकेशन का परसेंटेज दिया गया। फिर है आपका जीएसटीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है आपका, उसके बेसिस पे 45%। फिर आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आप कितने अच्छे से फैमिली अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हो, उसके बेसिस पे भी आपको मिलेगा पैसा, और वो है 15, आई थिंक 12.5%। टैक्स एफर्ट, मतलब आप टैक्स इवेजन को रोकने के लिए बहुत सारा नियम लगाते हो, आपके यहाँ टैक्स अच्छे से टैक्स का इवेजन नहीं कर रहा है कोई, तो उसके लिए भी 2.5% मिलेगा आपको। फिर है आपका लास्ट है आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए आपको 10%, मतलब कितना ज्यादा आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हो, और क्या क्या मतलब कह सकते हो कि इम्प्रूवमेंट हुआ, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट आपके पार्टिकुलर स्टेट में, उसके बेसिस पे मिलता है। फिर आपका जीएसटी का रेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन किन टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया, आपको पता है, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट आया था, वन नेशन वन टैक्स, और ये 101st अमेंडमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके केस में। तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, ऑक्ट्री एंड लग्जरी टैक्स, इन सबको सब्ज्यूम करके एक एक टैक्स बनाया गया, वो है जीएसटी। इसके 5 मेन स्लैब्स हैं, हालांकि 0% बहुत कम पे ही लगता है, बट इसको भी लिखना है, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अभी जो कह सकते हो कि रीसेंट बजट में जो रिपोर्टिंग हुआ है, उसको भी आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। हालांकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, और डेटा आपको ये याद रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंट ऑफ जीडीपी एक्चुअल कितना, ये फिर आपको देखो रिवाइज्ड वाला जो डेटा है या बजटेड डेटा है, बजट के बेसिस पे जो वैल्यू दिया गया वो नहीं, एक्चुअल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल 24-25 का अभी नहीं आया है, 23-24 का ही एक्चुअल आपको याद रखना है। तो पूछेंगे भी तो एक्चुअल ही पूछेंगे। ठीक है, बजटेड या रिवाइज्ड ये सब नहीं पूछते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि एक्चुअल डेटा आने में 2 साल का समय लगता है। ठीक है, उससे पहले इसी तरह से प्रोविजनल एस्टिमेट देते हैं, या रिवाइज्ड एस्टिमेट देते हैं, या एडवांस्ड एस्टिमेट देते हैं। एडवांस में भी 2 तरह के, फर्स्ट और सेकंड एडवांस एस्टिमेट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट अभी आपका पता है कि ये 2.6%, फिस्कल डेफिसिट 5.6%, और प्राइमरी डेफिसिट 2.0%। तो यही 3 डेटा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टेबल में। बाकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैं नीचे लिख दिया हूँ।
बजट डेफिसिट सिंपली पूरा जो खर्च है गवर्नमेंट का और कितना उसका आमदनी है उसको बस डिवाइड कर दो, ओवरऑल एक्सपेंडिचर और ओवरऑल कॉस्ट को कह सकते हो माइनस कर देंगे ओवरऑल रेवेन्यू से, तो बजट डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट की रेवेन्यू जैसे देखो बजट डेफिसिट में अगर डेफिसिट की बात करो तो दो डेफिसिट होता है, एक रेवेन्यू डेफिसिट और एक कैपिटल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में आपका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो कह सकते हो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करो तो आपका सबसे ज्यादा है कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स पे खर्च कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वैसा एक्सपेंडिचर जिस पे गवर्नमेंट रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि लेट से गवर्नमेंट इन्वेस्ट की किसी मान लो प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और इवन ये चीज की मतलब जैसे मेट्रो बना रही है तो मेट्रो बनाने से उसको रेवेन्यू आएगा फ्यूचर में, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा स्कीम लॉन्च कर दे, पीएम किसान इस तरह का चीज, गवर्नमेंट जो है कोई जल जीवन में जो टैप का कनेक्शन की बात हो रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू रिसीट कहाँ से आता है तो वो है टैक्स रेवेन्यू, मेजर सोर्स वही है, टैक्स जो आप भरते हो वो रेवेन्यू रिसीट आता है। और कैपिटल रिसीट क्या होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां गवर्नमेंट कैपिटल में इन्वेस्ट की उन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के कारण फ्यूचर में जो रिटर्न है, कि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो उसका रिटर्न तुरंत थोड़ी मिलता है, अगर आपको मेट्रो आज बनाए हो तो थोड़ी आज ही सारा रिकवर हो जाएगा आपका पैसा, तो वो चीज है, रिकवरी में टाइम लगता है। तो ये था मेजर डिफरेंस रेवेन्यू और जो कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। तो रेवेन्यू डिफिसिट में सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते हैं। फिस्कल डेफिसिट में बजट डेफिसिट को मतलब कैसे तो टोटल जो गवर्नमेंट का बजटेड डेफिसिट है उसमें से बोरोइंग को हटा देते हैं। बोरोइंग इन द सेंस कि बोरोइंग जो है गवर्नमेंट दो तरीके से करती है, आइदर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, या एक्सटर्नल फॉरेन कह सकते हैं एंटिटी से लोन लेना, और या तो डोमेस्टिक जो एंटिटी है डोमेस्टिक कंपनी के जैसे मतलब कह सकते हो बेसिक बेसिक एग्जांपल में अगर इंटरनल बोरोइंग का कहो तो अंबानी से अगर गवर्नमेंट अडानी से लोन ले रही है तो उसको कहेंगे। और लोन क्यों लेती है, इन ऑर्डर टू डू डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम में या स्कीम के लिए जो कह सकते हो वहां पे उस चीज को यूज किया जाता है। फिर है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट सिंपली फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देना, क्योंकि ये जो अगर गवर्नमेंट कुछ बोरो की है तो उसको फ्यूचर में रीपेमेंट करना है तो वो सारा इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर आता है। और ट्रेड डेफिसिट तो बहुत आसान, मतलब कंट्री का इंपोर्ट अगर एक्सीड कर जाए एक्सपोर्ट के वजह में तो ट्रेड डेफिसिट। अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट भी मोर और लेस सेम है, जो टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट होता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं कि जो आपका बजट डेफिसिट है उसको सही करने के लिए आप बोरो कर रहे हो, आइदर डोमेस्टिक मार्केट से या फॉरेन मार्केट से, या फिर आप मनी प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पूछते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस तीन डेटा के अलावा ये सारे कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट। अब है सेंसस का डेटा। सेंसस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि अभी आपको पता है कि नया सेंसस का सब कुछ रेडी है, मतलब दो चरण में होना है, बट अभी जब जब अभी तो सेंसस ही नहीं हुआ, मतलब सेंसस होगा उसके बाद उसका कह सकते हो रिपोर्टिंग होगा, उसके बाद फिर उसके जो कह सकते हो रिजल्ट आएंगे, बट उसमें बहुत टाइम है। तो अभी 2011 का ही सेंसस डेटा से दे यूज टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से टॉप 5 स्टेट जहां का हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट है उसमें से बिहार फर्स्ट पे, उत्तर प्रदेश। और देखो मतलब इसमें टॉप 5 क्रोनोलॉजी में पूछ देते हैं तो आप सेफ साइड में लेके सारे याद कर लो, बट हाईएस्ट तो जरूर याद रखो कि क्रूड बर्थ रेट में हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट किस स्टेट का था, बिहार। फिर लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट किसका था, अंडमान का, ठीक है। तो ये चीज, फिर आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, ये सारे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फॉर्मूला की तरह पूछ देते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंपली एवरेज नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। इन्फेंट मोर्टेलिटी नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मतलब 1 ईयर एज, ठीक है, ये पूछते हैं कभी कि 1 ईयर, और इसको 12 मंथ, मतलब जो 1 ईयर का है उसको इन्फेंट कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु इज अंडर 1 ईयर एज, हु यू कैन से कि जिनका डेथ हो गया,
पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, मदर का डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। अंडर 5 मोर्टेलिटी देख रहे हो, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी अंडर 1 कह सकते हो इसको, दूसरा नाम ये भी कह सकते हो, बट अंडर 5 का अलग से निकलता है, वो है 5 पर 1000, ठीक है। फिर आपका क्रूड बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। देखो क्रूड बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और ये अंडर, ये सब में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन के रिगार्ड में और यहाँ पे लाइव बर्थ को क्या कह सकते हो कि रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। क्रूड डेथ रेट में अगेन नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। फर्टिलिटी रेट इज सिंपली एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ए वीमेन इन हर लाइफ टाइम। और फर्टिलिटी रेट आपको पता है कि 2.1 मतलब डिसाइड किया गया था, बट ये भी अब क्या सकते हो इस रिप्लेसमेंट रेट को हम कंसीडर कर गए, मतलब अचीव कर गए। 2.1 मीन्स कि अब मोर और लेस 2 होने जा रहा है, 2 से कम भी बहुत सारे स्टेट में देखा जा रहा है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि मान लो अगर 2 लोग की डेथ हो रही है तो 2 लोग ही बर्थ हो रहा है उनका, 2 पीपल अगर उनका बर्थ हुआ तो 2 लोग की डेथ हो गई, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ही रिलीज हुआ है नीति आयोग का डेटा कह सकते हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, तो मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये भी सेम है, 3 इंडेक्स होता है यहाँ पे, 3 इंडेक्स होता है, और हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट होता क्या है यहाँ पे, ये तो 1/3, 1/3 अगेन, तो आप कहोगे कि सर HDI और इसमें क्या डिफरेंस है। HDI और इसमें ये डिफरेंस है, मल्टी डायमेंशनल जहां हो गया मतलब समझ जाओ कि बहुत सारे डायमेंशंस। हेल्थ में 2 इंडिकेटर्स को लेते हैं ये लोग, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर। समझ रहे हो, HDI में मेन फोकस हेल्थ, एजुकेशन और आपका इनकम पे ही फोकस था, ठीक है। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत सारा चीज होता है, जैसे देखो कुकिंग फ्यूल आपको मिल रहा है कि नहीं, सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, हाउसिंग है या नहीं, एसेट कितना है आपका, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। तो ये सारे चीज, इसमें 6 इंडिकेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्कूल अटेंडेंस और ईयर ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन के अंदर, और मोर्टेलिटी और मेटरनल हेल्थ या मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और न्यूट्रिशन, ये आपका हेल्थ में आता है। इसमें जो सारे इंडिकेटर्स हैं उनका ईच एंड एवरी वन हैज अ वेट ऑफ 1/18, इसमें ईच एंड एवरी वन हैज अ वेट ऑफ 1/6, और इसमें ईच एंड एवरी वन हैज अ वेट ऑफ 1/6। तो अगर आप देखो 1/6 को 2 से गुना करो, मतलब आप कह सकते हो कि 2 है तो 1/3 हो जाएगा अल्टीमेटली। इसी तरह 1/6 प्लस 1/6 1/3 हो जाएगा। इसी तरह 1/6 को 6 बार अगर ऐड करोगे तो ये 1/3 अल्टीमेटली हो जाएगा। तो ये एरिथमेटिक मीन तो निकलता है इसी 3 का, बट इसके अंदर देखो 6 2 8 10 इंडिकेटर्स, ठीक है, सॉरी 12 इंडिकेटर्स हैं। मतलब कह सकते हो कि 12 इंडिकेटर्स हैं, बट इसको मेजरली इसको 2 किया गया है। इसमें आप देखो कि ये चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी को मैटरनल हेल्थ में ले लिया जाता है, ठीक है, बाइफरकेट किए हुए, बट आपको ये याद रखना कि इसमें दो और इसमें 6, ये गलती से लिखा हुआ है, 10 इंडिकेटर्स, ठीक है। और हाँ, अभी आप देखो कि अभी जो रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है उसमें इंडिया का जो पॉवर्टी इंडेक्स मतलब परसेंटेज ऑफ पुअर जो है वो आई थिंक 4 पॉइंट कुछ है, ये आप डेटा देख लेना, मैं थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा, बट ये सिंगल डिजिट में चला गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड बैंक MPI कैलकुलेट करती है ना, ये जो इंडिया का MPI है वो तो नीति आयोग कैलकुलेट करती है, ठीक है। और ये कैलकुलेट करती है किस चीज से, 2 चीज का यूज करती है, एक तो HCES का डेटा और एक NFHS का डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा। क्यों क्यों यूज करना पड़ा ये, क्योंकि पता है आपको कि सेंसस के भी डेटा से आया था ये सब चीज, ये कि लिटरेसी रेट क्या है, आपका मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सारा डेटा आया था। बट 2011 का हुआ, मतलब वो सेंसस हुए हुए बहुत समय हो गया, तो आप कह सकते हो अभी जब तक सेंसस नहीं हो रहा है तो ये नीति आयोग HCS हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे का डेटा लेती है, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, ठीक है। बट वर्ल्ड बैंक है वो भी MPI कैलकुलेट करती है, वो जो
पॉवर्टी लाइन लेती है वो पहले 2.15 था, अब 3 हो गया, $3 पर डे, $3 पर डे। मतलब इससे कम अगर किसी का इनकम है तो वो एक्सट्रीम पुअर बोला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही गलती करते हैं बहुत लोग। आपको पता है ये 2017 में रिवाइज हुआ, 2017 को रिवाइज हुआ, ये 2021 का डेटा को बेस ईयर लेती है, बट रिवाइज अभी हुआ है। पहले 1.95 था, आई थिंक $1.95। तो ये रिवाइज होते रहता है। मतलब अब कोई अगर ये याद रखा है तो ये गलत है, 2.15 आपको नहीं याद रखना है। अब 3 हो गया है, तो इस चीज को आप गलती नहीं करना। इसलिए इंडियन इकोनॉमी में अपडेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसलिए मैं ये मैराथन आपको कह सकता हूँ कि सब कुछ पूरा अपडेटेड आपको मिल सकता है। इवन कल तक में जो जो इंसिडेंट हुए हैं, मतलब कल तक में अगर कोई डेटा में चेंज हुआ है तो वो भी मैंने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपका कुछ सीएमआई पूछ देता है कि सीएमआई किस चीज के लिए यूज होता है, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट डेटा, ये प्राइवेटली कह सकते हैं। हालांकि एनएसओ मेन जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा रिलीज करता है वो एनएसओ करता है, बट सीएमआई भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को कह सकते हो कि रिपोर्ट करती है, ठीक है। और यूज किसको करती है? ये पीएलएफएस के रिपोर्ट पे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका देख सकते हो कि साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और सीजनल, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। साइक्लिकल होता है कि सिंपली अगर रिसेशन और बूम आ रहा है इकोनॉमी में तो उसके कारण जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। फ्रिक्शनल जो टेम्पररी, मतलब आप एक जॉब छोड़े और आपको यहाँ मन नहीं लग रहा था और आप 1 या 2 महीने में दूसरे जॉब में चले गए, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म या टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल बोलते हैं लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड में मिसमैच। लेबर सप्लाई आपको पता है अपवर्ड स्लोपिंग, लेबर डिमांड कह सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। तो अगर मान लो लेबर डिमांड बढ़ गया, ठीक है, तो पहले तो वेज रेट ये मिल रहा था, अब लेबर डिमांड बढ़ जाने से आप देखो कि इस वेज रेट पे लेबर का सप्लाई ये हो रहा है और डिमांड ये हो रहा है, तो दिस विल क्रिएट अ अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड इतना है लेबर का और सप्लाई कम है, समझ रहे हो? तो दिस विल क्रिएट अ गैप बिटवीन लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। सीजनल तो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर में मोस्टली देखा जाता है कि जब सीजन आता है तो मोस्ट ऑफ द लेबर्स वेयर बीइंग कॉल्ड, लाइक बिहार से बहुत सारे लेबर पंजाब जाते हैं, तो इस तरह का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देख लेते हैं। अब एक बार थोड़ा सा जितना अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट स्कीम गवर्नमेंट का है, वो थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे। रूरल एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले आपको पता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980, फिर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983, जवाहर रोजगार योजना आपका 1989, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम 1993, फिर आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। मतलब फूड फॉर वर्क मतलब समझ रहे हो ना कि एक तरह से जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहां पे इस वर्ड से ही समझो कि फूड फॉर वर्क मतलब खाने के लिए काम करना है उनको। तो उन सारे लोगों को जो उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है उनको वर्क प्रोवाइड कराना, ठीक है। 2004 एमजी नरेगा, 2005 इम्प्लीमेंटेड इन 2000। बार बार मैं इम्फेसिस कर रहा हूँ इस चीज पे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एमजी नरेगा से कई बार पूछा है कि बजट एलोकेशन जो रिसेंट बजट है उसमें कितना हुआ, ये याद रखना है आपको, 86,000 करोड़। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन किसी अगर पार्टिकुलर स्कीम की बात करो तो एमजी नरेगा में होता है। आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे November 12 to 2020, तो ये याद रखना। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार पूछ देते हैं कि जो हम डेटा रिपोर्ट हो रहा है उसका सोर्स क्या है, मीन्स, और उसके गवर्निंग बॉडी क्या है, मिनिस्ट्रीज कौन सा उसको अंडरटेक करता है, उस तरह से, ठीक है। तो आपको ग्रोथ का डेटा, ग्रॉस सेविंग और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एनएसएसओ, सॉरी एनएसएसओ तो पहले था, ये भी इंपॉर्टेंट। एनएसएसओ जो है सीएसओ से मैच करके एनएसओ बन गई है, अब ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इन्फ्लेशन, मनी, क्रेडिट और ये सब सारा, मतलब कैपिटल मार्केट तो सेबी, एनएससी, बीएससी, बट बाकी और जो है वो आरबीआई मोस्टली करती है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का रिसीप्ट और डिस्बर्समेंट वो बजट डॉक्यूमेंट में कवर हो जाता है, मतलब वो सोर्स है उसका। फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देखो, इसमें एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो है यही
सारे हैं। तो इसको ऐसे याद रखो कि जिसका ओ से एंड हो रहा है उसका जेनेवा है, और जिसका ओ से एंड नहीं हो रहा है वो वॉशिंगटन है, ठीक है। और मतलब वॉशिंगटन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, ये आपको पता है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ ही अराउंड 1944 या 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, और दोनों एक साथ ही इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें कि एक ही जगह हुआ होगा, तो वॉशिंगटन में हुआ था 1944 में, सॉरी। फिर यूनिसेफ और यूएनडीपी न्यूयॉर्क, समझ रहे हो, ये ही बस इंपॉर्टेंट है, इसी से घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो इसको ओ वाला तो साथ से याद रहेगा कि जेनेवा में, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक याद रखना वॉशिंगटन है, तो बाकी जो होगा ये न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है। बस ये दोनों भी याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका क्रोनोलॉजी आपको याद रखना चाहिए। आईएफसीआई है, फिर आपका ये क्वेश्चन आई थिंक 5 बार से ऊपर पूछा हुआ, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ जो फ्री ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, एफ्टा है, फिर आपका इंडियन कमिटी है, फिर आपका आसियान नेशन है, एशिया पैसिफिक है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सब का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना चाहिए। फिर कॉन्फ्रेंस और पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। कॉप का आपको पता है कि फाइनेंशियल क्लाइमेट चेंज के लिए ये कॉन्फ्रेंस और पार्टी होता है, ये एनुअल मीटिंग होता है, और यूएनएफसीसी के द्वारा कह सकते हो कि ये किया जाता है। और पॉपुलर जो मीटिंग है उसमें से, हालांकि मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया, बट इसमें से भी फर्स्ट याद रखना, कॉप 1 जो है हुआ था बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। बाइंडिंग इमिशन का टारगेट को किया गया था। फिर क्योटो वाला इंपॉर्टेंट है, कॉप 3 इंपॉर्टेंट है। क्योटो में लीगली इस चीज को इमिशन कट के लिए रखा गया था, और इसका ड्यूरेशन दिया गया था 97 से 2012। मॉन्ट्रियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पेरिस एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में था और कौन सा कॉप इसको कह सकते हैं इस कॉप के थ्रू एग्रीमेंट को अचीव किया गया था। और यहाँ पे 195 नेशन जो है वो एग्री किए थे कि दे विल ब्रिंग डाउन द ग्लोबल या वर्ल्ड टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस एवब प्री इंडस्ट्रियल रीजन। प्री इंडस्ट्रियल में जो टेम्परेचर था उससे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर आना चाहिए अभी का टेम्परेचर, ठीक है। तो इस चीज को ये लोग, और सबसे रीसेंट वाला आप याद रखना एक थोड़ा, ठीक है। और एक शायद आई थिंक, नहीं ठीक है, सबसे रीसेंट वाला है COP 29 जो कि अभी होया हुआ है बाकू अजरबैजान में। ये इसमें पूछ देंगे कि देखो, $1.3 ट्रिलियन के लिए डेवलपिंग इकोनॉमी ने बोला कि डेवलप्ड इकोनॉमी शुड फाइनेंस $1.3 ट्रिलियन एनुअली। ये कंपनसेशन अमाउंट मांगा था, क्योंकि आपको पता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18 या 17 जब वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो उन्होंने क्लाइमेट को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। और दे आर डेवलप्ड, मतलब वो डेवलप्ड इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट का एक्सप्लॉइटेशन पहले कर लिया, ठीक है। तो वो क्लाइमेट एक्सप्लॉइटेशन करके डेवलप्ड बन गए। तो इस कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये होता है कि दीज डेवलप्ड कंट्रीज शुड कॉम्पनसेट डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी अभी पूरी तरह से क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर ये चीज होता है तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एक कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा डेवलप्ड इकोनॉमी को। ये एग्रीमेंट किया गया, बट दे जो डेवलप्ड नेशन है वो नहीं माने, वो 300 बिलियन पे ही अटके रहे, 300 बिलियन ही फाइनलाइज हुआ, ठीक है। इसलिए कह सकते हो COP 29 का मोटिव फेल हुआ एक तरह से, ठीक है। अब है लास्ट में आपका थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं आपका वो थोड़ा देख लो आप। जनधन योजना 2014, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखाता हूँ आपको, और कह सकते हो कि इसमें आपको याद ही करना है। स्किल इंडिया मिशन 2014, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको पता है। मेक इन इंडिया आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 2014 में ही आया था। 2014 में ढेर सारे लॉन्च हुए थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, आपको पता है कि फ्री द कंट्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब ओसीडी घोषण घोषित करना, मतलब बहुत सारे विलेजेस में जो ओपन डेफिकेशन था उसको खत्म करने की भी बात थी। बट ये स्वच्छ भारत मिशन आई थिंक उसके लिए नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन इज फॉर कि शहर में जो गंदगी है उसको सही करने के लिए, आई थिंक सो। ये रूरल के लिए नहीं था, ये टाउन का कह सकते हो क्लीनलीनेस प्रोग्राम था। संसद आदर्श ग्राम योजना
2014 में जो मॉडल विलेजेस की बात करते थे, ठीक है, कि इस विलेज को हम मॉडल विलेज बनाएंगे और बाकी विलेजेस जो है उसको एक्सपायर करके उनकी तरह बनना चाहेंगे। क्रमेव जो है थे 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए 2015 में, हृदया प्लान 2015। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि कौन सा एकदम ही याद रखना, जनधन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कई बार पूछ रहा हूँ, मतलब इसको तो आप याद ही रखो। इसका ईयर और मेन प्रोविजन क्या था, ठीक है। मुद्रा लोन 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन टू स्मॉल बिजनेस और जिनको कि गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। उजाला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय, जो कि आपको पता है कि जो पावर डिस्कॉम इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली सही करने के लिए स्टार्टअप इंडिया इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई लोग जो है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उज्ज्वला और उजाला स्कीम में। उजाला एलईडी लाइट्स के लिए, उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पूरा, आप कह सकते हो कि इस मैराथन को एटलीस्ट जरूर देख के जाना, ताकि आपका कह सकते हो कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हो तो एटलीस्ट अच्छे पोजीशन में होगा कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, और आपको ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस। आप अच्छे से एग्जाम को दो, और कोई ऐसा हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छे से आप प्रिपेयर करो। और ये मैराथन आप 2 बार देख लो, मैं तो कहूँगा 2 बार आप देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा एक बार में, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हो कि आपका पैसिव लर्निंग नहीं हो रहा है ना, मतलब कह सकते हो कि एक्टिव लर्निंग नहीं हो रहा है, पैसिव लर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आप एक बार नहीं 2 बार देखोगे तब जाकर के चीज़ें जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आ पाएंगी, ठीक है। अच्छे से करो, और आप इसी बार जेआरएफ क्लियर करो, और फिर हम आपको मतलब आप अच्छे से क्लियर करोगे, ये बेस्ट विशेष है हमारे, ठीक है। थैंक यू सो मच।